Jai Hind. It is well said, the beauty of forensic sciences is that it is never wrong. It is the only interpretation of the evidence that can be flawed. Good morning to each and everyone, and a warm welcome to our higher dignitaries, distinguished speakers, fellow colleagues, and all our participants of today's event. I, Shruti Singh, IQAC Coordinator, feel privileged to welcome you all on behalf of Internal Quality Assurance Cell, Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, for 2 days National Symposium cum Workshop on role of forensic in investigating processes and interdisciplinary approach for research development. Forensic is an interdisciplinary field that is crucial in helping to solve complex cases and ensure justice is served. In today's world, the application of forensic in investigating processes is more important than ever before. This gathering will provide us the opportunity to delve deeper into this important topic and learn from our experts who will be sharing their insights and experience. Now, I would like to request our Honorable Vice Chancellor Sir, all our distinguished speakers, and all our deans, head of institutions who are present here, and convener and organizing secretaries of the program to please come on the stage for lamp lighting. I would like to call Dr. Director IQAC, to present a brief introduction of the program. Jai Hind and very good morning to all of you. I, Dr. Neetu Bhawan, welcome you all in this symposium cum workshop on role of forensics in investigation processes for research development, which is being organized by IQAC in association with Department of Forensic Medicine, Subharti Medical College, and in association with Indian Academy of Medical Legal Experts, UP Noida. On the occasion of Forensic Medicine Day, which was decided to celebrate on 12th May each year in commemoration of the Golden Jubilee year of Foundation of Indian Academy of Forensic Medicine. Forensic medicine is an important branch of medicine which deals with the application of medical knowledge, techniques used to resolve crime scenes investigation and resolve the various issues. In the workshop, the experiences of forensic experts have been invited to provide a valuable knowledge and insight related to this field. Moreover, collaboration with Indian Academy of Medical Legal Experts provides an opportunity to bring together the experts and participants from the latest development in this field of forensics. I am sure that the workshop will provide a vast insight learning experiences for all the participants. Once again, I extend my warm welcome to all the participants and thanks the Department of Forensic Medicine, Subharti Medical College,
and Emily for their contribution in this event. I hope this symposium cum workshop will lead the fruitful collaborations advancement in the field of forensic sciences. Thank you very much. I would like to invite Honorable Vice Chancellor Sir, Major General Dr. G.K. Thapliyal Sir for the official opening of the ceremony. Jai Hind, one and all, and very good morning to you all. On behalf of Swami Vivekanand Subharti University, I privilege to extend a warm welcome to all those who are attending this workshop on online mode and the offline mode. I was told roughly about how many participants have registered? Sir, 100 participants online. 100 online and rest you can see sitting in the hall. I would like to welcome Professor Dr. Adarsh Kumar, Forensic Medicine and Toxicology, AIMS, Delhi, and Honorary President of Indian Academy of Medical Legal Experts. I welcome Dr. Harsh Sharma, OSD, Academics, National Forensic Science University, Bhopal, Madhya Pradesh. Dr. Vivek Sahajpal, Assistant Director, State Forensic Science Laboratory, HP, and Nodal Officer, Disaster Victim Identification Cell, Directorate of Forensic Services, Himachal Pradesh. Dr. Jasbinder Singh, Head Forensic Medicine Department, SRMS Institute of Medical Sciences, Bareilly, UP. Dr. Navpreet Kaur, Co-founder and Vice President, the Lakshmi Foundation, NGO, Chandigarh. Dr. Parul Kharejina, Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Macrobiology, Sadla University. I also welcome all the participants who have come from different parts of the country and all those participants who are joining us online. Ladies and gentlemen, I would like to tell you something first. That is, what is the purpose of this workshop? मैं थोड़ा हिंदी में भी बताऊंगा. हमारा पर्पज इस सेमिनार से क्या था? एक पर्पज को हाईलाइट, एक फोरेंसिक साइंस को हाईलाइट करने का पर्पज कि फोरेंसिक साइंस एक वाकई में बड़ी मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल एक अप्रोच है. और ये मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इस्तेमाल होती है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया जाता है in the providing for justice. So this is the true amalgamation of various fields of science like chemistry, physics, biology, then comes medical pathologies, forensic pathologies, then come toxicologies, then comes even the trainers who trains canine. How do they train canine? It's dog. कैसे वो train करते हैं so that the dog is able to identify the human traces, living or non-living. So this is a very, very important even for those who trains dogs too. I would have been very happy if the organizer had contacted the veterinary science laboratory here in Meerut who trains dog squad for Indian Army. So their inputs also would have been very, very valuable. Next, coming to the point that forensic means a forum, which is derived from the Latin word forum. Forum का मतलब जहाँ 10-12 लोग इकट्ठे हो जाएं, आपस में डिबेट करें, एनालाइज करें चीज़ों को और एक आइडेंटिफाई करें
उस पर्सन को जिसने क्राइम किया, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद फैसिलिटेट करें हमारी जस्टिस सिस्टम को कि क्रिमिनल केसेस में जस्टिस कैसे मिले. So that was the basic. So therefore, forensic science is an ever-developing science, since it combines many specialities or many disciplines of human dimensions. It's a very interesting. I'm very glad to see here the team of investigators, the police people who are the main people. क्राइम की सीन पे सबसे पहले इनको जाना होता है, और ये क्राइम सीन को जब देखते हैं और उसका किस तरह से एक निरीक्षण करते हैं, और उस निरीक्षण में के बाद किस तरह से वहाँ के एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं. एविडेंसेस कलेक्ट करना और उस सीन को किसी की और तरह से कंटामिनेट नहीं होने देना, वो बहुत जरूरी है. आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा, एक आरसी मर्डर केस, अ वेरी फेमस केस ऑफ नोएडा, जिसमें कि कंटामिनेशन ऑफ एविडेंसेस शक किया गया था कि एविडेंसेस को कंटामिनेशन हुआ था, जिसकी वजह से एविडेंसेस नहीं मिल पाए थे और फॉरेंसिक एविडेंसेस उसमें नहीं मिल पाए. द वेपन ऑफ मर्डर could not be traced. वो जो कॉज और जो जिसकी वजह से हुआ था. I was reading somewhere just before coming here how these weapons are traced, and dog squad helps a lot in that. They identify, because the dog, God's gift to them, they have so much advanced olfactory system. They can smell the different smells of the human being coming from different parts of the body. And not only this, they can smell, they can also smell the putrefying smell of the decaying human body. Like आपने देखा होगा, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह होते हैं या भूकंप में बहुत दब जाते हैं, तो वहाँ पे भी कैनाइन या डॉग्स की जरूरत पड़ती है. लोग की पहचान जाते हैं कि इसके अंदर अभी या तो डेड इंडिविजुअल है या लिविंग इंडिविजुअल है, वो उस चीज को आपको इंडिकेट करते हैं. तो इस ऑल काइंड्स ऑफ, आपको याद होगा बहुत पुराना केस मुंबई का सीरियल किलर केस, आपको सीरियल किलर केस मिस्टर अंसारी, और आई डोंट रिमेंबर द नेम, which was solved only after I think 15 years or 10 years. 2010 में जाकर के केस हुआ था, and which was solved only based on the forensic evidences. Forensic evidences not only for forensic, like there is a cyber forensic which is coming in a big way. Digital forensic is coming in a big way. So any person who is involved in the forensic science cannot be isolated to that particular field only. He or she has to learn the various field of various disciplines of forensic odontology. एक मैं आपको कहता हूँ, how this forensic odontology, like Nirbhaya case, you remember the Nirbhaya case? That Nirbhaya case, that person, the bite marks on the victim's body were sent to Harvard College, and they identified the person who actually gave that bite mark, and that was the evidence against that person. In view of, there were no evidences against the person except that bite marks. The forensic odontology plays a great role. How you catch hold of the person. DNA analysis is another area which is coming in a big way.
And DNA analysis can even from the person who has held that weapon, that epithelial cells or the DNA transfer to that epithelial cells can be collected after a long time, and that way these cells can be matched with that individual, and you can actually identify the person who was the murderer. So all these cases need to be deliberated upon, and when it needs to be deliberated upon, combined together. We learn from each other, and the practice of learning from each other, this is the best platform. We learn from the investigator, we learn from the judiciary, we learn from the biologist, we learn from the medical people, those who are working in forensic medicine like forensic pathologist. Only thing which is I'm not happy here to see a large number of the students who should have been here from the medical or from the health sciences. This would have definitely benefited them. This would have definitely triggered something in their mind that how to go about research on this area. The large number of law students should have been here. So I am sure this kind of a conference in future will be attended. This is not particularly a department, IQAC, or the Department of Forensic Medicine is organizing this conference. It's a university conference. It's for all, and purpose is to enlighten, to learn from each other for the betterment of the society, for the betterment of the investigations. So this purpose will only be solved when all of us sit together, deliberate upon all these issues, various issues. Then only the purpose will be achieved. I want to congratulate and thank the Department of Forensic Medicine first for their being celebrated as a National Forensic Day, Medical Forensic Day. I want to congratulate and thank the IQAC Director for taking this initiative. Let us not get demoralized by the number of attendance. Even one attendance or 5 attendance or 10 attendance makes no difference. Only thing we should take a step forward. One step taken forward, probably will be able to take a second step little bigger way or in a better way. So I want to congratulate IQAC, I want to congratulate the Department of Forensic Medicine for taking this lead and having gone across the discipline to invite people. And I would like to thank the Police Department of Meerut for having taken a very, very active role. And I am sure आप लोगों को इस deliberation से कुछ ज्ञान और कुछ नॉलेज मिलेगी जो आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशंस में जरूर मदद करेगी। आप बहुत जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। Because there are so many cases in India pending because of lack of forensic evidences. हमारे हिंदुस्तान में केवल 7 forensic labs हैं और each forensic lab के पास में इतना काम है that they are not able to finish the work, finish or give the report within the stipulated time. So justice delayed is like a justice denied. So in view of this, we should recommend that how many types of forensic lab we should have, what type of a forensic expert the country should have. We should train our graduate in forensic science. We should train our people, faculty in forensic science. So this is the lesson will be learned from this conference,
And I'm sure all those participating in this conference will take away the message which will definitely enrich them in their future. And many of you, those who are attending this conference, will be inspired to get into this field of forensic science and contribute a lot, contribute in the country's justice system, criminal justice system. That is very, very important. So with those words, I thank you all, and once again, I welcome all the delegates and all our honored, distinguished, learned speakers who will be speaking on this occasion. Thank you very much. Jai Hind. Would like to welcome Professor Dr. Geeta Parvanda ma'am to please come on the stage for the announcement of another special event which is related to healthcare, which is celebrated today globally. Namaskar to all the respected delegates and all the respected members. Today is International Nurses Day, 12th May 2023, and I, Dr. Geeta Parvanda, Dean Faculty of Nursing, welcome you all on this auspicious occasion of International Nurses Day, which is celebrated globally and nationally. I request Honorable Vice Chancellor Sir to kindly unfold the theme of this year. Please. Our nurses, our future. This year, this theme is focused on to strengthen the health system of our country and also to have a better patient health outcome. So every nursing professional should be respected, should be protected and should be cared. With that, thank you, Jai Hind. I request Sir and all the guest members to kindly help us in the cake cutting ceremony. Thank you, Jai Hind. A very happy last day. All of you. And this has been combined, just taking 5-10 minutes in the conference. We didn't want to make two separate functions. So let us To all the guests, I would like to just give an announcement that Honorable Chief Minister has announced Faculty of Nursing Panadhai Ma Subharti Nursing College as a mentor institute in year 22-23. So मैं आप सब लोगों की ब्लेसिंग और आशीर्वाद चाहूंगी कि इस मेंटर इंस्टीट्यूट की गरिमा बनाने के लिए हमें आप सबका सहयोग रहे. धन्यवाद. जय हिंद. I would like to call Professor Dr. Lubhan Singh Sir to carry forward the program. Jai Hind to all. So we are going to start our pre-lunch scientific session. And in this session, first session, we are having a very renowned speaker, Professor Dr. Adarsh Kumar Sir, Forensic Medicine and Toxicology, AIIMS, New Delhi. He is going to deliver his topic over collaboration between forensic medicine and forensic science, need of art for better criminal investigation in India. So we are having two renowned persons for chairing the session. So I am requesting Honorable Vice Chancellor Sir, Major General Dr. G.K. Tripalyan Sir, SPSU Meerut, and Dr. Harsh Sharma Sir, OST Academics, National Forensic Sciences University, Bhopal, for chairing the session. Thank you, sir. And now I would like to invite Professor Dr. Adarsh Kumar Sir to the stage. Sir, can you please deliver your talk? Jai Hind, one and all. On behalf of my group and co-chairperson, I welcome you all to this first session. And the speaker for this
session is Professor Dr. Adarsh Kumar. He is a gold medalist and the first person in the world to receive a Commonwealth Fellowship in the UK twice in 2011, Forensic and Legal Medicine, and 2015, Forensic Anthropology. He is the Fellow of IAMLE 2014, ISCA 2015, IST 2016, and IAFM 2020. He is honorary medical legal expert to NHRC and CBI since more than a decade and handled around 1,000 high-profile criminal investigation cases. He is having more than 25 years of experience in the field of forensics. He has delivered 5 orations and 100 lectures in various national and international scientific conferences, and also published more than 80 scientific papers in reputed journals. He acted as editorial board member and peer reviewer in 20 national and international journals. He has honored with commendation certificate for his exemplary work in the field of forensic investigation and human rights by NHRC in 2014. Education Award for Excellence by Indo-US Coalition in 2016 and International Cooperation Medal by Government of Ukraine in 2020. At present, he is the honorary president of IAMLE and representing 3 international scientific organizations, IALM and IABMLA as governing council member and INPALMS as secretary general. I welcome Dr. Professor Adarsh Kumar and request him to start his address. Honorable Vice Chancellor, my dear friend Dr. Harsh Sharma, the chairperson, august audience and dear students. Jai Hind, good morning and namaskar to everyone. Before coming on to the presentation, I must congratulate the Subharti University Meerut for taking this initiative of organizing this kind of national symposium and workshop, and especially the director of IQAC, Dr. Neetu Pawar, and the head of Department Forensic Medicine, Dr. Bhim Singh, for taking this initiative to organize that and inviting me in the capacity of President of Indian Academy of Medical Legal Experts to, you can say, contribute this kind of workshop. So I am very thankful to the Honorable Vice Chancellor and all the organizing committee of Subharti University for giving us the opportunity to contribute something on this occasion of Forensic Medicine Day. We'll be talking about how to improve the, you can say, criminal justice investigation system, and because of that, this particular theme has been chosen central theme on role of forensic science in investigating processes and interdisciplinary approach for the research development. So hats off to the Subharti University and management, and of course again personal thanks to Vice Chancellor for giving me the opportunity to collaborate in the capacity of President Imli as well as a distinguished faculty for this workshop to actually to happen on today's specific day. Commensurating with the central theme of the conference, I have chosen my topic where the different branch of, you can say, sciences can amalgamate and contribute for this criminal investigation process. Honorable Vice Chancellor in his welcome speech has already given you a little bit of feel of that. So I will build up upon my lecture in continuation of what he has already said. So what exactly is forensics? Forensics, as you know, is the application of scientific knowledge, right, for the purpose of administration of law. Whenever we are talking about the purpose of this law administration,
then there is a role of forensics. And when I say forensics, it's not only forensic medicine, it encompasses various other branches of the forensic sciences as well. And that's why this whole theme of this national workshop has been chosen, where all the different branches can also contribute for the purpose of administration of law. As we go deeper and deeper, then we realize that it becomes extremely challenging in many of the situations. Coming on to my core area of discipline, what we are celebrating today is the Forensic Medicine Day. Of course, today also happens to be the Nursing Day also. So we are talking about the forensic nursing also, which has recently come up as a, you can say, joint venture or collaborative, right? So we are talking about collaboration between the different branches. So forensic nursing is another branch which has come up. So I think it's a great day today for these various branches of medical sciences, I should say, and the forensic nursing is also a part. So forensic medicine, when we talk about, basically we are acting like a medical detective, just to layman's term, that everybody understand. अगर आप पूछे उससे कि फोरेंसिक मेडिसिन वाला क्या करता है, शायद वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो। हालांकि अभी बहुत सारे टीवी सीरियल्स और पिछले 20-25 साल में सीआईडी, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन और ये सब बहुत सारी अवेयरनेस आई है और मीडिया और पब्लिक भी काफ़ी अब फोरेंसिक को समझने लगी है कि फोरेंसिक वाले करते क्या हैं। बट इफ यू अंडरस्टैंड और यू एग्री दैट इट इज अ काइंड ऑफ वी आर ट्रीटेड लाइक ए मेडिकल डिटेक्टिव, हम डिटेक्टिव का काम करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। To be precise, the definition of forensic medicine, it is the application of medical. It's not only medical, it encompasses all various other branches, the paramedical branches of also. So that knowledge is also used for the administration of law. One of the simplest example is forensic nursing, where they can also contribute in so many situations. In fact, we are trying to develop that branch of forensics also recently during this last decade or so that has come up. So when we talk about the crime investigation, especially against the human body, then there is a famous quote that dead body is extremely eloquent and honestly informative, provided one has that exercise and patience in listening to the dead body, what exactly that dead body is trying to say. So we as an investigator, what we can understand what the dead body is trying to say, there comes the role of the expertise. As our Vice Chancellor has already pointed out, yes, when we talk about the criminal investigation system, it's always a teamwork. And when we talk about the teamwork, we talk about the 4 systems of the criminal investigation system. And the most important 4 pillars of the criminal investigation system. And the whole investigation revolves around the police persons. So you people are the most important persons because you will start all that investigation process, and then there is a role of doctors if there is a crime against the human body, and there is a role of forensic scientists depending upon case to case various branches of forensic scientists and so many other branches. So basically your role as a pivot of all this investigation process becomes extremely important. Second important pillar of that criminal investigation process is the doctor, right? And to increase or to expand upon that, he has to be a properly trained doctor, especially in forensic medicine. Then the whole investigation takes a different turn. Otherwise, what we see in day-to-day practice in India, because of our, you can say, the system prevalent over here, most of the times it is the MBBS doctors who are doing all these things and they are not actually trained into that, and that's why we see that so many cases create problem because of the poor knowledge. We are also trying to address that, how the policy changes can be made, that whether this branch or this particular domain of conducting the autopsy, doing medical legal examination can be exclusively dedicated to the medical legal experts, I mean to say the forensic medicine experts who are trained in MD forensic medicine. Naturally, the level of investigation, everything changes because when the person becomes expert in that field, his area, his understanding, his way of writing, everything changes. So that is another, you can say, important pillar और उस पूरी कड़ी की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है उस पूरी चेन की डॉक्टर. Third one is the forensic scientist. Depending upon case to case,
So there are different roles of the various category of forensic scientists, right? And the fourth one, when everything put together and the law persons, or I should say the public prosecutor, when everything is put before the court of law, then the public prosecutor puts before the honorable judge. So these are the four pillars of the criminal investigation system. If you just change the word investigation with the justice, then the fifth, you can say that part, at the topmost part, is the honorable judges. So everybody who is involved in the process of criminal investigation has to understand the intricacies and has to understand the role and responsibilities of everyone. Then really the whole investigation takes a, you can say, a different turn and takes it to a different level. So how forensic medicine helps in imparting the social justice? When we as a doctor, primarily we as a doctor, MBBS doctor, afterwards we do the post-graduation in the forensic medicine. So when we as a doctor are treating a person, we are actually treating one single person. जिस आदमी को बीमारी हुई है वो हमारे पास आएगा और हम उसको इलाज करेंगे उसका, राइट? लेकिन जब हम फोरेंसिक मेडिसिन वाला काम कर रहे हैं तो उस केस में हम एक पर्सन के बजाय वी आर इन फैक्ट ट्रीटिंग द होल ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज दिस क्राइम अफेक्ट्स द होल सोसाइटी. मरने वाला एक था वो तो मर गया, लेकिन मारा किसने वो भी अफेक्टेड है, उसके ऊपर कितनी फैमिली मेंबर्स भी उससे रिलेटेड अफेक्टेड है, और बाकी now you can understand that so many persons living in a particular society are affected by a single crime. So when we are talking or we are doing our role as a forensic expert, medicine experts, in fact we are treating whole of the society, not a particular individual person who has come for some kind of disease. So our role becomes even more important. Forensic medicine, I have already told that forensic, the word forensic starts the Roman word and it stands for of courts of law, or whenever we call the word justice, the word forensics is used. Medical jurisprudence is a very common terminology used synonymously, almost still synonymously, as a confused with forensic medicine. But this is one of the very small branches of forensic medicine. And if you see there could be persons from the law background and others also. And if you see the Bible of the forensic medicine, whenever the case is fought, the defense lawyer puts that book, or that is treated as a reference, that is the Modi's textbook of medical jurisprudence and toxicology. Right? Still the name which was given in 1920, after even a century, that is continued and it is treated as synonymous. But we know that it's entirely different, or you can say one of the sub-branches of the forensic medicine. Toxicology invariably goes hand in hand when we talk about the forensic medicine. You talk about the MBBS curriculum, right? So who teaches the toxicology? It is the forensic medicine faculty who teaches the toxicology, right? Very basics. We are talking about the treatment of the person. So when we are talking about the treatment part, then it is another branch of toxicology further. Now it is the area of super specialty. We are venturing into so many specialties and super specialties. Toxicology, when we are treating that person, the role of medical toxicology or clinical toxicology is there. When that same person dies, then we conduct the post-mortem examination. Then there is another branch of toxicology that is called post-mortem toxicology. Right? One needs to understand. We don't know. We have seen that even the doctor and whosoever is involved in that doesn't know how to preserve the viscera, what is the preservative to be used, and ultimately it affects the outcome of the case. So that branch, post-mortem toxicology, the doctor preserves that viscera, gives it to the police person, you pupil, you take it to the police malkhana. Right now I am coming on to something, wanting something which needs addressing, and you keep it at the malkhana for 6 months, for 1 year, 2 years, n number of years. उसके बाद आप लोग फिर फोरेंसिक साइंस लैब में ले जाते हो, 2 साल के बाद में फिर फोरेंसिक साइंस लैब वाला जो साइंटिस्ट है उसको फर्दर 6 महीने, साल भर, 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन कितनी अपेंडिक्सी है, उसके बाद वो एनालाइज करता है. अल्टीमेटली विजन रिपोर्ट डॉक्टर के पास आती है थ्रू पुलिस आफ्टर 3 to 4 to 5 years. वीआईपी केसेस थोड़ा एक्सपेडाइट हो जाएगी, नहीं तो 80% केसेस में आती ही नहीं है केस. अभी हमने 25 साल की स्टडी किया एम्स में कि हमने कितने विजरा प्रिजर्व किए और कितने हमारे पास एफएसएल की रिपोर्ट आई,
25 years study from 1960 to 2020 तक 2020 तक का डेटा एनालाइज किया। 25,000 केसेस में लगभग हमने इस तरह प्रिजर्व किए थे और केवल 7,000 केसेस में हमारे पास रिपोर्ट आई है आफ्टर 25 years. So we know how the pathologic system is there, right? And everything affects the crime, everything affects the outcome of the case. Once we understand that yes, it needs to be addressed, आप उसको पुलिस मालखाना में रख करके भूल मत जाइए। पुलिस मालखाना से उसको जल्दी से जल्दी फोरेंसिक साइंस लैब में पहुंचाइए, राइट? तब वो एनालाइज कर सकेगा। Then it is their role कि हाँ भाई वहाँ पे कितना वर्कलोड है and all those. So we are different fora, we are trying to address all those things. But ultimately the outcome of the case is dependent upon that. That is the third branch of the toxicology. अब वो इस तरह एग्जामिन कर लेता है, उसके बाद रिपोर्ट किसको देता है? फिर आपको देता है और आप उसको कलेक्ट करके लाते हो और फिर उसके बाद आप डॉक्टर को एग्जामिनेशन के बाद फिर आप कहते हो कि आपकी फाइनल ओपिनियन दिया है। नाउ द डॉक्टर ऑन द बेसिस ऑफ starting from the post-mortem report, all the circumstantial evidence as well as the FSL report, now he gives the final opinion about the cause of death. Now he interprets that report कि उसके अंदर कौन सा पॉइजन है, निकला है कि नहीं निकला है, और निकला है तो कितना निकला है, और उस केस उसकी इस केस के रेफरेंस में कैसे इसको इंटरप्रेट करें। That branch of toxicology is called as forensic toxicology. So now we are talking about super specialization and highest attaining the highest skill. Even the toxicology also has ventured into so many branches. And जैसे जैसे हमारी साइंस प्रोग्रेस हो रही है, जितनी भी एलाइड डिसिप्लिन है फोरेंसिक से, they all are progressing. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास केवल स्ट्रेटनाइज रिमेन मिले, खाली हमारे पास हड्डियां मिली और हड्डियों को देख करके बताना है कि क्या है, जैसे कि शीना बोरा केस, जैसे कि निखारी केस, या अभी बॉडी डिसमेंबर्ड बॉडी पार्ट्स मिले, श्रद्धावाकर केस अभी रिसेंटली। और इसके लिए आपको फोरेंसिक मेडिसिन की नॉलेज से भी और ऊपर चाहिए जब हम हड्डियों की और इसकी बात करते हैं, बिकॉज it is one of the part and they cannot be that much expert when we talk about the forensic anthropology, right? We are marching towards the progression of science and to have the more and better scientific investigation. So that needs to be understood. It's not a, you can say only domain of the हर डॉक्टर ही करेगा। बहुत बारी तो क्या होता है कि यूपी का अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, इवन एनाटमी वालों के बोर्ड में मेंबर बनाते हैं उनको कि हाँ जी हड्डियों को उनको ज़्यादा नॉलेज है, वो हेल्प करेंगे। बट इफ आई टॉक अबाउट द सिनेरियो ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज द ब्रांच ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। दे हैव डन देयर नॉन मेडिकल थिंग और मेडिकल थिंग, दोनों तरह की ब्रांचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी की। दे आर पार्ट ऑफ द टीम हु हेल्प, बिकॉज वो उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। अब उस नॉलेज को लीगल कंटेक्स्ट में कैसे यूज करना है, नाउ देयर कम्स द आर्ट and there comes the understanding. Forensic anthropology, forensic odontology, छोटा सा एग्जाम्पल दिया था हमारे वाइस चांसलर साहब ने, वाइट मार्क्स, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द डोमेन. Forensic odontology is developing in India. Thus, forensic dental council में we are working here in this field for almost 10-12 years just to improve the forensic odontology branch, and now there is a specified course in the forensic odontology as well, right? Still it is developing branch. फोरेंसिक रेडियोलॉजी वेरी लेटेस्ट, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले 2008 में मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था ऑटोप्सी के ऊपर। आज आप शायद 80% लोगों को ऑटोप्सी का टर्मिनोलॉजी पता है कि क्या होती है, यानी कि पोस्टमार्टम करना विद द हेल्प ऑफ एक्सरे एंड सीटी स्कैन विद द वर्चुअल मीन्स। एंड पोस्टमार्टम मीन्स की जो नॉर्मल आइडिया है कि पोस्टमार्टम में डेड बॉडी खोली जाती है, पूरे बॉडी कैविटीज ओपन होती है, और हमारी सोसाइटी और हमारा कोई भी रिलेटिव इस चीज़ को एग्री नहीं करता बिकॉज ऑफ द रिलीजियस बिलीफ। एनीबडी विल नॉट वांट हिज रिलेटिव्स डेड बॉडी टू बी ओपन। तो अगर बिना ओपन किए विद साइंटिफिक एड अगर हम इंटरनल फाइंडिंग्स डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, देयर कम्स द रोल। तो ये फोरेंसिक रेडियोलॉजी लगे हुए हम लोग 15 साल से। नाउ आई थिंक यू माइट हैव सीन दैट एम्स वी हैव पुट इन प्लेस। कोरोना ने हमें बेसिकली अपॉर्चुनिटी दे दी जिसके अंदर हमने सिस्टम को और स्ट्रेंथन किया, राइट? बिकॉज वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि नोबडी वांटेड टू ओपन द बॉडी। टच करना दूर, ओपन तो बहुत दूर की बात है, उसके पास जाने से भी घबरा रहे थे। लेकिन अगर मेडिकल लीगल केस है तो पोस्टमार्टम करना है, तो आपको पोस्टमार्टम करना भी है और डेड बॉडी नहीं भी खोलनी है, तो तरीका क्या है? तो हमारा वो आपदा में अवसर, जो मोदी जी का नारा था, आपदा में अवसर, वी यूज दैट अपॉर्चुनिटी
और हमें बहुत स्ट्रेंथन मिला उस पीरियड को। हमने 3 साल में अपना पूरा इन हाउस सिस्टम दुरुस्त कर दिया। पता चल गया हमको कि कैसे कैसे फाइंडिंग होती है, और एक्सटर्नल भी कैसे कर रहे हैं, इंटरनल कैसे कर रहे हैं, उनको कोरिलेट भी कैसे कर रहे हैं कि जो हमें दिख रहे हैं हम वैसे ही करते हैं, वैसा भी है, और अगर हम खाली रेडियोलॉजी से करें तो कैसा है। नाउ वी आर टेकिंग दैट इनटू मच फर्दर। रोड एक्सीडेंट केसेस में, नॉर्मल सडन डेथ केसेस में, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, जैसे आपने सुना होगा राजेश श्रीवास्तव केस, जिसके अंदर हमने डेड बॉडी ओपन नहीं की। आइडियली टेक्निकली अगर बात करें सडन डेथ को, केस था ब्रॉड डेड, जो भी इलाज चला उसका एमएनसी इंटर हो गया, कायदे से उसको एज पर पुलिस नॉर्म 174 सीआरपीसी की बात करें तो ऑटोप्सी होनी थी, मतलब ऑटोप्सी का मतलब कि ओपन होना चाहिए, बट हमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, 40 दिन एडमिट रहा और बहुत सारे एविडेंसेस, एक्सटर्नल कुछ है नहीं, इंटरनल की फाइंडिंग सब है, सीटी से डॉक्यूमेंट कर दी, और विदाउट ओपनिंग द डेड बॉडी वी हैव डन दैट। So everybody is, you can say, satisfied. The police person is satisfied because the legal requirements are taken care of. Relatives are satisfied because they don't want to get their deceased, their relatives' body cut open. Right? Everybody is satisfied. So that is the concept. धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं, कहाँ केस में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, that is another area of research and expertise. It will come with the passage of time, but it is developing gradually. Entomology, right? With the help of, I will come to that later. Mythology, all those. सर ने टॉपिक क्या था कि फोरम पे जहाँ पे होते थे, फोरम पे क्या होता था, मैं इसको फर्दर इलेबोरेट करूँगा. Basically, genesis of the word forensic arose from the word forum, and forum used to be the marketplace where all the respectable persons of particular society, जैसे कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत और खाप पंचायत चलती है, एक पर्टिकुलर दिन पे मान लीजिए शनिवार की शाम को जब बाजार लग रही है, बेसिकली फोरम इज ए बाजार, मार्केट प्लेस, तो वहाँ पे सारे गाँव वाले इकट्ठा हो जाते थे और जो भी लड़ाई झगड़े उनके होते थे उनके आपस में बैठ करके डिस्कस करके सुलहनामा हो गया या जो कोई भी पेनाल्टी देनी है वहीं पे सबकी प्रेजेंस में देते थे. एंड दैट प्लेस यूज्ड टू बी कॉल्ड एज फोरम. It was in Rome. So 2016 में I visited Rome, and probably I think all of you can remember, recognize this building. क्या है? Younger generation बता देगी तुरंत. Yes, it is one of the 7 wonders of the world. Roman Colosseum. Just opposite Roman Colosseum, the remnants of the Forum are still prevalent there. And now if you go there, इटली आप जाएंगे, रोम जाएंगे, कोलोसियम के सामने अगर आपका फोरेंसिक में इस तरह का इंटरेस्ट है, उन्होंने इसके ऊपर 10 यूरो का टिकट लगाया हुआ है. यू हैव टू गो, पे टू 10 यूरोस, यानी कि 800-900 रुपए, और आप जाओगे वो पूरा प्लेस जहाँ ये सब होता था उसको उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है. राइट, so that was the genesis of the word. कहाँ से हमने फोरम एरोज हुआ. So whenever any altercation, कोई भी लड़ाई झगड़ा है, कुछ भी हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो प्लेस था उसको फोरम कहते थे, और फोरम से फोरेंसिक इजाद हुआ, और फिर now we are talking about forensic medicine. The other branch now I'm taking into the forensic science. We are talking about the collaboration between forensic medicine and forensic science. What exactly is this forensic science? There is a little bit difference. Sometimes the general public is confused, and these both the two branches are, you can say, taken together. But if you go into the detail, then there is a lot of difference between the functioning of these two branches. When we talk about the forensic sciences, then specifically it deals with the, most of the time, it is the analytical aspects or the instrumentation part. Right? जैसे कि अभी छोटा सा एग्जाम्पल लिया हमने, अगर हम विसरा प्रिजर्व करते हैं, पॉइजनिंग का केस है, तो विसरा एनालिसिस कौन करेगा? एफएसएल में टॉक्सिकोलॉजी जो केमिस्ट है, जो एक्सपर्ट है वो. बाय कोई गोली का केस है, बुलेट का केस है, तो हमने पोस्टमार्टम किया, बुलेट निकाल करके दे दिया, और वो बैलिस्टिक आप लोग जाओगे फिर एफएसएल में जमा करोगे, और उसके बाद में अगर कोई क्राइम वेपन रिकवरी होती है उससे मैच कराओगे कि हाँ भाई ये इसी वेपन से फायर हुआ है नहीं, या अगर कोई टेस्ट बुलेट है तो सेम है कि नहीं. ऑल दिस थिंग्स दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बैलिस्टिक. तो अगर हम केस सॉल्विंग आउट की बात करें तो खाली पोस्टमार्टम से भी काम नहीं चलेगा. You need all these, and that's why you are talking about the collaboration and understanding of everyone. Biological fluids analysis, sexual offense, murder, wherever this role of any biological evidence like saliva, semen, blood, वो अगर करेंगे, right, तो हम निकाल करके देंगे during the time of examination, dead body से आपको देंगे, आप अगेन एफएसएल में जाओगे और फिर वहाँ वो एनालाइज करेगा and then वापस देगा, and all those, right. So in the terms of criminal investigation against the human body, both these branches becomes complementary to each other. But there are certain branches
where there is no roll up, you can say, it is, the crime is not particularly against the human body. Like we are talking about the documents examination, कोई signature fraud है, so that is a different issue, right? Handwriting का कुछ mismatch है, right? या कोई document prove करना, so that is a pure branch of forensic science where there is basically no role of, you can say, forensic medicine. अभी आजकल हमारा computer crime day by day बढ़ता जा रहा है, the whole branch has come of cyber forensics. Again, there is basically there is no role by and large, but we have done the cases. Even in the cyber forensics, we have helped a lot. I will discuss on some other platform. So when we talk about the crime against the human body, both these branches becomes complementary to each other. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे साइंस हमारी प्रोग्रेस हो रही है, in addition the forensic medicine is also venturing into kind of super speciality. When we are talking about any matter pertaining to death, that is called as thanatology, the branch of the forensic medicine. Only injuries, the traumatology, right? Now, most of the time the forensic medicine doctors are treated as ये तो गुर्दे वाले डॉक्टर हैं, इनका काम है खाली पोस्टमार्टम करना. That was the usual understanding, but it is not like that. There is so many situations where, in addition to that basic, you can say, role of conducting the autopsy and all, there is so many situations, like so many issues of abortion. The branch of clinical forensic medicine is there. Sexual jurisprudence, when we talk about great POXO cases, medical ethics, negligence and consumer protection act, toxicology already covered. Forensic engineering. Now I am taking you to the deeper, where actually there is a collaboration between both these branches. When we are talking about the road traffic accident, ठीक है, हमने पोस्टमार्टम कर दिया, इंजरी डिस्क्राइब कर दिया, but उस इंजरी के पैटर्न को समझने के लिए how it would have been caused, then we have to reconstruct the scene, right? In that situation, there occurs the role of forensic engineering. So many cases, in RTA cases, in fall from height cases, and there we have actually incorporated in all these cases the persons, the scientists from the IIT Delhi. In that particular case, Honorable Minister Gopinath Munde ji died, and he was sitting probably, I think you can remember, वो कार की बैक सीट पे बैठे थे और उसमें जा रहे थे एयरपोर्ट के लिए और एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई, राइट? सो बेसिकली इट वाज अ काइंड ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बट उनके शरीर के ऊपर कोई वैसी चोटें नहीं थी, कार के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन अंदर उनकी जो स्पाइन थी वो टूट गई, राइट? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट एंड ऑल. सो देयर वाज देयर, सो वी रिकंस्ट्रक्टेड. So then it was, so many issues were there. ये कार ऐसे जा रही थी, वहाँ से कार ऐसे जा रही थी, उसकी क्या स्पीड थी, इसकी क्या स्पीड थी, अगर इम्पैक्ट होगा तो कितना फोर्स जनरेट होगा, और ये इन्होंने बेल्ट नहीं लगाई हुई थी, हालांकि पीछे बैठे हुए थे. All these issues were there. So we tried to reconstruct that and we could sort it out, everything meticulously, with the help of counterparts from that field of sciences, IIT Mumbai. So when we talk about all these, this whole becomes interdisciplinary. Natasha, I think probably you can remember way back, आज से 25 साल पहले हमारे कांग्रेस के बहुत सीनियर मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी बहू थी, वो यार होटल से कूद गई, राइट? सो देन अगेन देयर वर सो मेनी इश्यूज कि जो उसने 7 मंजिला से कूदी, अब कूद गई या उसको धक्का दे दिया या खुद गिर गई, क्या उसकी इंजरी पैटर्न है, क्या बीच में चीजें आ रही है, 7 फ्लोर से गिर रही है, कैसे उसकी बॉडी बिहेव करेगी, whether that pattern of injury is commensurating with the fall from height or not, we could actually understand when we actually recreated, and there this whole branch of forensic engineering has come out. Scene reconstruction, we are invariably in the heinous crimes, we are talking about the reconstruction of scene. Sushant Singh Rajput case, it created so much controversy in the public media and all, but actually when I visited the scene of crime, we could understand exactly that what is the type of injury, जो उसका pattern है injury का, किस तरह से explain हो सकता है. Actually when we recreated, it becomes very easy, right? So with the help of all those forensic physicists, all those persons from the forensic science, because when we work with the CBI, we have got a totally different kind of understanding or investigating the scene. There, it's a whole team of the forensic, all forensic experts work together, and that's why the investigation done by the CBI is totally different from it which is done by a normal, you can say, criminal investigation by the police. Suicide note analysis, sometimes, जैसा कि मैंने बताया, कई बार जो है आपको ज़्यादातर डोमेन है कि हैंड राइटिंग कैसी थी एंड ऑल,
Usually it is the domain of the forensic scientist. But एक केस हुआ था IAS D.K. Ravi का आपका, बैंगलोर के, he was a senior IAS and he committed suicide by hanging, right? तो उसके बाद में जब उनका suicide note में उन्होंने लिखा था, and when we saw that suicide note, there was something peculiarity, right? So we just tried to analyze that why it is like that, and then we could correlate that how this personality was changing over a period of years. तो पहले ही used to be a state government के PCS officer थे, तो उनका तब जो साइन था वो बिल्कुल वैसा उनका कन्नड़ में सिंपल सा साइन हुआ करता था. Afterwards he was selected into IAS, तो उसके बाद नई सर्विस ग्रुप बनी. तो नई सर्विस ग्रुप बनती है, उसमें हर एक के सिग्नेचर डॉक्यूमेंट होते हैं. वो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट हुआ इंग्लिश में, ब्यूटीफुल इंग्लिश, राइट? और उसके बाद में जब हमने जिस टाइम पर डेथ हुई है, उसके पहले जो उनके ऑफिशियल नोट्स जब हमने निकलवाए, 3/4 of that page is only covering the signature of that. And now this becomes extremely unusual. अगर पूरा इतना बड़ा पेज है और 3/4 में सिर्फ साइन हो, ऊपर की 4 लाइनें लिखी हो, what does it denote? It denotes something different. That person is not at all a normal person. His mind is changing, his behavior is changing. So we just analyze his writing, his signature pattern. डायरेक्ट नहीं था, बट इनडायरेक्टली भी बहुत सारे केसेस पे केस सॉल्विंग करने में हेल्प मिलती है, राइट? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स, जस्ट अभी आपको बताया मैंने, फोरेंसिक इंजीनियरिंग, कितना इम्पैक्ट हो, क्या स्पीड है, ऑल दीज थिंग्स इट इज देयर. This is the SSR case. Probably you might have seen me sitting, standing over the SSR. Every media is just focusing upon me. जब हम गए थे वहाँ पर reconstruct करने के लिए, we just tried to recreate and reconstruct everything. And for us it was a very simple and easy case. ऊपर भी चढ़ के देखा हमने क्या क्या assess हो सकती है. Then we could understand why we could say so much confidently when actually we visited the scene and we have the first and foremost knowledge of that. हमारे सिस्टम में ऐसा है अभी तक, यूजुअली डॉक्टर जो है सीना क्राइम पे विजिट नहीं करता, उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होती है. वो होता है आपके इंक्वेस्ट पेपर में आपने जो लिख दिया उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आपने क्या लिखा, उसी से वो अपना इमेजिन करता है कि हाँ डेड बॉडी ऐसी कंडीशन में पड़ी है, राइट? बट जो एक्चुअली जब जाता है तब उसकी अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन इट बिकम्स डिफरेंट, राइट? सो वी आर ट्राइंग टू से दैट इन ऑल दीज टाइप ऑफ केसेस इट should be there. Balayu two sisters death case. Again, with the help of all those recreation with the CBI persons and all, we could sort it out. There were so many allegations and counter allegations, but we actually do with this, you can say, justice with that case. I'll take not more than 10 minutes. When we talk about this crime against the human body, then we know that body of the recovery, जिसके ऊपर crime हुआ है, that recovery of that body is must. उसके बाद ही आप उसको करोगे कि हाँ भाई एक पहले आइडेंटिफाई करो, पहले तो बॉडी रिकवर हो, फिर उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उसके रिलेटिव्स को ढूंढना शुरू करो कि क्या हुआ है एंड ऑल दोस. द केस स्टार्ट्स लाइक दैट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस डिस्कवरी ऑफ द बॉडी ऑफ ऑफेंस पर्पस डेलिक्टाइव व्हाट वी कॉल्ड एज द रोल ऑफ द आइडेंटिफिकेशन किसका है? आप लोगों का. बॉडी कौन आइडेंटिफाई करता है? इट इज द रोल ऑफ द पुलिस. आप लोग अपने सारे एफर्ट्स करते हो, जो भी वहाँ पे है, जो भी उसमें कुछ पहना हुआ है, कोई मोबाइल है, कुछ भी आइडेंटिटी कार्ड है, ये सब करते हो. नहीं होता है फिर आप पेपर में एडवर्टाइजमेंट कराते हो, 3 दिन वेट करते हो, उसकी भी सर्टेन गाइडलाइंस है. लेकिन उसके बावजूद अगर नहीं होता है, देन देयर इज अ रोल ऑफ डिफरेंट पर्संस ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड व्हिच हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन. नॉर्मल केस है तो ठीक है, अभी बताया मैंने, अगर स्केलेटनाइज्ड बॉडी हो तो आप लोग बेकार हो गए. स्केलेटनाइज्ड बॉडी में आपको खाली आइडिया मिलता है इसने इस कलर का कपड़ा पहना हुआ था, बट एग्जैक्टली क्या है यू डोंट नो. देन देयर इज अ रोल ऑफ ऑल द अदर ब्रांचेस ऑफ द फोरेंसिक साइंसेस लाइक एंथ्रोपोलॉजी. अभी आपको बताया मैंने फिंगरप्रिंट्स. फिंगरप्रिंट्स इज द यू कैन से देन है हमारे इंडिया की पूरे वर्ल्ड को, राइट? विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट वन पर्सन कैन बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड बिकॉज इट इज सेड दैट इवन दो अगर ट्विंस का भी अगर आप करते हैं, उनकी डीएनए प्रोफाइलिंग करते हो तो उनका ब्लड तो सेम होगा, डीएनए प्रोफाइलिंग मैच करेगी, लेकिन उनके फिंगरप्रिंटिंग उनके भी मैच नहीं करते हैं, इवन द ट्विंस, राइट? So it has got so much discriminatory value that person can be exactly identified. Whole branch of fingerprinting is there in forensic sciences. पूरा डोमेन उनकी पूरी विंग है जो कि सिर्फ इसी पे काम करती है, फिंगरप्रिंट आइडेंटिटी. एंड वी नो कहाँ चांस प्रिंट क्राइम सीन पे जाते हो वहाँ से मिलते हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग.
So idea is to identify not only the dead body, the culprits, all those kind of things, the linking with the chain of evidence, when you recover the, you can say, the weapon of offense, अगर कोई चाकू मिला हुआ है, उसके ऊपर भी आपको निशान उसके मिलेंगे, use के. All this needs to be meticulously preserved, examined, and then you can say maintain the whole chain of exhibits. So it requires the scientific understanding by you people also. कैसे आपको exhibit handle करना है, कैसे आपको सबमिट करना है. तो चाहे जितना बड़ा भारी फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट हो, पोस्टमार्टम एक्सपर्ट हो, अगर आपने ये चीजें पे लैप्स हो गया तो केस तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. सारी मेहनत पे पानी फिर गया. तभी मैंने पहले बोला इट इज द रोल ऑफ ऑल फोर पिलर्स. चारों को अपना अपना काम मजबूती से और एक्सपर्टाइज से करना होता है. एंड दैट इज द होल आइडिया ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप where we actually disseminate, or you can say each other, we interact with each other and we try to learn कि कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं, कहाँ पे हमारा रोल है, हम improve कर सकते हैं. Like all those. पोस्टमार्टम की जब बात करते हैं तो these are the basic things. Times in death or cause of death, ये सारी चीजें उसको पोस्टमार्टम के दौरान हम उसको confirm करते हैं, right? But yeah, fingerprinting I have already told you, and it was basically two police constables from Kolkata. Again, the credit goes to the police persons. Basically, दो police constables थे, Ajijula and Hemchand Bose, who have done all those things. गार्टन साहब ने तो फालतू पढ़कर क्रेडिट ले लिया, because उस वक्त ब्रिटिशर्स का रूल था और उन्होंने उसको जरा सिंप्लीफाइड करके डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में डॉक्यूमेंट करके और कर दिया. बट जब ये सारी चीजें चली and the things progressed, when I was there in 2012, I was a Commonwealth fellow. I was working in the Scotland police. I raised this point. मैंने उनको लिखा, I was the secretary at that time. मैंने लेटर लिखा, ये गलत है, इसको विड्रॉ करो. और अगर आप आज विकिपीडिया उठा करके देखोगे, this credit is not being given only to the Francis Galton and all. The credit is actually to the Indians for giving this the whole of the world finger these printings, right? So just like इसमें भी जो भी होता है, and it is said that unique that we have got this whole, and now we are actually taking it to the further level. एंड जितने भी आपके बायोमेट्रिक्स है तो हमारे सारे कंप्लीट आधार कार्ड का होल पर्पस ही यही है कि आपका डेटाबेस उसमें जनरेट हो जाए और आपको बाद में जब कुछ भी मिले तो आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए. बिकॉज अगर फिंगरप्रिंट का डेटा उसके अंदर स्टोर्ड है तो बाद में कहीं भी अगर आपको फिंगरप्रिंट कोई मिलता है तो इट कैन बी कोरिलेटेड, राइट. बट स्टिल वी आर हैविंग सो मेनी इश्यूज, legal issues pertaining to the confidentiality and all. Still the act has not been formed, right? Because confidentiality and all those have to be maintained. Being part of that committee also, we are trying to address कि कहाँ पे हम criminal investigation को improve करने के लिए किस level तक हम इसको allow कर सकते हैं. कर भी सकते हैं कि नहीं, civil के लिए तो ठीक है, but criminal matters के लिए कैसे allow करना है, कितना allow करना है, still it is matter of discussion. Right? So we have already discussed about this forensic anthropology, Nithari Police Noida. I was the part of the team who actually went to the drain जहाँ पे ये सारे 41 packets of polythene dismembered body parts of those 18 children were buried and we retrieved after 3 years of alleged incident जहाँ पे हमें सिर्फ हड्डियाँ मिली थी, वो भी body parts, and we could actually recreate everything with the knowledge of specialized knowledge of forensic anthropology. उसको करने के बाद मुझे लगता था मैं तो बहुत भारी एक्सपर्ट हूँ फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का, इतना मैंने वर्ल्ड लेवल का केस मैंने सॉल्व कर दिया है एंड ऑल दोस थिंग्स, फील सेटिस्फाइड. बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट. Actually, when I went into again second fellowship in 2015, again in Scotland, in a particular field of forensic anthropology, to learn more and more about this branch, because जब मैं कर रहा था तब हमें लगा कि नहीं है हमारी नॉलेज बट उतनी नहीं है, we can learn more, right? So again went there and we learned so many intricacies about that. छोटी छोटी चीजें हैं कि हाँ जी आपने मेजरमेंट ले लिया, बट अभी भी मैं एमडी एग्जाम देता हूँ, कुछ बोलता हूँ, बोला एक बार मेजरमेंट लेके दिखाओ कहाँ पे कौन से रेफरेंट पॉइंट रखो कि कहाँ पे वैल्यू कैलिपर नहीं पता होता है, किस जगह से किस जगह तक मेजर करना है. थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया कि हाँ ये इंडेक्स है, ये है, वो है, लेंथ ऑफ फ्यूज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ फिशियर, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रेफरेंस पॉइंट, हाउ यू डू इट, it is a matter of skill, right? So you learning से आती है धीरे धीरे, and when you learn so much. So actually, what I am trying to give the message to the students is specifically that there is no bar for the learning. The man continues, anyone continues to learn till his death. हमेशा आप कुछ ना कुछ learn करते हो, एक दूसरे से learn करते हो.
राइट. सो आप कभी ये मत समझो कि हमने बहुत लर्न कर लिया है एंड आई एम द बॉस एंड आई नो ईच एंड एवरीथिंग. सो दैट वाज द थिंग, राइट. एंड you do that, then actually the things fall into place. जैसे ही मैं वहाँ से वापस आया अप्रैल में, अगस्त में हमारे पास ये शीना बोरा का केस आ गया. एंड शीना बोरा केस में एक्चुअली आई अप्लाइड ऑल दैट, जितना भी नॉलेज मैंने वहाँ से सीख करके आया था, मैंने सब कुछ अप्लाई कर दिया. एंड दैट्स व्हाई शीना बोरा इज एब्सोल्यूट वाटर टाइप केस. कि उसके कितने पैरामीटर्स उसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी के लिए डाल दिए कि देयर इज नो चैलेंज ऑफ दैट. बहुत रोल मिला, बहुत हेल्प मिली मुझे ब्रांच की, डेंटिस्ट्री की और ऑल दी ब्रांचेस की. कमिंग ऑन टू दैट ब्रांच और इसी डेंटिस्ट्री, Dr. Parul is there, right? So she will touch upon some other topic. But when we are talking about the criminal investigation, it helps a lot, not only in the routine matters. 320 वर्ष जब इसकी बात करते हैं, फ्रैक्चर हो गया बोन का, साथ में टूथ भी, वो भी कवर्ड होता है अंडर दैट क्लॉज. दैट वो तो है ही है, बट बहुत एज एस्टिमेशन, आइडेंटिफिकेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प मिलती है. और शीना बोरा की बात करूँगा, स्पेसिफिक जो उसका डेंटल पैटर्न था, राइट, वो बहुत स्पेसिफिक होता है हर आदमी का. हमने उसके एक्सरे निकलवाए, क्या वो पैटर्न इस पैटर्न से मैच कर रहा है. ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ डेंटिस्ट, राइट. सो दैट हेल्प अस अ लॉट. Specific findings, some unusual findings, all these gives you can say strengthen your report of scientific investigation. How much DNA comes बहुत बाद में आता है. इस केस में तो DNA basically फेल हो गया. If you can remember, क्योंकि उसके भी तीसरी शादी थी, उसके हस्बैंड की, और इसकी बीवी, इसका भी एक तीसरी शादी थी. बच्चा कौन किसका था पता ही नहीं. इस वाले हस्बैंड का है कि उसका हस्बैंड है. मैच किससे DNA करोगे? So many controversies were there, but it was actually our identification, simple anthropology knowledge वो वहीं पे खत्म हो गया. So that was just an add-on on that. Of course, it helps, but not of much help. कई बार इस तरह की situation पैदा हो जाती है. Along with the fingerprint, now it is said that even the lip prints are of everyone is also unique, right? That branch is coming up, what is called as chiroscopy. Lip prints, that every person has got a different unique lip print. अगर ग्लास में पानी पिया है मैंने, तो उसके ऊपर जो लिप्स का प्रिंट आएगा, तो साइंटिफिक मेथड से अगर आप उठा सकते हो, तो सीन ऑफ क्राइम पे अगर कोई खाली बोतल पड़ी है बियर की या ग्लास की, आपने उसको उठाया, विद द हेल्प ऑफ लिप प्रिंट आल्सो द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन कैन बी प्रूव कि हाँ ये वहाँ पे था, इस ग्लास से पानी पिया है या जो भी पिया है, राइट. ऑल दोज थिंग्स. बाइट मार्क का एग्जाम्पल सर दे ऑलरेडी, वी हैव डन सो मेनी केसेस जहाँ पे हमको हेल्प मिलती है. नॉट ओनली बाइट मार्क, ही वाज टॉकिंग अबाउट डॉग्स एंड क्लीनिंग. इंटरेस्टिंग केस. हमारे होम मिनिस्टर ऑफ दिल्ली सोमनाथ भारती के, उनके ऊपर इंडिकेशन था कि उन्होंने अपना डॉग जो ट्रेन डॉग था अपनी बीवी के ऊपर छुड़वा दिया कि इसको बाइट कर दे और उसको मार दे, राइट. सो दैट वाज द इशू. तो अब उनकी बीवी को एग्जामिन करने के लिए भेजा गया हमारे पास, और एग्जामिन ये करो कि ये डॉग के बाइट से हो सकता है कि नहीं. ऑल दिस थिंग्स. सो वी रिक्वायर दैट the knowledge of all those there are any crime issues there. Basically, when we understand that basic concept, it becomes much easy. This DEI situations, the disaster victim identification, when there is a mass disaster, there is a much bigger role of anthropology as well as this odontology. Teeth is the biggest, or you can say the best source of DNA when we talk about taking the DNA sample. DNA sample कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कैसे प्रिजर्व करना है. बहुत सारे केस अभी तो ऐसे ही decontamination is a huge issue. So again, that knowledge helps. Which is the best source, right? There could be limitations. तो ये सब होता है. Then crime scene officer was I just you can say wind up hurriedly because this is very important to you. Crime scene officers, basically you in our setup, the police person acts as a crime scene officer. He goes to the scene of crime. दिल्ली में अभी बड़ा changes कर रहे हैं और भी states में, and Dr. Harsh Sharma is there. So he will say that he has actually worked as a crime scene officer from almost 3 decades. Must have visited 5,000 crime scenes along with the police. दिल्ली में थोड़ा सा चेंजेस हो रहे हैं कि हमारे फॉरेंसिक साइंटिस्ट बच्चे हैं जो उनको हम दिल्ली पुलिस के साथ वैन के साथ अटैच हो रहे हैं. Now they go with the police to the scene and collect the scene, collect the various biological samples, right? But बहुत सारी वो ठीक है, but 90% केसेस में आपके यहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं होगा शायद. I am not there, you know, but they may not be there. So it is basically you who will go and see the dead body for the first time. It is you are the first person to see. तो वहाँ पे आप कैसे डॉक्यूमेंट करोगे और उसको देख करके कैसे आप उसको इंटरप्रेट करोगे. Again that knowledge helps. Sometimes the simple case of postmortem staining, but at unusual site
The allegation could be there कि एक पर्सन को बहुत मारा है आपको घूसों से और इस वजह से मर गया, but it is not a bruise, not a confusion, it is a simple case of postmortem screening, but body upside down हो गई, normal नहीं थी, आधा पोर्शन नीचे था, धड़ का पोर्शन ऊपर था, you will get that matter. So ये तभी समझ में आएगा जब आप सीन आप रहे हैं, आपको पता हो कि बॉडी इस कंडीशन में मिली है। अब अगर डॉक्टर को ये नॉलेज नहीं दोगे आप कि बॉडी इस कंडीशन में पाई गई थी, it is likely to be misinterpreted by many of the forensic experts also if they do a cursory examination, right? All those kind of things. So it helps in the understanding of postmortem interval. That is one of the biggest challenge. Coming on to the other branches who help in the postmortem interval or the time system restriction. Entomology, with the help of life cycle of various insects, now we can say, we can give a clue about the time system. बिकॉज मरने के बाद में 2 दिन के बाद में फ्लाई अट्रैक्ट हो जाती है, अपने अंडे देने लगती है, उसके बाद में उनके बच्चे निकलते हैं, प्यूपा लार्वा एंड डिफरेंट चेंजेस आते हैं। सो वो स्टेज देख करके विद द हेल्प ऑफ जूलॉजिस्ट वो बता सकता है कि हाँ ये डेड बॉडी को लगभग कितने दिन हो गया होगा। यू कैन कैलकुलेट व्हाट इट हैज डन। यू आर टॉकिंग अबाउट द इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, देयर इज द रोल ऑफ ऑल द ब्रांचेस, वेरियस अदर ब्रांचेस ऑफ द फोरेंसिक साइंस, माइकोलॉजी, बॉटनिस्ट, even botanist can help in the investigation of the postmortem interval, can help in, because fungus की भी एक लाइफ साइकिल होती है, उसका भी एक पैटर्न होता है। अगर वो मिल रही है तो किस किस तरह से ग्रो कर रही है, कैसे उसके स्पोर्स बन रहे हैं, that also you can have a rough idea कि कितने दिन पहले इसकी डेथ हुई होगी। These are branches needs to be developed in our country. हमारे यहाँ बहुत इतना पर्सनल इंटरेस्ट बेसिस पे कुछ लोग कर रहे हैं, but there is not still not a structured course जहाँ पे ये सब चीजें हो सके। I think our vice chancellor is there. I will request him to just think over all these branches and he can make this university the first of its time to develop this kind of courses. And just because of the paucity of time, I will quickly go through all this. So this is how the cause of death is determined, and it becomes very, very tricky in many of these situations. It's not easy to give cause of death because it is dependent upon certain times, so many situations. Right, drug abuse, drug death, and now it becomes the interplay. कैसे आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो कि क्या लेवल है कि नहीं है, कितना है, and all those things. स्कॉर्पियन वाली स्नेक बाइट, हमारे पास अभी भी प्रॉब्लम है। स्नेक बाइट का केस हो तो एफएसएल रिपोर्ट अदर दैन दी जयपुर में कुछ एक लैब है जो कि कुछ कर रहे हैं, दे गिव द रिपोर्ट, अदरवाइज आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेज दो, स्नेक वेनम की कोई रिपोर्ट नहीं आती है। Right, so it is just you can say diagnosis of exclusion and certain other evidences. So we need to have the scientific investigation. कि आप उस पर किस तरह से confirm कर सकते हो कि yes, it is nothing but the snake bite itself, right? All those cases. Because कई सारी states में snake bite के ऊपर compensation है। States provide the compensation 1 लाख 1.5 लाख, कर्नाटका, गोवा, जहाँ पे snake bite के केसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे person disguise करता है। विलेजर्स है वो फेक करता है, मर गया वैसे, उन्होंने उसके ऊपर एक छेद लगा दिया, हाँ इसको सांप ने काट दिया, अब आप प्रूफ करते रहो कि सांप ने नहीं काटा है, बिकॉज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे उस लेवल की नहीं हुई, वहाँ पे हैंडीकैप था और उनका आइडिया होता है कि उसको 1 लाख 1.5 लाख जो भी है वो कंपनसेशन गवर्नमेंट से मिल जाएगी, क्योंकि स्नेक के अगेंस्ट तो आप केस लॉन्च कर नहीं सकते, स्नेक काट के तो भाग गया, ठीक है, तो कल्प्रिट तो है नहीं, अब आप स्नेक के अगेंस्ट FIR लॉन्च नहीं करोगे, गवर्नमेंट ही कंपनसेट करते हैं। But these are the areas. Serology, biology, I have amply discussed. ऐसे blood preserve करना है. Semen, slide, histopathology. Mithun is here. I think we are discussing about on some fora. Mithun, you please develop this histopathology because one of the challenges is there. Pathology वाले बहुत सारी sudden death cases में हमें histopathology का support चाहिए होता है. और होता क्या है कि जिस तरह preserve कर दिया और आपने देखा होगा बहुत सारी opinion जो आप जिस तरह की जो होती है डॉक्टर्स की 20-30% ओपिनियन में यही लिखते हैं, Visceral preserved opinion result, right? Visceral preserved opinion result. एम सिर्फ ये होता है कि यार उस वक्त पल्ला झाड़ो अपना, जो भी दिख रहा है डिकम्पोज बॉडी है ये वो जो कुछ भी भेज दो, विसरा प्रिजर्व हो गई, अब 6 महीने साल भर 2 साल बाद आएगा तब देखा जाएगा। साथ में हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भी भेज देते हैं, और वो हिस्टोपैथोलॉजी करे कौन, फोरेंसिक मेडिसिन वाला या पैथोलॉजी वाला, या किस हॉस्पिटल में होगी, डिस्ट्रिक्ट का कोई जुरिसडिक्शन है वही वाला जुरिसडिक्शन फॉलो होगा, या स्टेट का कोई नोडल सेंटर है, बड़े सारे इश्यू हैं। एक इश्यू के ऊपर वी कैन डिस्कस 1000 टाइम्स, और वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। मुझे तो बोला मैंने कि
भाई मेरठ रीजन का चार्ज तुम ले लो और तुम डेवलप करो, एटलीस्ट यू गिव समथिंग एक्स्ट्रा टू दी पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, राइट? सो ऑल दीज, तो हर एक का रोल है, वी टॉक अबाउट दी वेपन रिकवरी में फोरेंसिक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, राइट? बैलिस्टिक्स, ऑल ballistics, one of the most challenging area when we talk about the firearm investigation. One who has done the mastery of interpreting the firearm injuries, we in the forensic medicine say that yes, he has now become the real expert, because ये सबसे challenging branch है, इसको interpret करना, इसको समझना और वो करना, it becomes very very difficult some many of the time. Crime scene, yes, reinvestigation, so that also helps a lot. But that liberty we are given by the CBI when we go actually कि कितने वेपन थे, एक वेपन था कि दो वेपन था, कहाँ से गोली मारी गई, how it helps, now you can see उसका एक्सरे एग्जामिनेशन, तो all this evidences help you. अब कोई एक्सरे देख करके बता सकता है कि कोई बता सकता है कि इसमें दो डिफरेंट साइजेस की पिलेट्स हैं, तो इसका यह मतलब हुआ कि दो डिफरेंट इसके अंदर फायर यूज हुआ है. That's how the scientific investigation goes on. And जो भी एलिगेशन है उससे कोरिलेट करने के लिए all these small things हैं. Forensic biology, when we talk about the examination, serology, all those evidences. Talking about the DNA profiling, biotechnology. The next speaker, Dr. Vivekanand, is there. He is a man of DNA. We will discuss much and much about that. I am just giving you a brief overview that all these branches of forensics, right, that are helpful when we talk about the crime investigation. Forensic biochemistry, talking about the postmortem interval, क्या तो body fluid में changes होते हैं, we are working upon that. Forensic psychology, talking about the narcoanalysis, brain mapping, lie detection, all again it becomes interdisciplinary. अभी तक हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, एम्स पटना में हमने रिक्रिएट किया. अभी तक क्या है कि वो जो अपना FSL में गए, अब FSL में जो गए उसको इंजेक्शन देना है नार्कोएनालिसिस के लिए, अब इंजेक्शन देने में दिक्कत है. इंजेक्शन देने का राइट डॉक्टर या नर्स के पास है, किसी और के पास, नॉन मेडिकल के पास नहीं है. और खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो क्या करोगे आप, कभी भी एनाफाइलेक्सिस से डेथ भी हो जाती है. तो डिफरेंट, अभी अपने एम्स पटना में उनको गाइड किया. एम्स पटना में जो एनेस्थीसिया वाला पर्सन था, ही गेव द इंजेक्शन और FSL वालों को बुला लिया और वहाँ पे एज ए टीम वर्क वी सॉर्टेड आउट दैट इश्यू, राइट? सो फोरेंसिक साइकोलॉजी, अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि सिर्फ जो है वो FSL के अंदर का ही डोमेन है, बाहर का नहीं. बट इट इज देयर, टाइम्स आर चेंजिंग, वन नीड्स टू एक्सरसाइज कि कहाँ पे हम कैसे करके कर सकते हैं. फोरेंसिक बॉटनी, I can go and on, but I think I will not take you much time and not bore you much. I am sure you must be fed up of this long lecture. I will just hurriedly go through all these branches. Yes, radiology and all, I think we touched upon that. Yes, it helps a lot, especially जब हम बुलेट केस की बात करते हैं, बॉडी में है, कहाँ पे है, रोके गोली है, कितनी है, पूरी निकल के गई है कि नहीं है. क्वांटी चढ़ा केस, उसके अंदर 6 गोली लगी हुई, 6 गोली हमको दिख रही थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम किया करने वाले डॉक्टर थे 2 घंटे लगा रहा, अल्टीमेटली केवल 5 गोली ही निकाल पाया. और बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगी हुई है कि साहब जल्दी दे दीजिए बॉडी, हमको पोस्टमार्टम वहाँ क्रिमेशन करने लोधी गार्डन पे जाना है, लोधी क्रिमेटियम पे जाना है. दैट वाज सो मच प्रेशर. क्वालिटी आप देख रहे हैं, हमने 5 निकाल दी, बहुत है, 5 ही बहुत है. वेपन अगर जितने भी है उससे कोरिलेट कर लेना. वो बॉडी वहाँ चली गई, DCP को मैसेज करने हुआ, वो DCP तुरंत हाथ जोड़ते हुए आ गया, साहब ऐसा मत करो. डेड बॉडी वापस बुलवाई हमने, दोबारा पुलिस को दोबारा पोस्टमार्टम किया. I was called to go there कि भाई आप तो although it was Sunday and all, I was not on duty, but then he searched and handed over. तो समटाइम बड़ी अजीब, लेकिन हम क्यों कह सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक्सरे में छेद दिख रही थी. अगर हमने एक्सरे नहीं करवाया होता तो वह जितनी मिल रही होती काफ़ी 90% इंडिया में ही होता है, राइट? So the help of these all those advances in the investigation, that helps a lot. How we adopt into practice, there comes the art. We are talking about the different forums, this virtual autopsy or the autopsy, going further high end. बिना कुछ किए केवल एक ही सिस्टम से, एक ही मशीन से क्या हम सब कुछ अंदर बाहर ऊपर नीचे सब कुछ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं? We are much and much beyond even the CT scan and all. So the need of our is to understand all these and to upgrade our skill and understanding, knowledge of all these branches of forensic medicine. With this view, the Ministry of Human Resource and Development in 2016 में मुझसे रिक्वेस्ट किया कि साहब आप तो डॉक्टर्स को पढ़ाते हो,
ठीक है, उनका कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन जो हमारा फॉरेंसिक साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पुलिस है, जो जुडिशरी है, उनको इसका एक्सपोजर नहीं होता है. दे डोंट नो मच अबाउट दिस. तो क्या आप कुछ ऐसे मॉड्यूल डेवलप कर सकते हो? तो बेसिकली आई डेवलप्ड इट फॉर द फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स इन 2016. There are almost forensic medicine, anthropology, serology, 35 videos of all. और उसके बाद में they appreciated also because हमें 2-3 साल मुझे हर सैटरडे संडे छुट्टियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैठ जा करके वहाँ स्टूडियो में बैठ के सुबह से शाम तक पहले डिज़ाइन करो, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करो, फिर उसके अंदर और भी बहुत कुछ डालो, मटीरियल पीपल को अंडरस्टैंड करने के लिए. Later on in 2018 this was made open to whole of the world through Vidyamitra channel. The Vidyamitra channel के through, YouTube के through. So if you now just go to the YouTube, just type Vidyamitra, type forensic medicine, my name, injuries, कुछ भी पढ़ना चाहते हो आप, firearm injuries, hanging, strangulation, rape, जो भी कीवर्ड आप डालोगे, the videos will be popping up, and those videos are 30 to 35 minutes. The actual beneficiary of those videos are you only. 2018 में ये open किया, 2020 में कोरोना आ गया. Now the whole pattern of teaching, learning has changed. Now we are talking about the online teaching and all. जो हमने 2016 में बनाया था, बड़े सारे फॉरेंसिक वाले टीचर ही उन्होंने अपडेट किया कि सर आपने तो ये बना दिया, हमारी नौकरी तो गई, अब हम तो कुछ करेंगे नहीं, सारे टीचर सारे स्टूडेंट्स तो आपके थ्रू ही पढ़ेंगे. मैंने कहा ऐसा नहीं है, उसमें भी राइडर डाले. वेल 20% आपकी जो टीचिंग आवर्स हैं दैट कैन बी डिवोटेड टू द ऑनलाइन सिस्टम. दैट वाज 2016. Now the whole world has changed after Corona. We are talking about the online learning and all. To conclude, I will finish that. जितना भी आप इन्वेस्टिगेशन कर लो, कुछ भी लेवल का इन्वेस्टिगेशन कर लो, अगर person involved in the process is not honest, the things आप किसी को किसी भी तरह से आप मोल्ड कर सकते हो. Honesty is the hallmark of any scientific investigation, any criminal investigation. वो baseline है. इसी के ऊपर मैं इस कोट के साथ फिनिश करना चाहूँगा. 19th सेंचुरी में दिया गया था, 200 साल के बाद आज भी उतना ही ट्रू है. The quote is, if the law has made you a witness, remain a man of science. I am talking about the forensic medicine, forensic science, and all those experts. If the law has made you a witness, remain a man of science. You have no victim to avenge, no guilty or innocent person to convict or save. You must bear testimony within the limits of science. उसके फेवर में है, नहीं है, जा रहा है, नहीं आ रहा. As a scientist, as a forensic medicine expert, as a doctor, you are not at all bothered about that. You should go by whatever evidences are there. Right? Unquote by Dr. P.C.H. Brodel in 19th century. So those who want to learn more and more about this forensic medicine, I will invite you in the capacity of President of the Indian Academy of Medical Legal Experts. Incidentally, we are having our conference just after 20 days, 3 weeks, from 1st to 4 June in the beautiful gardens, Scotland of East India. The place is Shillong, and the website is there, iamcui2023.com. You can have all the information on that website. Till 15th, you can have the registration on the reduced rate and submit your abstract also. Just 3-4 days, right? But then afterwards also, if you want to participate, it's open till the last moment also. So I will take this opportunity to invite you all for attending this conference. There are so many related issues from so many different persons, different branches will be discussed there along with the enjoyment, sightseeing, everything. We have got a complete package. Thanks for the patient listening. Thank you very much, Dr. Adarsh. Now, any questions from the house? कोई सवाल आप लोगों को अगर हो तो जरूर पूछिए. Dr. Adarsh, one clarification. I don't know about the case, but in Ponti Chadha case, I have come to know, I don't know whether through media or from somebody else, that after the cremation of Ponti Chadha, the site of some bullet was recovered. नहीं सर, मैंने इसी को क्लैरिफाई किया. ये सब मीडिया की कुकिंग थी. I have read something. Yes sir. ये तो मीडिया की कुकिंग थी because it gives a very bad impression कि cremation ground से dead body
वापस नहीं जाए, राइट। सो मीडिया में कुछ और आया। अक्सर यही होता है कि मीडिया में एक्चुअल होता कुछ और है और मीडिया दिखाती कुछ और है, बिकॉज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ रीजन। टू बी वेरी सिंपल, इफ आई पुट दिस SSR case, still it is open for, you can say, scrutiny by all. बट जो हमने इन्वेस्टिगेट किया, आपको वी आर नॉट द प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर, पोस्टमार्टम तो पहले ही हो चुका था एंड ऑल दो, बट जब आया हमारे पास जो हमने सब कुछ एनालाइज करके दिया और हर चीज का, हर इंजरी पैटर्न का उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, फॉर अस इट इज अ सिंपल केस ऑफ सुसाइडल नहीं है, राइट। इट इज एज सिंपल एज दैट। हमारा डॉक्टर रोज 2 केस ऐसे करता है, राइट, बट इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स। वो आप लोग मतलब समझ सकते हो। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा मैं कि क्यों ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन हुआ। कोरोना शुरू हुआ था, 2 महीने से पब्लिक त्रस्त थी, घर में बैठी हुई थी, सिवाय सुबह से शाम तक उसके पास कोरोना के अलावा कोई न्यूज़ सुनने के लिए था नहीं, और सम वे आर गोइंग इनटू अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड। ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ ये। नाउ इट इज अ बॉलीवुड स्टोरी, एक राइजिंग स्टार है, उभरता हुआ स्टार है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है। अब मीडिया ने उसको इधर का उधर तिल का ताड़ बनाना और उसमें मरीच मसाला इधर का उधर डिफरेंट एंगल से फोटो, एक ही इंजरी की फोटो अगर आप हेड की साइड से लोगे तो कुछ और दिखेगी, लैटरल साइड से लोगे तो कुछ और दिखेगी, फुट एंड से लोगे कुछ और दिखेगी, राइट। तो अब उसको कहाँ से दिखा रहा है, किस तरह से दिखा रहा है। और आजकल तो किसी भी फोटो को मार्क करके कुछ भी डाल देना और उसके ऊपर डिस्कशन करना पब्लिक को पसंद आ रहा था, क्योंकि उनको कुछ माइंड को चाहिए, खाली नहीं बैठ सकता आदमी। मीडिया आ गया, चलो जी, मीडिया की भी रोजी रोटी चल रही है। तो मैं एक एग्जाम्पल दिया, देयर कुड बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस व्हाई इट वाज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, बट to be scientifically it is a simple case for us, for all of us whosoever concerned with this specialty knows about this case. Everyone understands that there is nothing in this case, right? उसके बाद हमने मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस बनाई कि आप लोग को भी अपना डोमेन समझना है, कहाँ तक आप रिपोर्ट करोगे, कहाँ तक नहीं करोगे, ये भी बना करके दिया है मिनिस्ट्री को। अभी वो भी आने वाली है, क्योंकि आप कहीं किसी आप ऑल ओवर वर्ल्ड का देखिए, इतने सारे हीनस क्राइम होते हैं, कहीं कुछ आता है मीडिया में नहीं। ये हमारा इंडिया ही है जहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे आरशी तलवार साहब का उस केस का जिक्र किया बीसी साहब ने। व्हाई इट वाज रूड, बिकॉज ऑफ दैट पुलिस पहुंची नहीं, वो पहुंचे नहीं, मीडिया वहाँ पहले ही घुस करके अपना वो दिखा रही, ये दिखा रही, और पहले इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया, जैसे लगता है उनसे बड़ा भारी कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है ही नहीं। दैट इज बिकॉज कोई कंट्रोल नहीं है, मीडिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। सो देयर somewhere one line of demarcation has to be there कि आपका डोमेन कहाँ तक है। यहाँ भी मैंने यही समझाने की कोशिश की है, कहाँ आपका डोमेन है, कहाँ तक है, आपको वहीं तक रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए जहाँ पे आप रियल रहते हो। तो जहाँ आप अपने डोमेन से बाहर रहते हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट एंड देन इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। आई होप आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन। थैंक यू। Thank you, sir. You spoke very well regarding forensic medicine and forensic science. You covered almost all the topics. Thank you very much for your nice presentation. Thank you, Professor Adarsh, for giving such an overview of forensic medicine and its role in finding or identifying the culprit. आपने 2 चीज़ कहीं जो कि मुझे गहरी हूँ करना चाहिए। एक तो आपने कहा कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और बहुत कुछ और करने की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब हम सारे भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं उस आपस में बातचीत करें, आपस में एक दूसरे से सीखें, लर्न फ्रॉम ईच अदर वाली जो हम अडॉप्ट करें, तो शायद उसमें अच्छा रहे। सो थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भीम सिंह कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर, एक NHRC गाइडलाइंस में कई नया ये वो भी आया है कि लाइव कमेंट्री इज देयर। बिकॉज मैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी एक्सपर्ट हूँ, तो उनकी सारी एडवाइजरी और लाइव कमेंट्री इज मस्ट। बस उसमें क्या किया है हमने, अभी तक क्या होता था कि हमने पिछले 15 साल में ऑल ओवर इंडिया से कस्टोडियल डेथ पुलिस इनकाउंटर के कम से कम 1000 वीडियोस देखती होंगे। पहले वीडियो आते थे, वीडियो कैसेट से हमने स्टार्ट किया था देखना, अब हम टीवी पे लगा सकते थे, VCR प्लेयर पे देखते थे, फिर चेंज हो गया, DVD आई, DVD के बाद CD आई और अब पेन ड्राइव में आता है, राइट।
होता क्या है, कितना वेरिएशन है। कोई वीडियोस देखे हमने, पूरा पोस्टमार्टम के नाम पे खाली 10 मिनट का है, राइट, 10 मिनट का है, कोई 1.5 घंटे चल रहा है। और करने वाला वीडियोग्राफी कौन होता है? पुलिस क्या करती है, आप लोग क्या करते हो? वीडियोग्राफी के लिए क्या है, आपने करवाई होगी किसी कस्टोडियल डेथ में, कैसे करते हो आप? आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, आप क्या करते हो वीडियोग्राफी के लिए? किस पर्सन को पकड़ते हो आप? एनीवन? अरे बहुत लोगों ने कराई होगी यार। यू कम अप प्लीज, शेयर करो, दिस इज एकेडमिक इंटरेक्शन। आपको पता है कि आपने क्या किया? आपने कस्टोडियल डेथ का केस था, गाइडलाइंस हैं कि वीडियोग्राफी होनी है, आपने क्या किया? कहाँ से लाया वीडियोग्राफर? सर पुलिस महकमे में वीडियोग्राफी का प्रशिक्षण दिया गया सर, पीएम की वीडियोग्राफी किस तरीके से की जाती है। ये अभी रिसेंटली हुआ, वैसे पहले कैसे करते थे? सर ये 2014 में हुआ। 2014 के बाद तो गाइडलाइंस ही सारी बदल दी मैंने। 2014 के पहले भी अगर किया होगा तो आई एम टेलिंग यू, यस देयर आर सर्टेन एडवांसमेंट, यही लर्निंग प्रोसेस। बैठ जाइए। यूजुअली क्या होता था कि पुलिस गई मार्केट में, जो भी वीडियोग्राफर शादी वाला है, जो शादी वाले ही होते थे, उसको पकड़ करके ले आए। अब उस बेचारे की मजबूरी है, मना कर नहीं सकता, वीडियोग्राफी होनी है। अब होता क्या था, पोस्टमार्टम चल रहा है, वहाँ टेबल पे वीडियोग्राफर यहाँ गेट पे खड़ा हुआ है और यहाँ से वो घुमा रहा है, और वीडियोग्राफर है, उसको शादी की अटेंड करने की आदत है, वो कहाँ पे फोकस करता है? केवल चेहरे पे, राइट। हमारा पर्पस है कि इंजरी को फोकस करे और इंजरी दिखाए, लेकिन इतनी सारी वीडियोस देखी, उसमें 80% वीडियोस में खाली चेहरे पे चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, बाकी बॉडी में इंजरीज है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ और वीडियोग्राफी में दिख नहीं रहा है। ऑल दीज थिंग्स, तो इसने एनालिसिस करने के बाद में चेंज किया। फिर जैसे डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था, धीरे धीरे हुआ कि ठीक है चलो वीडियोग्राफर ये हो गया, कई जगह पुलिस वाला आ गया, गाइडलाइंस बनाई कि आपको इतना लेना है, वीडियोग्राफी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी लीजिए आप, फ्रंट की और बैक की, और मिनिमम 40 फोटोग्राफ्स, लैटरल प्रोफाइल और ऑल, कि हमारा आइडिया है कि हमें इंजरी देखनी है कि है कि नहीं है, और है तो फर्दर उसकी क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है। उसके बाद हमने वीडियोस देखने शुरू किए, बिल्कुल पुरानी 1940 की मूवी की तरह से, वहाँ कोई आवाज़ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। अब वो चल रहा है, डॉक्टर क्या बताना चाह रहा है, कोई वॉइस नहीं है, नथिंग इज देयर। सो नाउ अगेन इट इज सब्जेक्टिव कि वो रिपोर्ट जो लिखी हुई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे वही है, बट आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है, बट द डॉक्टर इज नॉट। तो उसी के लिए उसके बाद में गाइडलाइंस दिया, इट इज बेटर जो डॉक्टर, क्योंकि इसमें एक डॉक्टर भी नहीं है, there is a minimum 3 doctors should conduct the autopsy in all custodial death cases और police encounter cases। NHRC में जो गाइडलाइंस है 3 डॉक्टर होने चाहिए, तो 3 डॉक्टर में तीनों लोगों का रोल है, राइट। सो उसमें क्या है कि हमने ये भी बोला है कि उसमें जो लीड डॉक्टर है, आइडियली वो सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम ऑफ द वीडियो शुड बी कि जिसमें SDM होती है इंक्वेस्ट, राइट, या मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है, पुलिस इंक्वेस्ट नहीं होती, राइट, दिस इज अनदर। तो वो जब इंक्वेस्ट पेपर्स हैंड ओवर कर रहा है डॉक्टर को, वहाँ से पहला फ्रेम वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और उसके बाद में जब डॉक्टर के पास आ जाएगा, then doctor will introduce himself that I am so and so, working so and so, and these are 2 of my other colleagues, member of the board, who are going to conduct the autopsy on the body of deceased so and so, so and so, right? So that becomes authentic, and then the crime chain, whole everything, all the evidences can be correlated. Otherwise उसके अंदर अगर डॉक्टर का चेहरा ही नहीं दिख रहा है, खाली मरने वाले का ही दिख रहा है, बाद में कहे कि ये तो डॉक्टर साहब वहाँ थे ही नहीं, करने वाले तो कोई और थे, hundreds of queries I tell you। तो जैसे जैसे हम देखते हैं वैसे वैसे एडवाइस करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई कैसे कैसे हम अपना सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दैट वाज द जेनेसिस कि हमने बोला कि यस इट इज बेटर कि आप बोलें, आप बोलें कि हाँ भाई ये इंजरी, ये एब्रेजन 5 into 6 सेंटीमीटर, आप वही लिख रहे हो तो आप बोल भी रहे हो, वेयर इज द प्रॉब्लम, इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एवरीवन। अब वो रिव्यू में जाएगा, जज देखेगा, डिफेंस कोई भी देखे, उसके लिए सीधे सीधे क्लियर है कि चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि जो डॉक्टर देख रहा हो वही लिख रहा है और वही बोल रहा है। इसके लिए वो एडवाइस किया है कि आप लोग करो, लेकिन बड़े सारे लोग उससे जो है वो एग्री नहीं करते, दैट इज सेपरेट इशू। सो इट इज एडवाइजरी टू इम्प्रूव द सिस्टम। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉलो करना, दैट इज अगेन मैटर ऑफ विल ऑफ द गवर्नमेंट एंड विल ऑफ द एजेंसीज, कंसर्न एजेंसीज। 2-4 केस ऐसे आएंगे तो फिर हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस स्टेट के कॉल करेंगे
हमारे पास प्रोविजंस हैं, उसकी हम पेशी लगा देंगे NAAC में कि भैया आपकी स्टेट में ये चल रहा है और आपको एडवाइजरी दी गई है, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? सो वी हैव गॉट द मीन्स टू इम्प्लीमेंट इट। धीरे धीरे इस साल में, 2 साल में, 5 साल में, when we are committed to improve the system, it will happen sooner or later. So that was the genesis कि हमने बोला है कि yes, I really should do it. हमने खत्म कर दिया कि only question answer हो रहा है। मैंने मेरा लेक्चर 15 मिनट पहले खत्म कर जी। branch called forensic photography or videography? Yes, forensic स्पेसिफिक ब्रांच नहीं है, बट फोरेंसिक फोटोग्राफी के स्पेसिफिक मॉड्यूल्स हैं कि जिसमें हम फर्दर ट्रेन करते हैं कि कैसे करनी है, स्पेशली पुलिस पर्सन्स को। एंड डॉक्टर हर्ष इज देयर टू हेल्प। यस, और ये कर रहे हैं कि कैसे करनी है। Actually, initially when I joined forensic lab, those days there was a division of forensic photography. And because the DNA facility or DNA was not known to the scientists, so regarding the identification, at times when we were getting the skull at the scene of crime, the forensic photographer, he used to do the superimposition work. Now as the DNA is there, there is no use of any superimposition. But any scientist who is doing job in the forensic lab, and if at all he is doing the work of this crime scene investigation, how the photograph, as Dr. Adarsh said, if at all you are taking photograph from another angle, the size of the wound, that would be different. So how to take the photograph, and every time the scale photograph, that is a must. So we are taking the forensic. एक्चुअली मैं थोड़ा सा उसको इलेबरेट करूंगा, जो डॉक्टर साहब थोड़ा सा इलेबरेट करूंगा। वी आर टॉकिंग अबाउट द NAAC गाइडलाइंस। मैं थोड़ी और आपको ज्ञान देता हूँ कैसे हमने सोचा है, कैसे एडवोकेट किया। एक हमने ये बोला है कि पूरे इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स की, फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए। 2012 में एडवाइजरी DGHS के थ्रू जारी करवाई थी। आज की डेट में बहुत सारी स्टेट्स ने अडॉप्ट कर लिया है। यूपी स्टेट थोड़ा पीछे चल रही थी, बट अभी 2 साल से थोड़ा उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया। नाउ द होल आइडिया ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दिया मैंने पहले, तो ये होगा प्लस साथ में ही शुड बी अ रियल फोरेंसिक एक्सपर्ट, रियल फोरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट। खाली डिग्री नाम के लिए नहीं, रियल होना चाहिए। और उसी में he will be the in charge of the forensic photography as well. उसका जो ट्रेनिंग होगी, MD की ट्रेनिंग, उसके अंदर फोटोग्राफी का भी एक मॉड्यूल आएगा, बिकॉज वहाँ पे 3 लोग हैं बोर्ड में, राइट? और वो जो है आइडिया ये है कि इज द डिस्ट्रिक्ट मेडिको लीगल एक्सपर्ट। तो इनवेरिएबली किसी भी डिस्ट्रिक्ट में होगा तो चेयरमैन वही फोरेंसिक वाला रहेगा, और 2 डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ कौन कौन है वो रहेंगे। तो ये उसका रोल है। वन ही इज ट्रेन्ड, देन ही नोज हाउ टू हैव इट, that becomes easy. ये एड ऑन था जो कि अभी अंडर द खाली पेपर्स पे है, अभी सरफेस पे नहीं आया है, बट उसकी बेसिक रिकमेंडेशन में डाला हुआ है। सर ये जो आपकी गाइडलाइंस हैं, हकीकत में बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि मेरा जो लास्ट पीजी है, he is a medical legal expert of Ghaziabad district and he is made to work as a resident in the Ghaziabad hospital. This is the truth. Yes. That's the again it's the failure of the state government कि सब कुछ करने के बावजूद the person who are supposed to do that particular work he is not given that. अब आपको क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ट्रेन कर दिया और आपको जो लॉ एंड ऑर्डर में लगा दिया, सिस्टम फेल हो गया ना। ये भी किया हमने दिल्ली में, होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन यूनिट अलग किया, उनके आईओएस को भी उसको स्पेसिफिकली ट्रेन किया, लेकिन ट्रेन हो गया 2-3 साल बाद में कहने लगे वो तो उनको ट्रैफिक पुलिस में भेज दिया है कहीं और भेज दिया। That's the system how it is works. So there is no answers or no remedies for that. Ideally, the person who has been delegated for a particular task, he should be given that task only. तभी quality improve होगी, तभी work improve होगी. Otherwise, we are master of all that of Thank you. If we have any more questions that we can discuss during lunch time and other times. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this wonderful delivery of the talk. Now there is an announcement. The next session will be at 12:20.
after 15 minutes break. Please, thank you. Welcome once again to all. Moving forward to our previous session, the next lecture we are having renowned person, the speaker of this topic, that is Dr. Harsh Sharma, OST Academics, National Forensic Sciences University, Bhopal. He is going to deliver his talk over a silence witness speaks loudest at the crime scene. I am requesting for the chairing this session, Dr. Vivekanand, Assistant Director, State Forensic Science Laboratory, Himachal Pradesh, and Professor Dr. Virendra Kumar Chokar, Head, Drama Medical College, Nagpur. Both of us are with us for the chairing the session. Now, I would like to request our speaker, Dr. Harsh Sharma sir. Sir, please come over the stage and give a talk. Very good afternoon to all of you. So we are starting with the second session. A silent witness speaks loudest at the crime scene. So we have Dr. Harsh Sharma, who is the Academics National Forensic Science University, Bhopal. Dr. Harsh Sharma is the retired Director of State Forensic Science Laboratory, Madhya Pradesh, with over 38 years of experience in the field of forensic science and criminal investigation. He has been honored with the DFS Meritorious Award 2005 in Crime Scene Management, 7th Academic Brilliance Award 2019, and Dr. B.R. Sharma Memorial Lifetime Achievement Award 2020. He is also the recipient of fellowship awarded by IIMLE and presently working as a Vice President for the same. He has delivered numerous talks at national and international platforms. He was also associated with the Indian Society of Toxicology and International Forensic Science Association, UK. During his excellent service, he has also inspected almost 4,000 various types of crime scenes with 100% efficiency in solving of rape cases within 48 hours. He was also appointed as examiner of the Indian Police Service IPS in 2013 and 14. So we are looking forward for a very, very enriching talk from Dr. Sharma with his vast experience. So thank you, sir, for being here. Thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers and regarding introduction of forensic science, Vice Chancellor sir and Dr. Adarsh, they spoke a lot. I suppose I see national audience, they are from the police, and I would like to speak in Hindi, that would be better, I suppose. ठीक है कि नहीं? हिंदी में बात करूं? देखिए, विधि विज्ञान या न्यायिक विज्ञान या फोरेंसिक साइंस की जब बात आती है तो फोरेंसिक क्या होता है, डॉक्टर आदर्श ने बहुत अच्छी तरीके से बताया, बल्कि कहाँ से शुरुआत हुई है फोरम की वो जगह भी बताई आपको, उसका पिक्चर भी दिखता है। मैं आपको भी विशेष तौर से बताना चाहूँगा कि विज्ञान की वो सभी विधाएं जो न्याय के लिए उपयोगी हैं उसको हम विधि विज्ञान या न्यायिक विज्ञान या फोरेंसिक साइंस कहते हैं।
application of various sciences which is helpful to law is forensic science. This includes pure established principles of the physics, chemistry, botany, zoology, medical science, etc. etc. पिछले कुछ सालों में recent past years के अंदर subject of art that is psychology was added in forensic science. जैसा आप सभी जानते हैं साइकोलॉजी जो है it is a subject of arts, it is not pure science. इसलिए कोई भी न्यायालय, माननीय न्यायालय साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स के ऊपर कोई भी जजमेंट पास नहीं करता. Let me be polygraph, narco analysis, bios, etc. On the contrary, a single evidence of DNA that is enough for death penalty or acquittal. तो विधि विज्ञान में जब पहले बात आती है, सबसे पहली बात आती है, वो है फिजिकल एविडेंस. जब मैंने 82 में अर्ली 80s में ज्वाइन किया, उस समय लोग ठीक से फॉरेंसिक साइंस को प्रोनाउंस भी नहीं कर पाते. कोई बोलता था फोरेंसिक, कोई बोलता था फोरेंसिक्स. मुझसे लोग पूछते थे यार क्या पढ़ रहे हो, कुछ तो समझ ही नहीं आता है, कहाँ नौकरी मिलेगी, क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उस समय then Vice Chancellor of Sagar University, he was also head of the Department of Forensic Sciences, Professor Dr. D.B. Gata. वो एक सेमिनार में बोल रहे थे कि उपनिषद में एक जगह साइट किया गया है किसी उपनिषद में कि श्वेत केतु से उसके गुरुजी पूछते हैं कि ये बरगद का जो फल है इसको फोड़ के देखो कुछ दिखता है. तो कहते हैं सर कुछ नहीं दिखता, बहुत महीन महीन सा कुछ दिखता है. तो बोलते हैं ये जो महीन बीज है ना, जब ये जर्मिनेट होगा तो इतना बड़ा वटवृक्ष बनेगा. और आज उनकी बात मुझे सच दिखती है. हिंदुस्तान के अंदर कितनी फॉरेंसिक की यूनिवर्सिटीज आ गई. टीवी के ऊपर जब भी कोई सस्पिशियस डेथ या कोई भी मिस्टीरियस चीज दिखाई जाती है और उसमें जब एंकर बोलता है कि अब फॉरेंसिक जांच शुरू हो गई है, तो मासेस के अंदर एक मैसेज जाता है कि अब सच्चाई सामने है. क्योंकि वैज्ञानिक अन्वेषण शुरू हो गया. पहले जब मैंने ज्वाइन किया था, कोई भी क्राइम हो जाए बड़े से बड़ा, एसपी क्या करता था, एसपी का पीआरओ न्यूज बनाता था. उस न्यूज को साइक्लोस्टाइल किया जाता था. और साइक्लोस्टाइल क्योंकि फोटोकॉपी होता नहीं, तो एक राइटर पुलिस का जो भी सिपाही है वो प्रेस कॉम्प्लेक्स में जाके वो एक एक कॉपी सबको देते. तो उसमें अमूमन एसपी साहब की तारीफ होती थी, तो फलाने के मार्गदर्शन में इनने उनने किसी ने ज्यादा अच्छा काम किया है तो उसका नाम इनका विशेष होता था. वही न्यूज मासेस में जाती थी, पब्लिक में वही न्यूज जाती थी. हेडिंग चेंज होती थी, हेडिंग कई लोग अच्छी क्लींचिंग रखते थे, लेकिन न्यूज वही. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिल्ली दूरदर्शन के अलावा कुछ चलता नहीं. With the changing scenario, आज के परिप्रेक्ष्य में, you might have seen कि पुलिस पहले बाद में पहुंचती है, मीडिया वाले पहले और बुरा बना के दिखाते हैं, ये देखिए खून पड़ा हुआ है, ये देखिए खून पड़ा, इसमें डीएनए हो जाएगा, इसमें एनए हो जाएगा, इसमें नार्को हो जाएगा. एक आध बार मैंने बुलाया भी, मैंने कहा भैया ये एनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है. अरे सर हमें क्या पता है, चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं. शाम को जो है पहले ब्रेकिंग न्यूज चलता है, शाम को कुछ रिटायर्ड लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं
or at times they are delivering judgments also. जब इसमें तो फांसी पक्का है हो ही जाए, if at all, the judgment is not that. पुलिस पैसा खा गई, ऑटोप्सी के लिए डॉक्टर आदर्श के पास गई थी बॉडी, इन्हें हिसाब किताब कर लिया, तो आजकल जो भी है डिसीजन इसी तरीके से मासेस के मन में एक चीज बन जाती है, मीडिया ऐसा फैला देता है। डॉक्टर साहब ने, आपने शायद किसी ने क्वेश्चन किया था, डॉक्टर साहब ने कहा वो सब जो है मीडिया की बनाई हुई कहानी। तो जब मैं पहले कभी कोर्ट जाता था शुरू में, तो मैं देखता था कि रेप केस में भी वही आई विटनेस है, चोरी में भी वही है। तो समझ में आया कि ये सब प्रोफेशनल विटनेस होते हैं, पैसा लेके काम करते हैं। क्योंकि जब क्राइम सीन पे काम करना शुरू किया, ये तो हम भी आप भी देखते होंगे कि रोड साइड पे अगर कोई ब्लड वीपन का केस है या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया तो भीड़ खूब इकट्ठी हो जाती है, और भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस वाला कहता आ जाना भैया 4 जने दस्तखत कर देना गवाही में, तो हो गया। कोई इन्वॉल्व होना नहीं चाहता अनटिल अनलेस उसके घर का परिवार का कोई आदमी हो या उसका कोई फ्रेंड, और अदरवाइज कोई कोर्ट के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। यहाँ पर स्टेटमेंट किया फॉरेंसिक साइंस। In my opinion, science is nothing but it is organized common sense. किसी भी चीज को तार्किक तरीके से देखना ही विज्ञान। मैंने बहुत सारे डिग्री डिप्लोमा इन्होंने पढ़े नहीं या पढ़वाए नहीं, बहुत सारा कुछ किया, उसका कोई मतलब समझ में नहीं आया। क्योंकि विज्ञान देखिए, आप लोग खासतौर से मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे साहब ने साइंस पढ़ी, लेकिन साइंस को बगैर पढ़ा लिखा आदमी भी एनकाउंटर करता है। पत्थर हवा में फेंकिए नीचे गिरता है, पर कठिन से एक बार फेंकिए, लाख बार फेंकिए, यहाँ फेंकिए, इंग्लैंड में फेंकिए, अमेरिका में फेंकिए, गिरता है। एक बार भी अगर बीच में हवा में लटक गया हो तो वो साइंस नहीं है। सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम को डूबता है, देहाती बच्चा भी जानता है। जिसने साइंस पढ़ी है वो कहेगा कि अर्थ रोटेट्स ऑन द एक्सिस, अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिससे चीजें ऊपर से नीचे आती हैं। तो किसी भी चीज को तार्किक तरीके से देखना ही विज्ञान है। नंगे तार को जिसमें करंट हो, हाथ लगाओगे करंट लगेगा, ये सब जानते हैं। तो जैसा आपको मैंने बताया कि पहले ऑनरेबल कोर्ट्स दे वर डिलीवरिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन विटनेसेस, इन्हें ह्यूमन विटनेसेस को रिप्लेस किया फिजिकल एविडेंसेस ने। फिजिकल एविडेंस अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे हेयर, फाइबर, ब्लड, सीमेन, एक्सेट्रा। तो फिजिकल एविडेंस वो होता है जिसका कोई शेप होता है, साइज होता है, कलर होता है, और जो क्राइम सीन पे मिलता है। ये मिलता ऐसे है, there was a French scientist, the name was E. Locard, he gave a theory whenever there is a contact, there is a trace. दो चीजें जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, पहले दूसरे के ऊपर, दूसरी पहले के ऊपर अपना कोई साक्ष्य होता है। For example, I am touching the dust over this what you call, so that would within my fingers और मेरे फिंगरप्रिंट्स जो है वो इसके ऊपर। In the similar way, in all the cases, चीजों का, साक्ष्यों का आदान प्रदान होता है, और वही चीज जो है जब हम किसी क्राइम सीन पे जाते हैं, उन्हीं साइलेंट विटनेसेस को हम इकट्ठा करते हैं। जिसके पास साइंटिफिक बैकग्राउंड है उसका इंपॉर्टेंट काम ये होता है टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल एविडेंस फाउंड इन द सीन ऑफ क्राइम। मेरी प्रेजेंस यहाँ अगर शो करनी है, मैं चला जाता हूँ, तो जहां जहां कॉन्टेक्ट है वहां एविडेंस है। मेरे फिंगरप्रिंट इस पे मिलेंगे, मेरे जूतों के निशान मिलेंगे, मेरे शर्ट का कोई फाइबर इस पे लग गया होगा, यहाँ की डस्ट मेरे
जहाँ भी कॉन्टैक्ट होगा। रोड एक्सीडेंट में एक गाड़ी दूसरे से टकराई, पहली गाड़ी का पेट दूसरी पे, दूसरी का पहली पे। सिमिलरली इन रेप केसेस, मर्डर्स एंड ऑल, ये फिजिकल एविडेंस को प्रॉपर कलेक्शन किया जाता है और फॉरेंसिक लेबोरेटरीज जांच के लिए भेजा जाता है। और सारी फॉरेंसिक लेबोरेटरीज, नॉट इन इंडिया, थ्रूआउट द वर्ल्ड, दे आर जस्ट डूइंग द कंपैरिजन, मिलान का काम करते हैं। एंड द लाइक मस्ट आर मैच्ड। उंगली के निशान पैर के निशान से मैच नहीं होते, उंगली के निशान उंगली के निशान से मैच होंगे। इसका डीएनए प्रोफाइल उसके डीएनए प्रोफाइल सेम है कि नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप इस ब्लड ग्रुप से सेम है कि नहीं है, ये हेयर इस हेयर से सेम है कि नहीं, व्हाटएवर। The entire world forensic laboratories, they are just doing the comparison. इसमें एक बात जो डॉक्टर आदर्श भी कह रहे थे, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज इस दुनिया में आई है वो अपने आप में अनोखी है, उस जैसा कुछ भी नहीं है। Whatever has come to this earth is unique of its own. मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डॉक्टर आदर्श ने बात करी कि मदर एक है, फादर एक, उनका डीएनए प्रोफाइल भी है, लेकिन ईश्वर ने वहां भी जो है उंगलियों के निशान डिफरेंट कर दी। इस पर मैं एक शेर कहता हूं कि जहां पे ना किसी की नसीब न मिसाल, जो भी आया है मिसाल, हर चीज अपने आप में होती है और इसी बात को। तो बात फिजिकल एविडेंस की मैंने की। Now I will be talking regarding birth and death. Regarding birth, only two questions. A pregnant lady goes to the hospital. Friends and relatives, they are waiting outside. The moment door opens, कोई नर्स या डॉक्टर जब बाहर आता है तो रिश्तेदार और दोस्त पूछते हैं क्या हुआ था, only one question. The answer could be baby boy or baby girl. Immediately the second question is fired, whether the mother and child are okay or not. जच्चा, हमारे बुंदेलखंडी में बोलते हैं जच्चा बच्चा अच्छे नहीं। If the answer both are fine, no questions. कहानी खत्म। On the contrary, ठीक इसका विपरीत, whenever there is a death, death is of two types. One is a natural death and the other is unnatural death. In natural death, a person aging 85 years goes to the hospital with multiple complications like cardiac problem, blood pressure, diabetes, etc. etc. In between hospitalization, he or she was on ventilator, later came to the ward. One fine day, a news comes that he or she is no more. वो नहीं रहे या नहीं रहे। अरे कैसे नहीं रहे? कल तो मैं गया था तो देखा तो दलिया खा रहे थे। तो कहता है 15 मिनट पहले मेरी बात हुई थी, कैसे मर गए? This is I am talking about the natural death. If at all the death is unnatural, you might have seen in Arushi case, every चाय की दुकान, पान की दुकान, everybody was investigator. अरे बाप कैसे मार सकता है? किसी ने मारा होगा, ये होगा वो। If at all the investigation is proper and transparent, then there are no queries, no questions. Now, one more thing, कि मुर्दा सच बोलता है, जिंदा आदमी झूठ बोलता है। सही है कि नहीं? आप लोगों ने पूछना पूरे बोला। अरे जो जिंदा है उसके रिजर्वेशन हैं, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा भाई है, ये पिताजी है, ये माता जी है। जब तक जिंदा है तो बहुत सारे रिजर्वेशन है, और जब वो मर गया ना उसका कोई भाई, ना प्रेमी, ना प्रेमिका, उसको जो बोलना है सच बोलना। लेकिन सच किसको बोलेगा? सच उसको बोलेगा कि उसके पास जाए। मान लीजिए आप में से कोई एक आई हो गए किसी केस में गए, डिकम्पोज बॉडी है, बदबू आ रही है लाश में से, दूर खड़े हुए मुंह पर रुमाल लगा के नक्शा पंचायतनामा बना रहे हैं, आपको किसका पता है? एक तो बोल नहीं सकता होता, अगर बोल सकता होता तो वो ये बोलेगा कि एक नीच वो जिसने मुझे मार दिया, उससे बड़ा नीच ये जो कल मेरा 10-15 फीट दूर से खड़ा हुआ मेरी तफ्तीश कर रहा है।
अब देखिए, मुर्दा उन्हीं से बोलता है जो मुर्दे की भाषा पढ़ना जानते हैं। जब पास जाते हैं आप तो देखते हैं कि एक आदमी पूल ऑफ ब्लड में पड़ा होता है, खून चारों तरफ है, डॉर्सली पड़ा है, पीठ के बल पड़ा हुआ है, सामने देखते हैं कोई घाव नहीं है, कोई खून के निशान नहीं है, पलट के देखते हैं तो बहुत सारे घाव निशान होते हैं। बारीकी से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि दो तरीके के चाकू इस्तेमाल है। एक चाकू जो दो धार वाला है, उदाहरण के लिए कागज में दो तरफ एक चीज में होती है, उस चाकू से क्लिक करिए तो दोनों एजेस शार्प दिखेंगे। और जो एक धार वाला होगा उसमें एक तरफ शार्प होगा, एक तरफ ब्लैक होगा। तो मोटा कह रहा है कि जबरदस्त पीछे से मारा, दो लोगों ने मारा, हाथ को पकड़ के यूं करते हैं, तगड़ा हो गया, कहता मुर्दा कह रहा है कि देखो राइडर आ गया, 6 से 8 घंटे हो गए, 6 से 8 घंटे पहले मारा। फिर देखते हैं तो जूतों में खून भरा हुआ है। मुर्दा कह रहा है कि चाकू लगते ही में गिर नहीं गया था, अगर गिर गया होता तो जूते के अंदर खून नहीं आता, क्योंकि ब्लड तभी ट्रिकल होके जूते के अंदर भरेगा जब खड़ा होगा आदमी और ग्रेविटेशन से खून भरा। तो मेरा ये मानना है कि मैंने जो भी कुछ पढ़ाई लिखाई करी हो तो ठीक है, केवल लॉजिक के साथ में जब भी आप क्राइम सीन पे जाओगे, मैं हमेशा कहता हूं कि देखते आप भी हो, देखता मैं भी हूं, बस निगाह का फर्क है। और अपने आप को जिस दिन ग्रूम कर लोगे आप, ये बात हकीकत है, मैंने 4,500-5 हज़ार केसेस देखे, मुझसे 2 मर्डर छूटे बस, और उसमें से एक तो मैंने गाड़ी में आते ही ड्राइवर से कह दिया था ये नहीं पकड़ा जाएगा, सर आज तक आपने ऐसा नहीं करा, उसके पीछे रीजन। रेप केस मुझसे आज तक कोई नहीं छूटा। छूटे की बात छोड़ दीजिए, मैं पूरा मॉनिटरिंग करता था, सैंपलिंग साथ में करवाता था, उसका ड्राफ्ट सामने तैयार करवाता था। एक भी रेप केस जो मैंने देखे हैं अपने पूरे सर्विस पीरियड में, एक में भी आरोपी छूटा नहीं। मिनिमम पनिशमेंट दैट वाज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड मैक्सिमम दैट वाज डेथ सेंटेंस। 2000 आपने मेरे साइटेशन में ये बात नहीं कही कि 2018 में मैंने 18 डेथ पेनल्टीज कराई है, जो लिखता होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसमें my DNA team that was really instrumental. मोदी जी ने गुजरात फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में ये बात को भी हाईलाइट किया था। तो लॉजिक से जब भी आप काम करेंगे, कोई भी काम करें, अपने ऑब्जर्वेशंस हमेशा बढ़ा के रखिए। मैं थोड़ी देर में बहुत सारी चीजें देखने की आदत हो गई मुझे। अब एक केस से शुरू करते हैं। ये जो मैंने आपसे बात की, तो अरेला कॉलोनी E1 में एक चोरी की घटना हुई। उस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का लड़का बहू वहां रहते थे। बहुत पुराना केस है। तो था ये कि ये लोग पति पत्नी और बच्चा जो है बाहर गए हुए थे रात में, सुबह आके देखते हैं तो इनके घर का ताला जो है चोरों ने किसी लोहा काटने की आरी से काट दिया और 2-2.5 लाख रुपए ले गए। कंप्यूटर उस समय एसेट्स में माने जाते थे कि इसके बाद बंगला है, गाड़ी है, कंप्यूटर है, कुछ टेप रिकॉर्डर, कुछ ज्वेलरी, ये सब सामान चोरी हुआ। Then इसकी literally became the DG. He called me, डॉक्टर साहब ये चोरी का केस आप देखो। मैंने कहा सर आपको पता है मैं कहाँ जाता हूँ चोरी के केसेस देख। मुझे नहीं मालूम है आप बॉडी ऑफिसर देखते हो, लेकिन इनके पिछले बार भी चोरी हुई थी, चोरी बड़ी है, आप जाकर देखो। तो आई अलॉन्ग विद दी डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एंड फोटोग्राफर, पुलिस फोटोग्राफर, वी हैड बीन टू द प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स। वहाँ जो है मेन एंट्री जो थी वो मेन डोर से हुई थी। चोरों ने वो ताला काटा था, वहीं से अंदर गए थे, वहीं से बाहर आए।
भीड़ भाड़ भी बहुत थी। मैंने गेट के पास ये फर्श के ऊपर ताला पड़ा हुआ था, कटा हुआ, तो वो देखा, फिर आके गाड़ी में बैठ गया। रेस्ट ऑफ द टीम अंदर गई, वो डस्टिंग वस्टिंग करने लगे, फिंगरप्रिंट वगैरह डेवलप करने लगे, व्हाटएवर। देन एसीपी केम टू मी, तो सर आप देख नहीं रहे हैं? मैंने यार नहीं देखना, मुझे क्या देखना है? आप में से कोई बताइए कि ये ताला देख के मैंने क्राइम सीन पे अंदर क्यों नहीं गया? खुलने के बाद क्या खुला हुआ ताला लगा है? खुलने की बात क्या, बात की क्या बात है? देखिए, अगर ये ताला लगा हुआ होता, ये पोर्शन इसके अंदर होना चाहिए था, लेवर्स के बीच में होना चाहिए था ये पीस, ठीक है ना? और इसकी कटिंग देखिए तो ट्रांसपर्स है, इट इज नॉट इंक्लाइंड। ऐसा लगता है कि इसे टेबल पे रख के आरी से काटा है, और ताला खुला था तो काटने की क्या जरूरत थी? पता ये चला कि इनके बहनोई जो है, वो ब्रदर ही वॉज इन इंश्योरेंस कंपनी में सर्वेयर थे, हर साल जो है झूठी चोरी बता के ये पैसा लेते। वो भी शर्मा जी थे, कई बार शादियों में मिल जाते थे तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के भागने लगते थे मुझे देखते। ये 2 यंग लेडीज की डेड बॉडी कुआर के खेत में मिली, तो ये लाइट अगर बंद कर सकते तो ज्यादा बेहतर। तो मैं जब गया, ये ज्यादा पुराना केस नहीं, मैं गया तो यहाँ पर आप देखिए कोई वायर वगैरह कुछ भी नहीं, नीचे भी वायर वगैरह देखने की कोशिश की तो वो भी कुछ नहीं था। ऑन द कॉन्ट्री, जो इस दोनों लेडीज के कपड़ों में क्रम्पलिंग इफेक्ट था, सिंथेटिक साड़ी थी सलवार, और इनके पैर के ऊपर और 1-2 जगह इलेक्ट्रिकुशन के मार्क। डॉक्टर आदर्श मेरे ख्याल से सपोर्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रिकुशन से डेथ का केस है। तो ये जब देखा तो यहाँ कहीं कुछ भी नहीं था बिजली का। फिर मैंने ये खेत के आगे गया, जब बहुत आगे गया, बारिश का टाइम था, तो मक्का का खेत था। मक्का के खेत के चारों तरफ जो है फॉरवर्ड वायर की फेंसिंग थी। तो पूछा भाई इनने फॉरवर्ड वायर की फेंसिंग क्यों कराई हुई है? तो पता ये चला कि ये बारिश के टाइम पे जंगली सुअर बहुत आते हैं, दिन में आते हैं तो हम फायर वायर करके आवाज़ से भाग जाते हैं, लेकिन रात में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो बहुत डैमेज करते हैं क्रॉप को। तो क्या करते हैं कि ये फॉरवर्ड वायर में करंट छोड़ देते हैं। करंट आप जानते हैं कि गांव में जो करंट आता है उसका वोल्टेज बड़ा स्टेबलाइज तो आता नहीं है कि 220 वोल्ट हो, कई बार 400 चला जाता है, कभी 100 रह जाता है, तो ऐसा वेरिएशन रहा होगा। ये दोनों लड़कियां जो है, जैसे पब्लिक सोच रही थी कि यंग लड़कियां थी तो इनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है और मारा गया है। तो हुआ ये पता ये चला कि ये जो है गणेश जी की झांकी देखने के लिए शॉर्टकट के चक्कर में वो फॉरवर्ड वायर की फेंसिंग क्रॉस कर रही थी, और उसमें दिस इलेक्ट्रिकुशन और उससे डेथ कॉज हो गया। अब जो खेत का मालिक था, हफ्ते वाला, उसको लगा था हम फंसेंगे, तो दोनों बॉडीज को उन्होंने ये खेत में डाल दिया। तार के ऊपर हमको फाइबर्स भी मिल गए थे जहाँ इलेक्ट्रिकुशन हुआ था। तो इसमें कौन से बड़े साइंटिस्ट की जरूरत है? लॉजिक चाहिए ना आपको। खेत में डेड बॉडी है, इलेक्ट्रिकुशन के मार्क दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तो बिजली का कुछ है ही नहीं, कहाँ है? तो आसपास देखा तो नहीं गया। इसमें मेरी डिग्री और डिप्लोमा इन सब की कहाँ जरूरत है? वो ताले में डिग्री डिप्लोमा की कहाँ जरूरत है? आपने से बता दिया ना किसी ने, फिर खुला हुआ ताला है। एक केस में जब मैं रोड एक्सीडेंट का केस था, रोड एक्सीडेंट में वो केस रजिस्टर हुआ, ट्रक और स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ था। जब ऐसे ही एसपी जबरदस्ती मुझे पकड़ के ले गए थे तो मैं मना किया था कि एक्सीडेंट में नहीं देखता, अगर एक्सीडेंट देखूँगा तो पूरे शहर में दिन भर एक्सीडेंट ही देखता रहूँगा। बोले नहीं यहाँ चलिए सर। और हिंदू मुस्लिम का मामला था, जो मरा था मुस्लिम था और चला रहा था ट्रक वो हिंदू था। जब क्राइम सीन देखा तो आई वॉज ऑफ दिस ओपिनियन इट इज अ डेलिब्रेट किलिंग
किसी ने जानबूझ के इसको मारा है, क्योंकि उसमें जो ट्रक केस के मार्क्स था, चलो वो लंबा वाला केस है, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है इतना मुझे बोलने देने का, तो रहने देते हैं। बात ये है कि जब इसमें क्रॉस हुआ, तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तो इसमें चूंकि जो ट्रक चला रहा था बहुत पैसे वाला था, रियल एस्टेट का आदमी था, तो उसने डिफेंस काउंसिल में सब माने हुए वकील हाई कोर्ट के यहाँ वहाँ के बुलाए। तो जब मुझे क्रॉस कर रहे थे, क्योंकि इनिशियली वो रोड एक्सीडेंट में केस रजिस्टर हुआ था, बाद में मेरे कहने के ऊपर एसपी ने उसको 302 में कन्वर्ट कर रहा है। फिर क्रॉस करते समय उन्होंने मुझसे पूछा एक डिफेंस काउंसिल ने, फिर साहब आपने खून देखा? मैंने कहा देखा। आपने देखा, रास्ते चलते आदमी ने देखा, स्वीपर ने देखा, क्या फर्क है? एक्चुअली डिफेंस काउंसिल हमेशा कोशिश करता है कि आपको ह्यूमिलेट करे, जिससे आप ऊटपटांग बात करो। खैर वो केस तो निपट गया। उसमें जज ने करीब मेरे बारे में एक पैराग्राफ लिखा और उसमें ट्रक को वीपन ऑफ ऑफेंस मान के राजसाफ करने के ऑर्डर हुए और जो आदमी ट्रक से जिसने मारा था उसको आजीवन कारावास हुआ। तो उस दिन के बाद से मुझे लगा ये बात ठीक है, तो डिफेंस काउंसिल कह रहा है कि रास्ते चलते आदमी ने खून देखा, आपने देखा, किसी ने देखा, क्या फर्क है? लाल रंग का होता है, घटनास्थल पर पड़ा होता है। हमने अपने जो भी जस्टिफिकेशन थे उस समय दिए कि हमारे पास टेस्ट करने के लिए, प्रिलिमिनरी टेस्ट करने के लिए किट होता है, ये फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स उसके बाद से मैंने जितने भी ब्लड वाले केसेस देखे उनको ठीक से ऑब्जर्व करना शुरू किया। देखिए ब्लड दो तरीके का होता है, एक होता है एंटीमॉर्टम ब्लड, एक होता है पोस्टमार्टम ब्लड। एंटीमॉर्टम ब्लड में प्रॉपर्टी होती है कोएगुलेशन की, हमको लग जाता है, खून निकलता है, खट्टा जमता है, पपड़ी बन जाती है, हम नाखून से निकालते हैं। वो किस कारण से होता है? जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं वो समझते होंगे कि फाइब्रोजिन नाम का जो एक एंजाइम है वो होता है जिसके कारण क्लॉटिंग होती है। आदमी मर जाता है तो क्लॉटिंग नहीं होती। वो जो है ये डिफरेंस होता है एंटीमॉर्टम ब्लड में, पोस्टमार्टम ब्लड में। हमारे यहाँ देहाती भाषा में कहते हैं वो तो मर गया, उसका खून पानी हो गया, तो लाल रंग का तरल पदार्थ या लिक्विड जैसा निकलता है, दैट इज पोस्टमार्टम ब्लड। नाउ इसी के ऊपर जैसा मैंने बोला, पहले बोला था कि मुर्दा सच बोलता है, ऐसी खून बोलता है, बशर्ते खून की भाषा पढ़नी आती हो आपको। If at all you see these type of blood say at the scene of crime, it is a blood fallen from height. इस तरह से मैंने एक केस भी सॉल्व किया था। एक आदमी को उसका गला घोंट के मार दिया, उसको कोई इंजरी नहीं थी। सस्पेक्ट्स पुलिस ने राउंड अप किए थे। क्राइम सीन के ऊपर फर्श के ऊपर इस तरीके की बूंदें थी। तो ये ऑब्जर्वेशन की चीज है, अपन चाय पीते हैं एक बूंद नीचे गिर जाती है, इस तरीके का पैटर्न बनता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, पेट्रोल अच्छे दूध की चाय है तो इसी तरीके खून के बराबर की विस्कोसिटी होती है। ये और किसी तरीके से ब्लड नहीं आता, इट इज अ ब्लड फॉलन फ्रॉम हाइट। तो मैंने कहा जो आपने सस्पेक्ट राउंड अप किए हैं उनमें से किसी को देखो, किसी के ऊपरी भाग में चोट लगी है क्या? उसमें मान लीजिए, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, उसमें राम प्रसाद को चोट लगी। राम प्रसाद को जब पुलिस ने इंट्रोगेट किया पता चला ये और देखा। दिस इज कॉल्ड वीनस हैमरेज। वेन्स जो है ऊपर होती है, जिसमें डॉक्टर नर्स ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है या ब्लड का सैंपल लेता है, उनका डाया कम होता है, सुपरफिशियली सीटेड होती है, और जब नस कटती है, नस से मतलब वेन है, वेन कटती है तो प्रेशर के साथ खून गिरता है, दैट इज कॉल्ड वीनस हैमरेज। ठीक है, उदाहरण के लिए सिरिंज में पानी भर लीजिए, उसमें एक नीडल लगा के पिचकारी मारेंगे, जो पतली धार आएगी वो दैट वुड बी वीनस हैमरेज। और नीडल निकाल के फिर एक धार मारिए तो जो मोटी धार होगी दैट वुड बी आर्टेरियल हैमरेज। आर्टरीज डीपली सीटेड होती हैं, उनका डाया चौड़ा होता है, क्योंकि ब्लड हार्ट का काम है पंप करना टू ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स।
इंटरनल ऑर्गन्स को ब्लड, हार्ट का काम है प्रेशर के साथ में खून फेरना, इट इज अ पंप। ये जो हम लोग कहते हैं ना दिल पे मत लेना, ये दिल का बहुत अच्छा है, ये दिल से प्यार करता है, इट इज ऑल रबिश। दिल कभी कुछ सोचता नहीं। what you do is governed by the brain. So this is arterial hemorrhage, this is smudge type of blood. Now I will come to a case. अभी हम लोग डीसी साहब के साथ चाय पे बात कर रहे थे, डॉक्टर आदर्श के साथ। एक्चुअली इसी केस से मेरी और डॉक्टर आदर्श की मुलाकात हुई थी लॉन्ग बैक। उस समय मोदी जी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड अमित शाह सर वॉज देन होम मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आई प्रेजेंटेड दिस केस ऑन क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज All India Forensic Science Conference to present this case. And immediately after presenting this case, there was a tea session. Dr. Adarsh came to me, and from that very day, we are friends like anything. So I am going to present this case. In this particular case, खून बोलता है, कैसे बोलता है, वो important. The story is like this, कि भोपाल में महर्षि करके एक एजुकेशनल सेंटर है। वहाँ पर एक अकाउंटेंट साहब थे जो हॉस्टल एकोमोडेशन में रहते थे। वो भी जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी ऐसी एकर्स में यूनिवर्सिटी थी। ऑडिट की टीम बाहर से आई हुई थी। तो ऑडिट की टीम बाहर से आई थी, तो ये महोदय अपना ऑडिट का काम कर रहे थे अकाउंटेंट साहब। ये रूम में ये दो पलंग को मिला के, कॉट को मिला के एक डबल बेड जैसा बना हुआ है। उस समय भाई का कहना है कि यहाँ ये बैठ के कुछ पेपर वर्क कर रहे थे। भाई आई, उसने अपना झाड़ू पोछा किया। जाते समय पूछने लगी कि सर आप ब्रेकफास्ट जो है यही लेंगे कि कैंटीन आएंगे? He said I'll come to the canteen and today I'll take some light पोहा वगैरह। भाई said ओके और चली गई। 11 साढ़े 11 बजे तक जब ये अकाउंटेंट साहब कैंटीन में नहीं आए तो किसी को भेजा गया। तो देखते क्या है कि इनकी लाश वेंट्रली पूल ऑफ ब्लड में पड़ी हुई है और पलटा के देखते हैं तो गला कटा हुआ था सामने। अल्लाह हुआ कि अकाउंटेंट साहब का मर्डर हो गया। So I was called to inspect the scene of crime. That day I was on leave actually, but SP मोबाइल उस समय आ गए थे। इनसे कि सब छुट्टी पे हैं, अगर शहर में वो देख लीजिए, बड़ा इम्पोर्टेंट केस। तो मैं गया तो मैंने देखा ये कोटा स्टोन लगा हुआ था और बड़ा अच्छा भाई ने साफ किया, तो अच्छा मिरर की तरह चमक रहा था। यहाँ पर कोई ब्लड स्टेन वगैरह नहीं थे और भी अपनी जैसे प्लेस होनी चाहिए वैसी प्लेस थी। ये डबल डेस्क जो है इन्होंने अपनी ड्रेसिंग टेबल जैसी बना रखी थी। इसके सेंटर में एक मिरर था। सामान सब अपनी जगह व्यवस्थित जैसा रखा था वैसे ही रखा हुआ था। यानी ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई झूमा झटकी हुई हो, झगड़ा हुआ हो, बल्कि एल्युमिनियम का हल्का सा स्ट्रेन जो है, जो जरा से धक्के में गिर जाता, वो भी अपनी जगह था। अब देखिए, एविडेंसेस को देख के बात होती है रिकंस्ट्रक्ट करने की, यानी घटना का पुनर्निर्माण। इस डिसीज की हाइट के आदमी को मैंने शीशे के सामने खड़ा किया तो गला कटने पे जो ब्लड का स्पर्टिंग होना चाहिए वो उतनी ही हाइट का था और यहाँ पर क्लॉटेड ब्लड था, दैट इज एंटीमॉर्टम ब्लड, क्योंकि इसमें थक्का जमा हुआ, पपड़ी बन गई। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो मैंने कहा कि खून बोलता है, इसमें अगर आप देखें तो ब्लड का स्पर्टिंग प्रेशर के साथ में लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि नहीं? खून प्रेशर के साथ कहाँ दिख रहा है? राइट में, लेफ्ट में? अरे दाएं तरफ बाएं तरफ? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, है बाएं तरफ है ना? दिख रहा है कि नहीं? तो उस दिन जो मुझे वकील साहब ने कहा था कि आप खून देखते हो, रास्ते चलते आदमी खून देखता है तो फर्क तो होना चाहिए, तो मैंने फर्क देखना शुरू किया।
एक तो एंटी मॉर्टम ब्लड है, दूसरा ये प्रेशर के साथ में लेफ्ट साइड में टिका है, राइट साइड में नहीं। नीचे की साइड में शर्ट पे ट्राउजर्स के कुछ ब्लड नहीं है। जब और बारीकी से देखा तो इसने ये अपना डब्बा जो है शेविंग किट बना रखी है, ये खुला हुआ था। यहाँ पर एक लेजर ब्रांड ब्लेड का रैपर था, उसको खोल के देखा तो उसमें ब्लेड गायब थी, ब्लेड नहीं थी उसमें। और उसकी गोंद जो है हाथ में मेरे चिपक रही थी। मतलब ये ताजा खुला है। अगर ये पुराना खुला हुआ होता तो इसकी गोंद जो है सूख जाती। अब देखिए कितना जबरदस्त प्रेशर, कितना जबरदस्त प्रेशर जो है लेफ्ट साइड में है। इसके सोल जो है, दोनों पांव के तलवे खून में सने हुए हैं। ये तभी पॉसिबल है जब कोई आदमी खून में खड़ा होगा। अगर इसकी नेक स्लिट होती, पीछे से आके कोई मारता, तो इसका फॉल होना चाहिए था डॉर्सल, क्योंकि आगे से आप किसी को पीछे धक्का दोगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है, आदमी गिर जाता है। पीछे से आगे धक्का दोगे तो आदमी हाथ से पहले बना के बच जाता है गिरने से। और ये आदमी जो है खून में खड़ा रहा है। वही लोकार्ड का विनियम का सिद्धांत, आप कीचड़ में खड़े हो गए, पैर में कीचड़ लग जाएगा, मट्टी में खड़े हो गए, मट्टी लग जाएगी। तो ये आदमी खून में खड़ा क्यों होगा? देखिए, अब उपस्थित भौतिक साक्ष्यों के आधार के ऊपर जब हम रिकंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें ये बात सुनिश्चित है कि आगे गले में जो है कट है, सामान कोई डिस्टर्ब नहीं है, फर्श के ऊपर कोई खून की बूंद नहीं है, ब्लेड जो है नई ब्लेड निकाली गई है वो गायब है। तो मेरा इसके रिलेटिव से, पुलिस से और मीडिया वालों से कहना था कि कुछ चीजें मैं एडवांस में बताता हूँ, अगर वो निकलेंगी तो मान जाना कि ये मामला आत्महत्या का है। बोले बताएं सर। मैंने कहा पहली चीज तो ये है कि ही शुड बी राइट हैंडर, ये दाहिने हाथ से काम करने वाला होना चाहिए। बोले क्यों सर? मैंने कहा देखिए, इसने अपनी ब्लेड राइट हैंड से निकाली, शीशे के सामने खड़ा हुआ, लेफ्ट साइड से इसने अपनी नेक स्लिट करने की कोशिश करी। तो इसके लेफ्ट साइड में हेजिटेशन वूंड भी मिलेंगे। हेजिटेशन वूंड समझते हैं? समझते हैं। खासतौर से जो यंगस्टर्स हैं तो कहते हैं ना, खून में लिख देंगे, नस काट लेंगे, मर जाएंगे, प्यार में हो जाएंगे, तो फिर लगाते हैं, फिर दर्द होता है, हटा लेते हैं, फिर लगाते हैं। रास्ता बहुत केसेस देखे होंगे यंगस्टर्स में कोल्ड स्कारिंग भी मिलती है। तो लेफ्ट साइड में हेजिटेशन वूंड मिलेगा। फिर इसका जब नेक का कटिंग देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, दैट वुड बी इन बिट्स एंड पीसेस, वेवी पैटर्न में है। और सबसे बड़ी चीज मेरे हिसाब से दाहिने हथेली के नीचे ब्लेड मिलना चाहिए। अगर ये हुआ तो मानोगे ये मामला आत्महत्या का है? बोले बिल्कुल मानो। दी कटिंग ऑफ द नेक, ये कितना चौड़ा भाग इसलिए दिखा है कि हमने उसके गर्दन के नीचे वूंड को दिखाने के लिए ईंट रख दी थी, तो वाइड ओपन हो गया। यू कैन सी दी कटिंग, दिस इज द हेजिटेशन वूंड, यू कैन सी। जब इसके हाथ को गीली रुई से पहुंचा, यू कैन सी ये शार्प कट। जब फादर के जब छोटे थे, फादर की यूज ब्लेड से पेंसिल छीलते थे तो ऐसे अंगूठे में लग जाती थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मलाई हटाते हैं ऐसे क्लॉटेड ब्लड को जब हटाया तो राइट पाम के नीचे ये ब्लेड पाई गया, which matched with the raper. So he committed the suicide and the autopsy was done by Professor Dr. D.K. Subharti, and he was also of this opinion that it's a case of suicide. If at all this type of investigation was not done at the scene of crime, तो किससे दुश्मनी थी, क्या है ये कहानी, पुलिस किसी को तो पेश कर दी। So this case was, I got the first prize in presenting this case, and Dr. Adarsh का जो इंटरनेशनल
जनरल, उसमें दिस केस वाज प्रेजेंटेड और स्पेशली इसके फोटोग्राफ्स डॉक्टर आदर्श ने वहाँ के दिस केस वाज प्रेजेंटेड इंटरनेशनल। नेक्स्ट, another unusual case of suicide. In this particular case, a person during the Diwali festival, मुंह के अंदर पतंग कैविटी में ये जो सुखी होम होता है उसको लगा के इग्नाइट कर दिया। You can see the decapitation. ये केस जो है बहुत अच्छा केस है। ये केस में सुनाऊंगा नहीं, लेकिन ये केस ये है कि ये केस ऐसा था, इकलौता केस ऐसा 4,500-5 हज़ार केसेस देखने में जहाँ आदमी की शिनाख्त नहीं हुई और 2 घंटे के अंदर मैंने पुलिस के साथ मिलकर ये केस में जिसने ये मर्डर किया था वो पकड़ लिया। इसके एक्चुअल पिक्चर्स नहीं थे, ये केस का जो है पोस्टर बना के डॉक्टर आदर्श ने अब्रॉड प्रेजेंट किया था, मैंने किया। दिस इज द ओनली केस, द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दैट वाज नॉट डिस्क्लोज्ड और उससे 2 घंटे के बाद में हमने ये मर्डर किया। जब अभी आज कल पुलिस की बात हो रही थी, हमने कहा ये केस देंगे पुलिस के लिए। आई एम कमिंग टू दी रेप केसेस। रेप केसेस में मैं तब से पकड़ रहा हूँ, 87 में मैंने पहला माइनर के साथ में रेप केस पकड़ा था और वो जो प्रोटोकॉल बनाया था उसी प्रोटोकॉल से आज पूरे हिंदुस्तान में जो पेनाल स्टेट वाला जो प्रोटोकॉल था मैं बनाया था उसी से सब लोग पकड़ते हैं। उस समय देन एसपी वॉज सैयद आसिफ इब्राहिम, लेटर ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। बड़ा सेंसेशनल केस था, उसको फिर कभी सुनाया। ये केस भोपाल का है, उस समय की बात कर रहा हूँ जब डीएनए वगैरह नहीं था। ये एक सिख लड़की थी 5-6 साल की, इसका फादर जो है लोअर मिडिल क्लास की फैमिली थी। ये बच्ची जो है शाम के बाद से दिखाई नहीं दी। जब दिखाई नहीं दी तो पुलिस में रिपोर्ट की। पहले तो घर वालों ने, पड़ोसियों ने ढूंढा की, जब नहीं मिली तो पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस आई, पुलिस ने सबसे पूछताछ की। जो पुलिस का तरीका होता है कि लास्ट सीन कब थी, कब आखिरी बार देखी गई, तो पता चला कि पड़ोसी के साथ ये किराने की दुकान पर देखी गई। तो किराने वाले से पूछा कि भाई तुमने ये बच्ची को ये पड़ोसी लेके आया था? बोले हाँ लाया था। इसने पार्ले जी बिस्किट खरीद के दिया था उस बच्ची को, उसकी दूध में आई थी, उसने पार्ले जी बिस्किट खरीद के दिया था। तो पुलिस ने इंट्रोगेशन का जो सेंटर था वो पड़ोसी हो गया, उससे खूब पूछताछ की। तो पड़ोसी ने लगा साहब मेरी बच्ची जैसी है, आप कैसी बातें कर रहे हो। उसके बच्ची के मदर फादर आ गए, वो भी कहने लगे कि ये इसकी बेटी जैसी है। और वो जो पड़ोसी था उसने कहा इस बात को लेके आप मेरे ऊपर क्यों चार्ज कर रहे हो, आप जरा किराने वाले से पूछो तो मैं कब कब दिलाया, मैंने क्या क्या दिलाया। तो पुलिस गई तो उन्होंने पूछा, हमने कहा नहीं ये ठीक है, परसों इसने कॉपरेंस दिलाई थी, कुछ ये दिलाया। वो तो जो बच्ची हाथ रख देती कि ये चाहिए वो दिला देता। तो आपका इस आदमी पे शक करना ठीक नहीं है। कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आई रिसीव द फोन कॉल फ्रॉम पुलिस कंट्रोल रूम। उस क्राइम सीन्स यानी वो जहाँ से बच्ची मिसिंग थी वहाँ से करीब 10-12 किलोमीटर दूर, बारिश के दिन थे, एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पे एक बच्ची की लाश मिली। दिस वॉज द डेड बॉडी ऑफ द गर्ल। उसकी अपनी ही सलवार से उसको स्ट्रैंगुलेट करके मार दिया और प्राइवेट पार्ट्स पे ब्लीडिंग भी हो रहा था। इस हालत में डेड बॉडी थी। And she was identified that she was the same girl. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी जब मैं क्राइम सीन देख रहा था, मुझे इसका एक्चुअल अच्छा पिक्चर मेरे पास नहीं है, तो प्रेजेंटेशन जो मैं लाना चाह रहा था वो लाया। तो यहाँ पर बिस्किट का रैपर पड़ा हुआ था पार्ले जी का, और उसमें 2-3 बिस्किट भी थे। जैसे ही मैंने ये देखा, मैंने पुलिस को कहा कि आप ऐसा करो कि उसका पड़ोसी है ना जिसने बिस्किट दिलाया थे, उसके घर से सब कपड़े ले रहा हो, उसको भी ले रहा हो, उसके जूते चप्पल जो हो गए। क्योंकि मेरा ये मानना था 4-5 साल की बच्ची जो है किसी भी अनजान आदमी के साथ बिस्कुट खाते हुए यहाँ तक नहीं आएगी, और वो गाड़ी पे आई, कैसे आई? क्योंकि अनजान आदमी 5-6 साल की बच्ची को गोदी में लेगा, सबसे पहले तो हाथ की बिस्किट फेंकती,
उसका मुंह नोचती कि मुझे नीचे उतारो। तो यहाँ पर बिस्किट का रैपर मिला है, इसलिए प्राइम सस्पेक्ट मेरी नजर में उसका पड़ोसी। टिपिकल साइन ऑफ डिस्लेक्सिया, जैसा आप सभी जानते हैं, हालांकि मैं हिमाकत कर रहा हूँ डॉक्टर आदर्श के सामने बोलने की कि 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से कोई भी फेल हो जाता है तो डेथ हो जाती है। एक होता है लंग्स, उसके कारण जो डेथ होती है उसमें जो टेक्निकल टर्म बोली जाती है दैट इज डिस्लेक्सिया। व्हेन ब्रेन की डेथ होती है तो कोमा बोलते हैं, हार्ट की जब होती है तो उसको सिनकोप बोलते हैं। So the external symptoms of dyslexia, they are common, that may be in hanging, strangulation, suffocation, smothering. So इसमें you can see the tongue between tooth, it is a very good sign of dyslexia death. ये लास्ट picture, ये इसकी सलवार से जब वहाँ पे गला घोंट के मारा है तो वहाँ का जो वेजिटेशन था वो भी गठान के साथ बन गया। These are called tattoo spot, which is suggestive of restriction depth. ये इसके गले के ऊपर ये सब चोट है, ये सब bruise, abrasion, contusion वगैरह जो भी है, because the person having a weight of 70 kg is mounted on this girl on her surface, so you can see the repercussions. ये जब उसके चप्पल वगैरह आए तो उसमें जैसी mud and baby of that area not with the arrow. इसका जो ट्राउजर्स था उसके ऊपर वो मिट्टी लगी हुई है because the underwear and the shirt. This is the actual picture of the BS slide. You can see the tail spermatula and tail, and this is the picture of the underwear, जिसपे भी sperms they were there. ये बच्ची के मुंह पर जो मिट्टी लगी थी उसको कॉटन से हमने अलग किया, तो वहाँ की जो सॉइल थी उसमें सेम टाइप की एल्गी, this algae was propagated in the lab, was same algae. Diatoms were there and diatoms were also present. The same diatoms were present in the chappal and the trousers. On the basis of all these, as the DNA was not there, उस समय DNA नहीं होता था, DNA का नाम भी नहीं सुना था किसी ने, तो on the basis of this, Honorable DJ of Bhopal, मैं life death sentence award किया है। Very old and sensational case in this particular case. Then Chief Minister of Madhya Pradesh, Mr. Digvijay Singh, was at the scene of crime along with the DG and all senior police officers. And this case was so sensational. Then Home Minister, he was telling to the SP. Then SP was Mr. Surendra Singh, later he became the DG of Madhya Pradesh. उन्होंने ये कहा कि अगर 2 दिन में अगर ये नहीं पकड़ा गया केस तो पूरी भोपाल पुलिस को चेंज कर दूंगा। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था इस तरीके की बच्चियों के रेप केसेस पकड़ने का। मैंने कहा 2 दिन तो ये बहुत बोल रहे हैं, हुआ तो कुछ घंटों में ही पकड़ लेंगे, आप सस्पेक्ट स्नैप करो। जब सस्पेक्ट स्नैप हुए तो उनमें से जो पेनाइल से लेके हमने ब्लड का टेस्ट किया, उसमें से उसी वैक्सीन के ऊपर पॉजिटिव आया। उस बच्ची के गाल के ऊपर टीथ मार्क्स थे, किसी ने जिसने भी उसके साथ गलत काम किया था उसने उसके गाल पे भी काटा था। उस समय फॉरेंसिक और डेंटोलॉजी जो है कुछ पिक्चर में ही नहीं थी, तो हमने एक आलू के ऊपर धो के उसको दांत से कटवाया, फिर दांत का इम्प्रेशन लेके वैसे मैच किया। इसमें लाइफ इम्प्रेसमेंट बना था उसमें। लास्ट रेप केस आई एम शोइंग, बस है तो बहुत सारे। ये बड़ा सेंसेशनल केस इसलिए है कि इसमें मैंने ना तो कोई क्राइम सीन देखा है, ना मैंने डेड बॉडी देखी है। दैट टाइम व्हेन दिस केस हैपेंड, दोज डेज आई वाज लुकिंग आफ्टर द नार्कोटिक डिवीजन। तो मैं अफीम गांजा भांग चरस की जांच करता था। रात में 12 बजे फोन आया ADG
और एसपी साउथ जो थे उनका फोन आया कि डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा हमें इस केस में मदद करिए, आपने तो पढ़ा होगा पेपर। मैंने कहा नहीं मैं पेपर तो पढ़ता है, टाइम नहीं दे रहा। बोले 5 साल की बच्ची का गला कटा हुआ मिला है एंड सेक्सुअली शी वाज असॉल्टेड, और इतना सेंसेशनल केस है कि नेक्स्ट डे ये बॉडी सीएम हाउस पर रखी जानी है और नेक्स्ट डे बवाल बंद हुई है इन प्रोटेस्ट ऑफ दी मर्डर, रेप एंड मर्डर ऑफ दिस गर्ल। बोले आप मदद कर दें। मैं क्या मदद करूँगा, ना मैंने घटनास्थल देखा है ना उसकी लाश देखी है। बोले नहीं हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ ना कुछ हमारी हेल्प कर पाएंगे। रात में 12 बजे के कॉल एट टीटी नगर पुलिस स्टेशन, all senior police officers of Bhopal police including ADG, they were in the Vivekanand police station. तो मैंने कहा आप फोटोग्राफ दिखाएं। बोले फोटो तो नहीं है लेकिन ये पेन ड्राइव में पिक्चर्स हैं। तो जब उन्होंने मॉनिटर के ऊपर पिक्चर्स दिखाने शुरू किए, मैंने कहा मुझे चूंकि कंप्यूटर आता नहीं है इसीलिए मैंने इनसे पूछा आगे पीछे कहाँ से होगा। देहाती आदमी हूँ, हालांकि जापान गया था तब लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर सीख लेना चाहिए। और मैंने समाज आई वॉज हैविंग रिजेक्शन फॉर दिस कंप्यूटर्स। तो मैंने आई वॉज डायरेक्टर, आई वॉज हैविंग 3 चैनल्स, जो भी काम होता था वो लेते थे करके ले आता। तो वहाँ का जो एसपी था साउथ का, वो मॉनिटर यानी माउस हाथ में लेके डेस्कटॉप के ऊपर मॉनिटर पर मुझे दिखा रहा था पिक्चर्स। इतने में जब उसके गले का पोर्शन आया तो मैंने कहा ये एरिया थोड़ा सा जूम करिए। तो मुझे नहीं पता था कि पीछे से एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनने माउस हाथ में ले लिया था। मैं कुर्सी पर बैठा था, उन्होंने पीछे से यदि माउस लिया तो उनके रिस्पेक्ट में मैं खड़ा हुआ कि एडीजी नीचे बैठ के देख रहा हूँ, खड़े हुए माउस चला है। तो मैंने घर साहब बैठा हुआ। जब मैंने उसकी कटिंग देखी तो शायद उस बच्ची को इंसाफ मिलना होगा। मैंने कहा इसकी जो कटिंग है उसमें जो वीपन ऑफ ऑफेंस है दैट इज शार्प बट नॉट वेरी शार्प एंड लाइट इन वेट, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रोकिंग हुई है। तो एवरीबॉडी वाज आस्किंग मी कि सर क्या हो सकता है। मेरे मुंह से अचानक पता नहीं कैसे निकल गया, कभी सोचा भी नहीं और कोई दिमाग भी नहीं लगाया, कुछ नहीं हुआ, मेरे मुंह से निकल गया तन्नी। तन्नी समझते हैं आप, जो प्लास्टिक करते हैं ना मेसन, वो सीमेंट और उसका रेत का मोटर से दीवार की। तो तन्नी जो है लाइट एंड वेट होती है, शार्प नहीं होती, बहुत शार्प चाकू की तरह नहीं होती। और कारीगर को अगर इतना सा ईंट का टुकड़ा काटना है तो मल्टीपल स्ट्रोकिंग करके वो उतना ईंट का टुकड़ा काट लेता है। तो जैसे ही मैंने तन्नी बोला सारे के सारे उछल गए, अरे सारे सारे सस्पेक्ट है हमारे पास। उनने 2-3-4 जो वो सस्पेक्ट राउंड अप किए थे, उसमें एक रिश्ते में दूर का नाम ही था इस बच्ची का। उसके जब एनालिसिस में लेके हमने टेस्ट किया, वो पॉजिटिव आया। रात में हम आरएफएसएल ले गए, उसमें हमने स्पीशीज लगवाई, डोपिंग कराया। अगले दिन पंकज श्रीवास्तव वगैरह को बोला कि डीएनए की सैंपलिंग कराई और 9 वर्किंग डेज में फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी हुई। This was the case. टाइम नहीं है, ये केस मैंने जापान में प्रेजेंट किया था। ये केस जरूर बता देता हूँ जिनको भोपाल इज फेमस फॉर सिटी ऑफ लेक्स। इसमें जो है छोटा तालाब है, वहाँ पर एक बैग के अंदर 2 कटे हुए हाथ, अभी एक रिसेंट केस भी हुआ है जिसमें हाथ पर काटे गए, 2 कटे हुए हाथ, 2 कटे हुए पैर और सर मिला। ये जो बैग था इस पर बॉम्क्यू लिखा हुआ था। नॉर्मली जो बाजार में बैग्स आते हैं उसमें एडिडास, नाइकी, मतलब कैसी भले ब्रांडेड हो, नकली तो लगी रहते हैं। ये जो है दिस इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड। एज माय फादर वाज अ डॉक्टर, सो आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी।
तो इसमें ब्रोंक्यू से मतलब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यू इससे रिलेटेड या तो कोई डॉक्टर का होना चाहिए या कोई एमआर का होना चाहिए। ये मेरा मानना था। इसके जो हाथ पैर कटे था, इसका हेड जो था, हेड के ऊपर देयर वाज अ फ्रैक्चर, व्हिच वाज सजेस्टिव कि इसमें कोई हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट इसके सर पे मारा गया है। इसकी जो बोन्स कटी थी, हाथ पैर कटे थे, उनकी कटिंग उसमें बोन मैरो दिखा था। उनकी कटिंग देख के बिल्कुल समझ में आ रहा था कि इसमें शार्प, वेरी शार्प एंड हेवी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया है, जैसे कसाई का चाकू होता है। तो वो लकड़ी के लट्टे के ऊपर रख के ब्लॉक पे एक कस के मारता है तो हड्डी 2 टुकड़े हो जाती है। अदरवाइज चाकू वगैरह से आप इस तरीके से नहीं काट सकते। ये 2 हाथ 2 पैर मिले, बैक के अंदर लंबे लंबे बाल थे। ये लगा कि शायद ये किसी औरत के होंगे या लड़की के। This was the initial stage of the head which we found. This is the second stage, this is the third stage, and this is the fourth stage. In Medical Legal Institute, along with Dr. Subharti and all, we reconstructed the base. पीछे से आंखों को धक्का दिया, रुई के बेल्ट लगाए, और जब ये पीछे सर्कुलेट हुआ, you can see the cutting of the bones, जिससे हमारा कहना था कि इसमें कसाई के चाकू से काटा है। तो ये मिला था। ये फोटो जब सर्कुलेट हुआ तो इस औरत का पता चल गया। ये जो है सीआई कॉलोनी के पास कुछ प्राइवेट लोग रहते हैं, वहाँ पर ये लड़का, मुस्लिम लड़का, ये अपनी इस लड़की के साथ रहता था। तो चूंकि लड़के का जब पता चल गया, घर में गई पुलिस तो ताला लगा हुआ था, तो पता चला सलामत हो के पास जो है इसका घर का, जहाँ इसका फादर का होता था, वहाँ से पुलिस ने उसको उठाया। तो जो कहानी सामने निकल के आई वो ये थी कि ये लड़की और ये लड़का एक साथ रहते थे लिविंग रिलेशन में 1.5 साल से। लड़के ने बताया कि इसके फादर ने कोई मेडिकल लड़की से इसकी शादी तय कर दी थी, तो बहुत एक्साइटेड था। तो इस औरत से या इस लड़की से बोला कि अब तुम जाओ। शी सेड कि मैं 1.5 साल से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। द गर्ल वॉज फ्रॉम माउंट आबू राजस्थान, और अचानक तुम कह रहे हो कि तुम जाओ, इट इज नॉट दैट। एक रात जब ये सो रही थी, इसने एक पत्थर उसके सर में मारा। जहाँ से ये रोज मीट लाता था, उससे कसाई से दोस्ती हो गई थी, उससे छोटा नाइफ बोरो करके लाया, तो मैं देखा इसके हाथ पर काटे, बैग में भर के तालाब में फेंक दिए। रेस्ट ऑफ द ट्रंक जो है वो हालांकि 2 दिन बाद रिकवर हो गया था। 200 लीटर्स का जो बड़ा बैरल आता है उसमें डाला। आप ठेले पर बस स्टैंड, नादेरा बस स्टैंड ले गया, बस पे चढ़ाया। लोग कहने लगे बदबू आ रही है, कहना कुछ नहीं है, मछली है। और वो सलामत हो के आ गई, घंटों ब्रिज के नीचे जमा कर दिया। फिर इसके घर मतलब ये पत्थर कहाँ फेंका जिससे सर उस पर तुमने मारा था, थोड़ा नाले में फेंक दिया। नाले में से वो पत्थर रिकवर किया, हालांकि जो पत्थर था, हालांकि इसके ऊपर एपरेंट ब्लड स्टेन्स नहीं थे, लेकिन जब केमिकली हमने टेस्ट किए तो ब्लड आ गया। क्योंकि जो टेस्ट करते हैं उसकी सेंसिटिविटी मीडियम लेवल पे होती है, ताकि पार्ट्स पर ले गए हुए। उसके कमरे की फर्श की तलाशी ली तो छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ वहाँ फैले हुए, जब वो काट रहा होगा तो वो हड्डी के छोटे छोटे पीसेज यहाँ वहाँ हो गए थे। फिर इसके बाद उस समय डीएनए भी चालू हो गया था। The first claim is that Sushant Singh Rajput was not depressed. Certain media houses and social media influencers and fans have questioned whether Sushant Singh Rajput was depressed at all. They claim a successful star with a promising career ahead of him cannot be depressed. But the evidence suggests otherwise. As many as 4 psychiatrists who treated Sushant have already registered their statements in connection with the case. Sidharth Pitani, Sushant's friend and housemate, has also mentioned that Sushant took medication to battle depression. In fact, Sushant's own father, his statement recorded just 2 days after the actor's death, made it clear that the family was aware of Sushant's ongoing psychiatric treatment. Moving on, the next claim is that Sushant was murdered. Counter claims by India's #1 forensic expert, Dr. Harsh Sharma, who has worked on as many as 800 cases of suicide by hanging alone. So first, Sushant's eyes did not pop out. Dr. Harsh Sharma told India Today that the position of Sushant's eyes
seen in the pictures of his dead body is typical of suicidal hanging. The fact that one of his eyes is almost completely shut and the other is partially open is indicative of sympathetic compression on carotid artery. According to Dr. Sharma, the picture of the eye position is added advantage as it clearly indicates that this is a clear case of suicide. Picture of the body is suggestive that it is a case of suicide. However, the confirmation that can be done by the autopsy examination. ये एक्चुअली जैसे ही ये केस हुआ था उसके जस्ट बाद मुझसे कुछ मीडिया हाउसेज में मोस्टली जितने हिंदुस्तान में सेंसेशनल केसेस होते हैं उसमें मुझसे लोग पूछते हैं, तो मैंने जो फोटोग्राफ्स में दिख रहा था वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया था। अनफॉर्चुनेटली जो सीबीआई ने टीम बनाई थी उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, my friend Dr. Adarsh was member of that team, and when he came back from Bombay, then I asked on telephone, sir, क्या निकला? Because I was also having anxiety. Then he said, अरे आपने तो केवल फोटो देख के बता दिया था। हम लोगों का मजाक भी हो रहा था, मैंने वहाँ करके रह गया कि 70-80 किलो का लड़का है। फांसी के लिए तो 3.5 किलो का वजन गर्दन तो बहुत होता है। तो कहने लगे यार आप ऐसा जानते लोगों। तो एनीवेज डॉक्टर आदर्श एंड हिज टीम, डॉक्टर गुप्ता, they confirmed that was a case of suicide. Anyways, I'll show you the last case क्योंकि हमें पर्ची आ गई है कि आप जाओ। ये भी बहुत अच्छा केस था पार्शियल एंडिंग का, बट ये केस जो है ये बहुत पुराना है। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करते थे और उस समय मोबाइल भी नहीं थे लोगों के पास। किसान एक गांव से दूसरे गांव रिश्तेदारी में टॉर्च या लालटेन एक हाथ में लेके एक हाथ में डंडा लेके निकल लेता था। तो एक किसान ये कह के गया कि रिश्तेदारी में जा रहा है, उस इलाके में शेर भी था, तो वो फिर मिला नहीं। बहुत समय ढूंढा, सब जगह ढूंढा, नहीं मिला, बात आई गई हुई। एक दिन क्या हुआ, एक बकरी भेड़ बकरी चराने वाला पहाड़ के ऊपर भेड़ बकरी चरा रहा था, तो उसको ड्राइव फीकल मैटर दिखाई दिया शेर का। शेर का पॉटी सूखा हुआ दिखाई दिया, क्योंकि देहाती आदमी का समझ लिया कि शेर का पॉटी है। उसको जो है एंजाइटी इस बात की थी, उसमें एक ह्यूमन टूथ दिखाई दिया, आदमी का दांत दिखाई दिया। तो ये रिपोर्टेड टू द पुलिस, शेर का एक पॉटी है, उसमें एक दांत दिखाई दे रहा है। तो थाने का जो सब इंस्पेक्टर था वो भी बड़ा फैसिलिटी मानेंगे नहीं, तो कह रहे स्थिति करा गया, तुम क्या फालतू बकवास कर रहे। वो बेचारा मोटरसाइकिल से चढ़ा पहाड़ पे उस लड़के को लेके, और ये देख के आया तो पन्नी में समेट लिया। फिर उसने फोन किया मुझे कि सर इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए वगैरह का कुछ सोच नहीं सकते आप। जब लालटेन लेके आदमी चलता था, मोबाइल नहीं होता था, तो मैंने कहा ऐसा करो यार, इसको तुम भोपाल गया। वो पन्नी में भोपाल लाया। हम मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट में हम डॉक्टर सरस्वती वगैरह ने सबने इसको खोल के देखा, तो इसमें दांत के अलावा सूखी हाथ की उंगली की चमड़ी जैसी दिखाई दे रही। उस चमड़ी को अलग किया, इस चमड़ी का क्या किया जाए ये सोच के खुद ही एक प्रोटोकॉल बनाया। गुनगुना पानी और ग्लिसरीन मिला के रात में उसमें रख दिया। जैसे किशमिश को आप रख दो रात भर, तो फूल के अंगूर जैसी हो जाती है, तो ये चमड़ी फूल गई। जब फूल गई तो मिट्टी की उंगली जैसे मोल्ड बनाए, उसके ऊपर ये चमड़ी को चढ़ा दिया। फिर रोल टाइप के फिंगरप्रिंट लेके पेपर पे लिए, और ये जो आदमी मिसिंग था इसके पटवारी के यहाँ से जमीन जायदाद के कागजात निकलवाए। जब इससे मिलान करा तो मिलान हो गया, पता चला इसको शेयर कर गया था। इसलिए इसका हेडिंग दिया था हमने 8 years आर्ट ऑफ अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम न्याय के साक्षी हैं। क्या प्रथम सूचना प्रतिवेदन होता है, क्या लोग कहते हैं, इसको एक हद तक मानना चाहिए।
भौतिक साक्ष्य जिस तरफ इशारा करें, निर्ममता से वो कार्रवाई करनी चाहिए। विद दिस थैंक यू। एंड लास्ट रिगार्डिंग फिजिकल एविडेंस, एक शेर, तुम अगर साथ मेरे तो मुझे गम किसका, आप ही मिल जाएगा हर मंजिले हस्ती का निशान। थैंक यू। सर ने इतना अच्छा केसेस आप लोगों को बताए। सर भोपाल से हैं और सर मेरे जो सर हैं जिनके अंडर मैंने एमडी की, वो भी भोपाल से थे, अब इस दुनिया में नहीं है, डॉक्टर एस एन अग्रवाल। मैं उनका लास्ट पीजी था लेडी हार्डिंग में 1989। तो भोपाल के सर का मैं स्टूडेंट हूँ। भोपाल को नमन, आपको नमन। और इतने अच्छे केसेस सर ने आपको दिखाए। मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका 36 साल का जो एक्सपीरियंस है वो उन्होंने 1 घंटे में आपको दिखा दिया। मुझे नहीं लगता कि आप लोग पूरी जिंदगी में भी इतने केसेस देख पाएंगे जितना आपको सर ने 1 घंटे में दिखा दिया। और लेडी हार्डिंग का एक केस मैं भी आप लोगों से शेयर कर लूं, अगर आपको याद हो, नैना साहनी मर्डर केस। किसी को याद है या किसी को पता है? नैना साहनी मर्डर केस। इसमें नैना साहनी नाम की एक लेडी थी जिसको सुशील शर्मा की मिसेस थी। किसी बात पे उनका आपस में झगड़ा हुआ और सुशील शर्मा ने नैना साहनी को गोली मार दी। उससे उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद सुशील शर्मा को समझ नहीं आया मैं क्या करूं। जनपद पर एक बगिया रेस्टोरेंट का वो मालिक था। उसने उस डेड बॉडी को वहां से खींचा, गाड़ी में डाला और उसको बगिया रेस्टोरेंट के तंदूर में, इट इज ऑल्सो नोन एज तंदूर गार्ड ऑल्सो, तो उस तंदूर में जब उसको जलाया तो जलाने से एकदम बहुत जबरदस्त आग निकली। एक लेडी ने देख लिया और ये भाग गई। सुशील शर्मा एंड पार्टी जो भी उसके साथ वहां लेके जला रहे थे वो भाग गए। पुलिस आ गई। उस पार्शली बर्न्ड बॉडी को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में जिन सर ने वो किया था वो इस समय विदेश में है, उन्हें पूरा केस पता नहीं था। यहां मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि मेडिको लीगल एक्सपर्ट ओनली ऑटोप्सी सर्जन हैज गॉट सम लिमिटेशंस। अगर पुलिस वालों ने इस वाले केस में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन या जो साक्ष्य, जो फिजिकल एविडेंस वहां मौजूद थे, अगर ऑटोप्सी सर्जन को कम्युनिकेट कर दिए होते तो शायद इतनी बड़ी गलती। ही वॉज अ सीनियर पर्सन, डॉक्टर सोरंगी, ही वॉज अ वेरी सीनियर पर्सन, लेकिन वो उस पोस्टमार्टम में गलती कर बैठे और उन्होंने ये लिखा कि क्योंकि बर्न हो गई थी बॉडी, कुछ नजर आ नहीं रहा था ज्यादा, तो उन्होंने जो भी उनसे समझ आया वो लिख दिया। बाद में क्या हुआ कि सीन ऑफ क्राइम पर जो है वहां एम्प्टी कार्ट्रिज और बुलेट के निशान मिले। तो जो थ्योरी डॉक्टर सोरंगी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी और जो पुलिस वालों को साक्ष्य मिले वहां कल सीन ऑफ क्राइम पे, वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। बॉडी का सेकंड पोस्टमार्टम हुआ पुलिस हॉस्पिटल में और उसके जो चेयरमैन थे कमेटी के, डॉक्टर एस के खन्ना, मेरे टीचर, ही वाज असिस्टेंट प्रोफेसर दैट टाइम लेडी हार्डिंग। और क्योंकि अब हमें पूरा पता चल चुका था कि वहां जो है बुलेट मिली है और फायर कार्ट्रिजेस मिले हैं और दीवार पर निशान मिले हैं, ऑटोप्सी सर्जन को जो आपने इतनी इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या था, वहीं पर जो है उनका एक्सरे कराया गया, एक्सरे में जो है बुलेट रिकवर हो गई। तो ये मैंने इसलिए आपको बताना उचित समझा कि कई बार ऑटोप्सी सर्जन और द पर्सन हु इज कंडक्टिंग द ऑटोप्सी, इफ ही इज मेड टू विजिट द सीन ऑफ क्राइम, if he is supplied proper relevant document and various things to the autopsy surgeon, it helps our crime. Otherwise there is always chances that there is a miscarriage of justice, and these evidence help us to connect crime with the criminal. Thank you very much. मैं इस रेफरेंस में एक बात डॉक्टर आदर्श भी बोलते हैं, ये मैं फिर चूँकि आज सब लोग मौजूद हैं इनके सामने मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेडिको लीगल एक्सपर्ट एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस पे होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि whenever there is a combination of the medical legal expert, forensic scientist and police, the cases are invariably solved. चूँकि
आज टाइम नहीं था, जो मेरे करियर का सबसे अच्छा केस है जिसमें पुलिस, I presented that case in Japan. Police, medical legal expert and me. इतना मिस्टीरियस केस था वो, उसमें बहुत एप्रिशिएशन मिला मुझे. तो that is my best case of the entire career. क्योंकि उसमें टाइम लगता है इसलिए मैंने आपको सुनाया नहीं. लेकिन मेरा ये कहना है कि डॉक्टर आदर्श अभी इस पोजीशन पे हैं. अभी कुछ रिकमेंडेशंस के लिए हमारे पास भी आया था नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी नीचे की तरफ से. तो हमने भी यही बात कही है कि देखिए जो डॉक्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहा है उसका काम पोस्टमार्टम करना ही है, मना नहीं कर सकता, ये है ना. और जो ऑटोप्सी सर्जन है उसने फॉरेंसिक मेडिसिन पढ़ा है उसका काम करना भी नहीं, ये नहीं उसका भी है और इसका ही है ना. तो उनको इतना नॉलेज होता नहीं. कई बार ऑटोप्सी सर्जन भी मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हैंगिंग करके देखा थोड़ा सा क्या लिख दूँ. मुझे तो केवल एस्फिक्सिया समझ में आ रहा है, तो अपना इतना एक्सपीरियंस तो है. तो मेरा ये कहना है आपसे कि आप लोगों को ऐसी रिकमेंडेशन पे फुट डाउन करना पड़ेगा. नहीं तो ये जिस तरीके से ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आती हैं बहुत मुश्किल काम है. सर वो एक बार मेरे को एक केस याद आ रहा है. यूपी का एक केस था, हमारे यहाँ बोर्ड के लिए याद है मेरे बोर्ड. तो गन्ने के खेत में बॉडी के लिए और टाउन गाजियाबाद में केस था, उसके पास मेडिकल बोर्ड बना था. ऐसे ऐसे केसेस नहीं, मैं तो आपको इतना बड़ा एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ड्राउनिंग के केस में वन ऑफ माय फ्रेंड वाज डूइंग ऑटोप्सी ऑफ द ड्राउनिंग केस. मैं वहाँ क्या मौजूद नहीं, तो वो सीधा जो भी करता था वो जो है लिख रहा था वो की किताब निकालती है, उसमें से इतना सेंटेंस ठीक है. बोले रात को महीने में पड़े कल को क्रॉस होगा मैं करूँगा वैसे करा तो हम बोली नहीं and the person who are doing the job of autopsy like Dr. Adarsh and other friends, यानी heads off to them. लाश के साथ में काम करना, जैसे मैंने वो सर कटा हुआ लाश को रिकंस्ट्रक्ट किया, चेहरा सड़ी हुई लाश पे काम करना, इट इज नॉट ए फ्लो. जब आदमी पास जाने में आदमी को दिक्कत होता है तो बहुत मुश्किल काम है. और ये लोग समाज के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो कम से कम एक बार ताली बजाइए फॉरेंसिक मेडिसिन. Thank you so much, sir, for the wonderful talk, part of the experience you have shared. Definitely it will benefit all the persons, those who are participating in this conference. Now I would like to request Professor Dr. Bhim Singh sir, Head Department of Forensic Medicine, Subharti Medical College, Meerut, to felicitate Professor Dr. Brind Kumar Chokar sir, Head NAAC Medical College, Hapur. सर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ और हमारी कुछ ये भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, तो हमारी कुछ डेफिशिएंसी है सो फॉर एज मेडिकल वर्क के साथ, चाहे वो मेडिको लीगल वर्क हो या क्लिनिकल मटेरियल हो. क्लिनिकल मटेरियल पे मैं कमेंट करूँगा नहीं, लेकिन मेडिको लीगल वर्क पर जरूर कमेंट करूँगा कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं, जितना मेडिको लीगल एक्सपोजर उन्हें होना चाहिए, वो बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस नहीं हो पाता है. पहले तो ये था कि हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एक ऑटोप्सी बनाएगा, आपका मॉर्चरी बनाएगा, उसके बाद मॉर्चरी बनाकर बैठे हुए हैं एज पर MCI नॉर्म्स एंड मॉर्चरी हमारे पास है, लेकिन परमिशन किसी को भी नहीं मिली नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, तीर्थांकर को मिली है, शायद कोई तीर्थांकर का होगा तो मेरे ख्याल में साल में 2 पोस्टमार्टम आते हैं. तो जब आप अपने बच्चों को MBBS स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस नहीं होगा, और वही आके जो है अब मेरे संतोष में मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मेरे जो बच्चे हैं वो आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है नोडल ऑफिसर हैं, और जो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें भेज के ओपिनियन मांगते हैं, तो हमें लगता है कि एक शेर से मुझे लगता है, मुझे अपना दर्द बयान कर दूंगा मैं, कि किस मुंह से इल्जाम लगाएं बारिश की बौछारों पर,
किस मुंह से इल्जाम लगाएं बारिश की बौछारों पर, हमने ही तस्वीर बनाई कच्ची दीवारों पर, हमने ही तस्वीर बनाई कच्ची दीवारों पर। मैं जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो अपने स्टूडेंट्स को जितना मेडिको लीगल एक्सपोजर करा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आप डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट बन जाए, पैथोलॉजिस्ट बन जाए, गायनेकोलॉजिस्ट बन जाए, आप अपनी मेडिको लीगल ड्यूटी से कभी भी दूर नहीं है, आपको करनी ही पड़ेगी, आप चाहते हैं तो भी, नहीं चाहते हैं तो भी, राइट। तो इसलिए मेडिको लीगल वर्क का आना, समझना, इंटरप्रिटेशन, कैसे सैंपल लेते हैं, क्या क्या हमारी ड्यूटी है, वो हमें जरूर आनी चाहिए। और एज ए टीचर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको इस बात का एहसास कराएं कि आप कुछ भी करें जिंदगी में, आपको मेडिको लीगल ड्यूटी तो आपको करनी ही पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंड सर के लिए जो सर ने 35 साल में किया वो आपको 1 घंटे में दिखा दिया। मैं आप लोगों की तरफ से डॉक्टर शर्मा का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और एक बार जोरदार तालियां। और इसलिए भी तालियां कि उस जगह से आते हैं जो सर मेरे नहीं है इस दुनिया में, वो भी जो है भोपाल से ही थे। एक इसलिए सर से मेरा मिलूंगा, पहली बार ही मिल रहा हूँ, रास्ता रहेगा। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। One additional thing I would like to tell you that my father was Dean Bhopal Medical College and he was he graduated from the same institution. Dr. S.N. Agarwal graduated from the same institution. Thank you very much to all of you. Thank you. So there is an announcement now. We are moving for the lunch break for the 30 minutes, and after the post-lunch session we will start at 2:30 p.m. Thank you. Certain things which might be very very basic in this presentation, which may not be much of interest for the medical officers, the medical students. But if you talk basically of DNA, so deoxyribose nucleic acid, and it is basically the master molecule which is present inside the body. It contains the genetic information which is the blueprint of what a thing will be exactly. So in terms of Hindi or English, like अगर हम कोई भी भाषा बोलते हैं या लिखते हैं, उसके लिए कुछ वर्णमाला होती है, some alphabets are there. अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 26 alphabets which are present in English, उन्हीं alphabets से हम words बनाते हैं, words से हम sentences बनाते हैं, sentences को combine करके paragraph बनता है, paragraph को combine करके चैप्टर बनता है, चैप्टर्स को कंबाइन करके एक बुक बन जाती है। तो सेम इज द केस ऑफ डीएनए। अब डीएनए की लैंग्वेज में सिर्फ डिफरेंस ये है कि डीएनए के लैंग्वेज में सिर्फ 4 अक्षर होते हैं, ATGC, ये सिर्फ 4 अक्षर प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं 4 अक्षरों से जितनी भी लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो डाइवर्सिटी है आपको वही नजर आती है। मैं आपको नजर आ रहा हूँ इस तरह का जैसा मैं दिखता हूँ। क्यों दिख रहा हूँ? बिकॉज मेरा डीएनए पर्टिकुलर तरह का है। यहाँ पे पौधा है, उसके भी अंदर डीएनए है, पर उसका डीएनए का जो सीक्वेंस है ATGC जिस तरह से उस पर लिखा गया है वो अलग है, इसीलिए वो पौधा है। इसी तरह से कोई जानवर है, उसका ATGC का सीक्वेंस अलग है, इसीलिए वो अलग है। हम आपस में भिन्न भिन्न क्यों दिखते हैं जबकि हम सब ह्यूमंस हैं, बट वी लुक वेरी वेरी डिसिमिलर टू ईच अदर, वेरी सिमिलर और डिसिमिलर। उसका कारण क्या है कि हमारे डीएनए की जो सीक्वेंसेस हैं अंदर, ATGC का जो अरेंजमेंट है, दैट वेरीज स्लाइटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। So otherwise अगर हम डीएनए की बात करें, 99% ऑफ आवर डीएनए इज सिमिलर। 99% हम जितने भी लोग बैठे हैं, सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, 99% हमारा डीएनए सिमिलर है। अभी 99% डीएनए सिमिलरिटी होने के पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि प्री हिस्टोरिक टाइम्स में ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम थी। ह्यूमन पॉपुलेशन वाज वेरी वेरी लेस। हमारी जो जनसंख्या बढ़ी है ज़्यादा, वो पिछले 4-5 सेंचुरीज में बढ़ी है या पिछले 10,000 साल में बढ़ सकता है। ह्यूमंस की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है, 10,000 से पहले पॉपुलेशन बहुत कम थी। और हम वी हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ एंसेस्टर्स, वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ एंसेस्टर्स। इसीलिए हमारे डीएनए में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। जेनेटिक्स में जिस टर्म इज कॉल्ड एज जेनेटिक बॉटलनेक, जैसे बोतल होती है जिसका बॉटलनेक जो नैरो एरिया होता है, तो बहुत कम लोगों से ये सारी पॉपुलेशन ब्रेक आउट हुई है। उसी वजह से हमारा डीएनए में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। Now, as far as human DNA is concerned, in terms of the DNA है, it's a very basic science, plus 2 levels या 2 level science है। So,
जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं प्रेजेंट इन द सेल, so in the nucleus they are organized into 23 pairs of chromosomes. 22 pairs जो है जो autosomal chromosomes and 23rd pair is the sex chromosome which determine the sex of a person, whether male or female. अगर in total जो हमारा डीएनए अगर उसको रखें is about 3 billion base pairs, जो ATGC जो अक्षर है तो 3 बिलियन के आसपास वो अक्षर से टोटल हमारे डीएनए के अंदर। और जो फोरेंसिक डीएनए है उस डीएनए का बड़ा छोटा फ्रैक्शन है जिसको यूज करते हैं डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे एक और बात आती है, डीएनए डेटाबेस की बात होती है कई बार, तो डीएनए डेटाबेस में प्राइवेसी इश्यूज आ जाती है कि अगर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे उससे किसी पर्सन की हेल्थ के बारे में पता चल जाएगा, उसके ओरिएंटेशन के बारे में पता चल जाएगा, उसकी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा, उसकी शक्ल के बारे में पता चल जाएगा। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि जो डीएनए हम यूज करते हैं फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग में, दैट डीएनए इज नॉट द कोडिंग डीएनए, इट इज द नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग और कोडिंग डीएनए में फर्क क्या है? हमारे डीएनए के अंदर जितना डीएनए प्रोटीन्स के लिए कोड करता है, जो डिजाइन करता है कि बॉडी किस तरह की बनेगी, किस तरह के प्रोटीन्स बनेंगे, क्या बालों का रंग होगा, क्या आंखों का रंग होगा, वो वाला डीएनए फोरेंसिक्स में नहीं यूज किया जाता है। वी यूज ओनली द नॉन कोडिंग डीएनए व्हिच डजंट कोड फॉर एनीथिंग। ऐसा उसको जंक डीएनए भी बोलते हैं। अभी तो उसका बायोलॉजिकल फंक्शन तो क्लियर नहीं है। वी हैव कलेक्टेड इट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, जो हमारा क्रमिक विकास हुआ है प्राइमेट से ह्यूमंस के लेवल तक। तो वो जो डीएनए है नॉन कोडिंग डीएनए, तो हमारे पास अगर डीएनए प्रोफाइल है किसी की, उससे कुछ नहीं पता चलेगा, उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है। वो ये नहीं बताएगा वो काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, ये कुछ नहीं नजर आएगा उससे सिर्फ ये पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता है। अगर हम डीएनए इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसको अगर हम बड़े सिंपल ढंग से कंपेयर करें, जिस तरह से हमने अल्फाबेट, दिस इज द टेक्स्ट टेकन फ्रॉम बुक बाय जॉन पार्टनर, उनकी किताब को बाइबल ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग भी मान सकते हो, फॉरेंसिक डीएनए टाइपिंग, उसमें से टेक्स्ट लिया हुआ है। वर्ड्स अल्फाबेट्स में कंबाइन टू फॉर्म वर्ड्स को कंबाइन करके पैराग्राफ बना, पैराग्राफ से चैप्टर और बुक बना। उसी तरह से हमारा जो एटीडीसी है, दैट इज द एंटायर चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, एंटायर बुक ऑफ आवर लाइफ। सो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं सिंपल भाषा में, तो वहाँ पे लेटर्स है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। देन अगर वर्ड्स हैं तो वहाँ पे डीएनए के अंदर शॉर्ट डीएनए सीक्वेंसेस हैं। लाइन ऑफ अ पेज इज कॉल्ड एज द लोकस। जो लोकस हो गया क्रोमोसोम का हिस्सा जहाँ पे डीएनए की टारगेट सीक्वेंस हमारी पड़ी है, दैट द लोकेशन और लोकस। पेज नंबर इज द क्रोमोसोम, chapter is the nucleus, book is the cell, library is the body. So this is now more refined looking at the DNA. If you look at the DNA, these are what we call so these are the chromosomes straightened up. So this first, second, third, and total 23 chromosomes. So last one is the X or Y. In addition to that, we also have the mitochondrial DNA. तो हमारे जो mitochondria रहता है सेल के अंदर, उसके अंदर mitochondrial DNA भी रहता है। So अगर inheritance की बात करते हैं, inheritance कैसे होता है? तो आधा DNA मदर से आएगा, आधा DNA फादर का आएगा। तो ये जो क्रोमोसोम 1 से लेकर 23 तक रहते हैं, ये सारे मिलकर पेयर्स, 23 पेयर्स। तो एक जो क्रोमोसोम का पार्ट है, एक आर्म will come from one chromosome will come from mother, another will come from father, और अल्टीमेटली दोनों को कंबाइन होकर जनरेट डीएनए ऑफ द चाइल्ड। रही बात Y क्रोमोसोम, इट इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द फादर, और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है ये सिर्फ मदर की तरफ से आएगा। इसको हम लेटर ऑन स्टेजेस में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि डीएनए में फर्क किस तरह का नजर आता है। नंबर एक होती है सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म। फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म कॉल्ड एज द सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म? मान लीजिए एक व्यक्ति का डीएनए इस तरह से सीक्वेंस नजर आ रहा है, AGACTAGACAPD, दिस इज द सीक्वेंस। दूसरे व्यक्ति में C is replaced by T, A is replaced by G. This is called as the sequence polymorphism. But as far as forensic DNA profiling is concerned, जो हम लोग अभी करते हैं, कंटेम्परेरी जो टेक्नोलॉजी है, उसमें we don't study the sequence polymorphism. हम डीएनए को सीक्वेंस नहीं करते हैं। जो लैब में पढ़ा है डीएनए सीक्वेंसर, अभी वास्तव में सीक्वेंसिंग नहीं कर रहा है। What the DNA profiling does is we go for something which is called as the length polymorphism. What is length polymorphism? कि मान लीजिए रिपीटिव मोटिफ है, रिपीटिंग मोटिफ है डीएनए के अंदर, AATG, 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 रिपीटेड 3 times.
another person might be repeated only 2 times. तो फर्क क्या हुआ कि दोनों के DNA के उस सेक्शन की लेंथ अलग आ रही है. So this is the length polymorphism. So जो हमारा forensic DNA profiling है वो ज़्यादातर 99.99% works only on the length polymorphism, not on the sequence polymorphism. अब दुनिया का the first case of DNA profiling. So this was way back in 1986. So the Leicester murder case. In this case, 2 लड़कियां, teenage girls, they were probably sexually assaulted and strangulated. And the modus operandi in this case was very similar. At this time, the British police, they were trying to investigate this case and they were trying to find out इसको करने वाला कौन है. At that time, DNA technology was not available. DNA technology available नहीं थी. उस समय Sir Alex Jeffreys came forward with his DNA technology and with the claim that it is possible to identify a person if we assume that the person is from this Leicester town itself. So samples were collected from various people and DNA profiling was concerned. Was done, and finally when the DNA profiling results came, what was the result is that it matched with none of the person. It matched with none of the person. वो किसी से मैच नहीं किया. शहर में कितने लोग थे, जितने मेल्स थे, सबके साथ DNA प्रोफाइल मैच की गई, पर वो किसी से मैच न की गई. तो क्या मतलब हो सकता है इसका? If I ask from the पुलिस वालों से पुलिस पर्सन से, तो क्या मतलब हो सकता है इसका? अगर किसी से मैच न करे प्रोफाइल, वो शहर के लोगों से, हम यही असूम करेंगे कि वो व्यक्ति शहर का नहीं किसी और शहर का होगा. ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पर उनका लोकल इंटेलिजेंस इतना नेटवर्क इतना अच्छा है, उनको ये पता चला कि शहर के किसी कोने में कुछ व्यक्ति बड़ी पार्टी कर रहे हैं, कुछ मजे कर रहे हैं. तो वहाँ पे जाकर उन्होंने तभी डीप प्रोब किया कि इतना पैसा कहाँ से आया. तो उसने बताया कि अमुक व्यक्ति ने अपनी जगह अपना ब्लड सैंपल देने के लिए हमें ये पैसे दिए. तो यहाँ से उनका केस का फल रखा हुआ. जिस व्यक्ति ने वो पैसे दिए थे उसको ब्लड सैंपल लिया गया एंड इट वॉज मैच्ड, उसके साथ मैच किया और दोनों केसेस की प्रोफाइल के साथ मैच किया गया. और एक लोकल क्रिमिनल था जिसका नाम कॉलिन फिशबॉम था और उसके बाद ही वो कन्विक्टेड फॉर बोथ मर्डर्स. एंड ये पहला केस DNA का था जिसने सक्सेस विटनेस की 1986 में. ये यूके का केस है. हमारे केस में फर्स्ट केस ऑफ DNA which was actually done, it was the Rajiv Gandhi assassination case, जहाँ पे the various bits and various pieces of body they was put together with the help of DNA profiling. So ये थोड़ा DNA की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इसमें जो है कि 1980 में DNA की टेक्नोलॉजी थोड़ी शुरू हो गई थी. 85 यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे जो नजर आ रही है 1995 में फोरेंसिक साइंस सर्विसेज यूके ने स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज द DNA डेटाबेस. और हमारे देश में आज तक DNA डेटाबेस नहीं है नेशनल लेवल पे. सो 1995 में 1986 87 88 के आसपास उन्होंने DNA प्रोफाइलिंग शुरू कर दी. 95 में डेटाबेस आ गया. USA ने कोडिस DNA डेटाबेस, द क्रिमिनल DNA डेटाबेस 1998 में शुरू कर दिया. हम 2023 में चल रहे हैं, अभी तक हमारा DNA डेटाबेस नहीं आया. So as far as the जो टेक्नोलॉजी कंसर्न है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है RFLP, ये सारा कुछ ये अब आउटडेटेड हो चुका है. The latest technology which we use at the moment, जिस समय जितनी भी फोरेंसिक लैब्स इंडिया में है, वर्ल्ड में है, वो यही टेक्नोलॉजी यूज करती है. जो लास्ट वाली है मल्टीप्लेक्स STR 50% गाइड्स. So multiplex STR technology is the technology which is used currently by the entire forensic domain in the world. अब कहाँ फोरेंसिक DNA टाइपिंग आप यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैचिंग सस्पेक्ट विद द एविडेंस. अगर आपके पास एक सस्पेक्ट है, उसको आपने एविडेंस के साथ कंपेयर करना है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. उसके बाद पैटर्निटी टेस्टिंग. आपने डिटरमिन करना है कि उस व्यक्ति का फादर है कि नहीं है. सिमिलरली पैटर्निटी टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं. इसी तरह से मास डिजास्टर्स. मान लीजिए जैसे हमारा प्रदेश है, उस पर काफ़ी लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाते हैं, अवलांचेस आ जाते हैं, तो बॉडी जब आप मिलेगी काफ़ी लोग मर जाएंगे और उसमें म्यूटिलेटेड बॉडी मिलेंगी, पीसीज मिलेंगे. आप उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिजास्टर्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हो बाकी रेडियस के साथ. इसी तरह से हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशंस कैन आल्सो बी डन विद हेल्प ऑफ DNA प्रोफाइलिंग. इसी तरह से मिसिंग पर्सन्स के लिए भी DNA प्रोफाइलिंग आप यूज़ कर सकते हो, जो कि हमारे देश में थोड़ा लैकिंग है. जैसे हमारा कोई व्यक्ति मिसिंग हो जाता है, FIR दर्ज हो जाता है कुछ समय के बाद, तो उसको ढूंढने उसकी फोटो सर्कुलेट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर क्या हम उसका कोई DNA सैंपल लेके रखते हैं?
उसका कोई टूथब्रश, उसका कोई रिंग, या उसके घर में उसकी आइटम पड़ी हो, स्पेक्टिकल्स कुछ पड़े हो, वो उसका डीएनए का सोर्स हो सकता है। अगर हम वो लेके रखें, इफ यू कैन क्रिएट अ डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम दैट, वो डीएनए प्रोफाइल आप बाद में यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई आइडेंटिफाइड बॉडी में उसके साथ कंपेयर करने के लिए कोई स्केलेटन आपको मिलता है, वो चीज़ हमारे देश में भी लैकिंग है। इसी तरह से मिलिट्री डॉक्टर है, इस तरह से आप आर्मी में जैसे जो कम्बैटेंट्स का डीएनए प्रोफाइल वगैरह बना के रख सकते हैं। जो लास्ट इंपॉर्टेंट है वो कन्फ्लिक्टेड फैलेट डीएनए डेटाबेस, जो क्रिमिनल डीएनए डेटाबेस है, वो क्रिएट करने का है, जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी से किया जा सकता है, पर हमारे देश में सैडली वो नहीं किया जा रहा है। अब डीएनए प्रोफाइल की अगर बात करें तो मैंने इट्स ऑल अबाउट कंपेयरिंग द प्रोफाइल्स। डीएनए प्रोफाइल आपको एज सच कुछ नहीं बताएगी ये कौन व्यक्ति है, ये तभी बताएगी जब आपके पास कंपैरिजन के लिए कुछ होगा। इफ यू हैव समथिंग फॉर कंपैरिजन, देन ओनली यू कैन टेल वेदर देयर इज समथिंग मैचिंग और नॉट मैचिंग। सो जो मैंने बात पहले बताई कि एज सच इट मींस नथिंग, और it uses the non-coding part of the DNA, which addresses the concern of criminal DNA database. अब एक बड़ी बात ये आती है कि what DNA can do, what are DNA results like? ज़्यादातर एक DNA is presented as DNA is a magic wand, क्योंकि आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए आपको DNA सारा कुछ बता देगा। अगर आप गूगल पे भी जाके डीएनए अगर सर्च करते हैं, फिर गो एंड सर्च ऑफ गूगल डीएनए, तो क्या आएगा? सबसे पहले सर्च क्या आएगा? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड नहीं आएगा, डेली न्यूज एनालिसिस। मैं सुधीर चौधरी टीवी का डेली न्यूज एनालिसिस आ जाएगा कि लिटमस टेस्ट है, डीएनए कुछ भी टेस्ट कर लो, सच झूठ सारा कुछ डीएनए कर देगा। चलो ये बात करें, डीएनए टेस्ट मींस टेस्ट फॉर ट्रूथ, बट डीएनए हर एक चीज नहीं कर सकता। डीएनए के लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट चीज है कि डीएनए तो बताएगा आपको मैचिंग है नॉट मैचिंग। सबसे पहले नो मैच और एक्सक्लूजन। तो मान लीजिए पर्टिकुलर लोकस में किसी की व्यक्ति की प्रोफाइल में आ रहा है, जिसका डिजिटल डेटा बेसिकली 11 एंड 12, और जो आपका क्वेश्चन सैंपल है उसमें आ रहा है 10 एंड 13, इट सिंपली मींस इट इज नॉट मैचिंग, इट्स नॉट मैचिंग। देन मैच और इंक्लूजन, यहाँ पे 11 आ रहा है, 12 आ रहा है इन द नोट सैंपल, एंड इन द क्वेश्चन सैंपल 11 12 आ रहा है, दैट मींस इट इज इंक्लूडिंग, इट इज मैचिंग। इसमें जो एम्पलीट्यूड है, हाइट डज नॉट मैटर, दैट इज बेसिकली द इंटेंसिटी ऑफ डीएनए व्हिच इज प्रेजेंट। देन फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स। अब इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स बात बीच में आई थी टच डीएनए की, अगर आप किसी चीज को टच करोगे उसके ऊपर डीएनए प्रोफाइल आ सकता है। अब ये जो पॉइंटर है इसको मैंने टच किया है, अब इसको सारा दिन में काफी लोग टच करेंगे, आई थिंक 10 20 30 पीपल विल टच इन द एंटायर डे। सो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये बोलें इसमें से मेरी प्रोफाइल निकाली जाए, इट इज नियर टू इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। अल्टीमेटली मैंने आपको पहले बोला दैट वी हैव स्प्रंग आउट फ्रॉम, जो हमारी आज करोड़ों की पॉपुलेशन है ना, शायद 10 एक हज़ार लोगों की पॉपुलेशन से सारी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ी है पिछले 10-20 हज़ार साल में। अगर हम उस पर जाते हैं, व्हाट डज दैट मीन? ऑलमोस्ट 99% ऑफ आवर डीएनए सिमिलर। जो 11 एंड 12 है ये किसी और व्यक्ति में भी 11 और 12 हो सकते हैं, तो तब हम 13 मार्कर्स इस्तेमाल करते हैं, तब हम कर सकते हैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज बिकॉज वी हैव अ वेरी वेरी सिमिलर डीएनए, जब हम ये सारा के लोगों का डीएनए एक चीज पे आ गया, उससे जो डीएनए प्रोफाइल आएगी दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, अ मिक्सचर, मिक्स्ड प्रोफाइल, जिसको इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होगा। और कई बार क्या होता है कि एविडेंस बहुत ज़्यादा डिग्रेडेड होती है। अगर आपको डीएनए प्रोफाइल बनानी है तो लगभग 400 बेस पेयर तक इंटैक्ट डीएनए आपको चाहिए होता है। डीएनए टाइम के साथ डिग्रेड करता है, अगर 400 बेस पेयर से कम हो गया, डिग्रेड हो गया, तो आपको पार्शियल प्रोफाइल आएंगे। डीएनए की कंटेंट एविडेंस में बहुत कम है, लो कॉपी नंबर है, तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल भी आ जाएंगे। सो मेनी टाइम्स द डीएनए रिपोर्ट, डीएनए रिजल्ट कैन बी इनकंक्लूसिव आल्सो। इट इज नॉट नेसेसरी कि डीएनए में से आपको रिजल्ट आए ही आए, ऐसा नहीं हो सकता। छोटी सी बात, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात कर रहा था, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। शॉर्ट टैंडम एसटीआर टेक्नोलॉजी होती क्या है? दीज आर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, शॉर्ट रिपीट्स वन आफ्टर द अदर, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द माइक्रो सैटेलाइट्स। सो माइक्रो सैटेलाइट में क्या है? एक रिपोर्टिंग मोटिव है डीएनए के पर्टिकुलर रीजन में। मान लीजिए GATA रिपीट हो रहा है, 4 GATA का रिपीट है, तो ये क्या है? दिस इज 2 से अगर 6 बेस पेयर का रिपीट है, देन इट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो सैटेलाइट।
6 बेस पेयर से बड़ा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिनी सैटेलाइट। और जो हम यूज करते हैं माइक्रो सैटेलाइट यूज करते हैं, दिस आर आल्सो कॉल्ड एज द शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। सो दीज आर बेसिकली शॉर्ट रिपीट्स वन आफ्टर द अनदर व्हिच कम इन टैंडम, सो दैट्स व्हाई दे कॉल्ड एज शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। तो दुनिया की जितनी भी लैब्स हैं यही टेक्नोलॉजी यूज करती है, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। इनकी एडवांटेजेस यही है कि दे कैन वर्क विद हाईली डिग्रेडेड सैंपल्स एंड दे रिक्वायर वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ डीएनए। देयर आर न्यूमरस एलील्स पर लोकस, इसलिए मिक्सचर इंटरप्रिटेशन भी हो पाता है। और दे आर कमर्शियली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ किट्स। वेरियस कंपनीज है जो किट्स बना के देती है, जिसको आसानी से यूज किया जा सकता है। एंड यूनिफॉर्म सेट ऑफ कोर लोसाई आइडेंटिफाइड है दुनिया में कि आपने ये लोसाई यूज करने हैं, इसके बेसिस पे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। So these are the loci which are used, which are recommended by API to your CODIS loci, combined DNA indexing system. उनका DNA indexing system है, database के लिए भी यूज किया जाता है। These are the chromosome number 1, 2, 3, 4, 5, X और Y तक। Total 23 chromosome है, जहाँ पे जिस locus में ये marker available है, this is those marker. So initially they started with 13 markers, there are 13 CODIS. Now we have the expanded CODIS. जिसमें 20 मार्कर्स है। 2017 के बाद से भी आपका एक्सपांडेड कोर्स में 20 मार्कर्स आ देयर। सो इंडिया आज तक हम यही किट यूज करते हैं जो अमेरिका में बनती है, जिसमें ये 20 मार्कर्स कवर होते हैं। नाउ एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, व्हाई इज डीएनए प्रोफाइलिंग मच एक्यूरेट एज कंपेयर टू ब्लड ग्रुपिंग। तो आज से बहुत साल पहले आप देखते हो कि सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते थे, तो सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है। ऐसे सीरोलॉजी इज अ डेड साइंस नाउ, इट हैज नो रेलेवेंस नाउ, इट हैज नो रेलेवेंस एट ऑल। सो ब्लड ग्रुपिंग, आई थिंक डॉक्टर्स आर वेरी मच अवेयर व्हाट इज ब्लड ग्रुपिंग वर्क। एंड फॉर द पुलिस पर्सनल, तो ब्लड ग्रुप हम सब जानते हैं कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, और उसके बाद अगर RH फैक्टर से कंबाइन कर देगा हम तो 8 ब्लड ग्रुप बन गए। तो दुनिया की पॉपुलेशन जो है लगभग 8 बिलियन छूरी है। अगर हम ये मान लें all the blood groups are present in equal frequency, जबकि हम जानते हैं कि B positive is very common in northern India। अगर हम ये भी assume कर लें that all the blood groups are equally distributed, then if you divide 8 billion by 8 blood groups, तो total कितना value आ गया? Almost 2 billion। So there are 2 billion people who have the same blood group, अगर हम equal frequency मान लें। तो इसीलिए जो blood grouping है, it is not a tool which will work for today's world। ये किसी क्लोज सिस्टम में, बंद गांव में, ट्राइबल कबीले के अंदर तो काम कर सकता था, अब इसका काम करना बहुत मुश्किल है। वी आर वर्किंग इन एन ओपन सिस्टम, जहाँ पे आज आप इंडिया में हो, कल USA हो सकते हैं। तो दोबारा सिस्टम मेरा टेक्नोलॉजी कैन आइडेंटिफाई द पॉपुलेशन ऑफ 8 बिलियन। सो इवन अगर हम ब्लड ग्रुप्स का DNA प्रोफाइलिंग भी करें, इफ यू गो अप टू द लेवल ऑफ द DNA ऑफ ब्लड ग्रुप्स, so the medical students they know very well there are 3 alleles which are controlling the blood groups. So this is the classical example of dominance, codominance and recessive allele. तो एक व्यक्ति का जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसके अंदर A और O दोनों का allele प्रेजेंट हो सकता है या A और हो सकता है, ये डबल A हो सकता है या A O हो सकता है। इसी तरह B वाला कैन बी डबल B और क्या बोलते हैं B O। So अगर इसके जेनेटिक्स लेवल पे अगर आप जाते हैं, if you go back to the medical students, if you can go to your +2 level or +1 level, आप Punnett स्क्वायर बनाते थे, if you have number of alleles, तो उसमें कितने जीनोटाइप्स बन सकते हैं। तो इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट दैट, n into n + 1 divided by 2। तो अगर आपके पास 3 alleles हैं जो ब्लड को कंट्रोल करते हैं, तो 3 into 3 + 1 divided by 2 equal to 6। So that total 6 type of genotypes you can get from blood groups। तो इसीलिए इसका आइडेंटिफिकेशन वैल्यू ज़्यादा नहीं है। Now, why DNA is that much precise? So DNA uses markers which are highly polymorphic, जिनमें polymorphism बहुत ज़्यादा है। So minimum 13 markers यूज करते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, इनमें जो एक लोकस है उसके ऊपर 10 से 40 एलील हो सकते हैं। 10 से 40 एलील नॉर्मली होते हैं। तो अगर 10 into 10 + 1 divided by 2, that is 55 genotypes। So there एक मार्कर आपको 55 genotypes दे रहा है। तो अगर सिंगल मार्कर भी आप DNA का यूज करते हैं जो 55 जीनोटाइप देता है, तो 8 बिलियन में से आप डिवाइडेड बाय 55 दैट गिव्स अ स्मॉलर वैल्यू एज कंपेयर्ड टू ब्लड ग्रुप। तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा लोगों को इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड मार्कर है जिसमें 40 एलील्स हैं। तो इसके अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट कम आउट टू 820 जीनोटाइप्स, 820 जीनोटाइप हो जाएंगे। और अब टोटल यूज कर रहे हैं 13 to 20 मार्कर्स। हर एक की इस तरह से 55, 50, 100 इस तरह से जीनोटाइप्स अवेलेबल रहते हैं।
So इससे पहले मैंने आपको बताया था कि all these markers they are located on different chromosomes. They are located on different chromosomes. इसीलिए जो values आ रही हैं इनको हम ऐड नहीं करेंगे. मान लीजिए 55 जीनोटाइप्स है, 200 जीनोटाइप्स है, ऐड नहीं करेंगे. ऐड करेंगे तो हार्डली 13 लोकस के 3000 जीनोटाइप्स बनेंगे. These are actually located on different chromosomes, and these different chromosomes during meiosis they are उनमें क्या बोलते हैं, they are and fertilization they are inherited independently of each other. So what is that? They are not linked to each other. इनमें linkage नहीं है. They are inherited independently of each other. So इसीलिए जो यहाँ पे rule apply होगा, that will be not addition, it will be the product rule. तो ये जितने values हैं 55, 820 जितने total markers बनते हैं, they will be multiplied with each other. तो उनको multiply करके जो value निकल के आएगी, that will be in billions. So that will give you a value that the probability of having a person with the same DNA profile or having a person with the same DNA profile will be 1 in 30 billion. 1 in 30 billion. So what is the population of the world? Is about 8 billion. So if you have, even if the population of the world goes to 30 billion, then there is one chance that 2 people can have the same DNA profile, and that is technically not possible. There is even 13 markers. जब आप 20 markers कर रहे हो तो 200 billion की population हो जाए दुनिया की, तो भी 2 लोगों का same DNA profile नहीं हो सकता, except for the case of identical twins. These are the 4 basic canons of DNA profiling जो आप use करते हैं as far as forensic DNA profiling is concerned. Each person has a unique DNA profile except for identical twins. Each person DNA is same in every cell. Now here there is something which is very important for medical doctors also who collect samples during medical legal examinations. Now you have to collect a reference blood sample of an accused in a sexual assault case. So we have seen many times the semen sample of the accused is collected. It is not necessary to collect the semen sample of the accused. Reason being, every cell of the body from head to toe will have the same DNA. So there is no relevance that you ask the accused to provide his semen samples. It is not to be collected as far as DNA profiling is concerned. The blood sample will do. So third level, the individual's DNA remains same throughout the life. It will not change during the entire life. The DNA will always remain the same. Life here means from the time of conception till the time a zygote is formed, till the time the bones decay and become dust, till the time the DNA will remain same. It will not change. Half of the DNA comes from the father and half of the DNA comes from mother. So these are the 4 canons which can use as a forensic DNA profiling. So every question which a police investigator has to put, those can be framed within these 4 canons. All the questions, the answers they come with this canon. So like if you want to identify a person, yes, it can be identified. Then if you want to do a paternity testing, half of the DNA coming from mother and half of the DNA coming from father. And similarly the DNA of the person will not change during the life, and every cell of the body has the same DNA profile. जैसे हम पहले करते थे, अगर मान लीजिए सीन ऑफ क्राइम में अगर आपको किसी का बाल मिलता है, उसको कंपेयर करने के लिए उसका बाल कंपेयर करेंगे. You can compare with the DNA, you can compare with the blood sample. So this is how the DNA technology works. जिस तरह से मैंने पैटर्न्स दिखाए आपको, एलील्स जो नजर आते हैं जीनोटाइप्स प्रोफाइल में. So there is a father, there is a mom, there is a child. So if you look at one locus, so from father, one allele will come, the second allele will come from the mother. So this is how the DNA profiles are compared in case of paternity. Now coming to the technology of DNA profiling, process of DNA profiling, there is the biology, technology and genetic which is involved in the DNA profiling. So the moment the sample reaches the lab, it goes through a process called as DNA extraction or DNA isolation. Then you have quantification, then you have the PCR amplification of the DNA. This is the biology part. Then you have the technology, that is the separation of these amplified fragments over a DNA sequencer. Then the determination of the genotype. Then is the genetics, comparison of the profiles with the question samples, generation of statistical reports, comparison with the database and all those things. So these are the 3 integral parts of DNA. So as far as our scenario is concerned, in India, this thing is done, this thing is also done. This part, comparison with the sample, is okay, its comparison is done, but statistical interpretation, that is lacking as far as the Indian, the probability of random match and all those things are lacking.
The only thing that I see which is done in India is probability of paternity or maternity. That is literally. But suppose you are getting a partial profile from a crime scene, partial profile. Whether this matches to the accused or not. What is the chance that this may be from some other person? So those things are not being done. So as far as extraction is concerned, it is a process which is very similar to our digestion. So जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट में जाता है, there are certain enzymes that work on the food, they digest the food. उसमें small छोटे molecules रहते हैं which are absorbed by the body. The same thing is to be done as far as DNA profiling is concerned, extraction is concerned. What we do is we take the tissue sample or the stain or the tissue sample or the blood sample. That is treated with a buffer which contains a particular pH, and there is an enzyme which is put, a proteolytic enzyme is put, proteinase kinase. So that is added to that material, and it is incubated at a particular temperature, say 56 degrees centigrade for certain hours. So what will happen is that enzyme acts on that stain or tissue or whatever is given, it digests that sample, it digests the protein part of that sample. So what you are getting is you are getting a solution which is containing the amino acids, it contains the what you call DNA fragments which are intact, and you get the salts and other things and sugars. Now the DNA has to be filtered out from that lysate or that solution. So that process may be accomplished by different techniques, like precipitation, maybe by filtration. And another thing is that DNA is also a charged molecule. It's a positive and it's a negatively charged molecule. So that negative charge can also be used for separating out the DNA. Once the DNA is isolated, it has to be quantified. What is my yield of DNA? A PCR reaction requires about 0.5 to 0.1 nanogram of DNA. 0.5 to 1 nanogram of DNA. 10 raised to the power 9 is minus 9 is a nanogram. So once you get DNA, you have to quantify. There are various techniques which are available for quantification of DNA. So once you quantify, then you run the PCR. Based on PCR, you amplify the fragment, the small STRs which I talked about, and those fragments are separated on a DNA sequencer, and through a software you analyze and get something which is called as the DNA profile. Then the final step that comes is the genetics, how to interpret that data which is coming out. So as far as isolation of DNA is concerned, so you have various methods, the organic method which is the most common method, then you have FT papers also, you have Biogen method, you have T-Rex method. Now the latest method which is available is the magnetic beam, which is basically using the charge which is present on DNA for separation, therefore magnetic beams. So I will not go into the details how the extraction is done, but this slide is pretty important. This is like, in my state, about 60% of the cases which come for DNA profiling, there are of sexual assault. There are some cases of sexual assault. And sexual assault, one of the most vital evidence is the vagina or the anal swab which is collected from the person of the victim. Now, we know very simply that when a swab is collected from a victim, it will contain the epithelial cells from the victim, the secretions from the victim, and along with few amount of spermatozoa which may be present in the vaginal cavity of the victim. Now, if we do the isolation directly from that DNA, the yield will be what? It will be predominantly female DNA. It will be the DNA of the victim which is present over there. But we want the DNA of the male. So what we do is we do something which is called as a differential extraction. In differential extraction, it's a step-by process. In first step, you use a very mild buffer. In that mild buffer that digests only the female DNA cells because epithelial cells are slightly weaker as compared to spermatozoa. Spermatozoa are very hardy. So once the lysis of female cells has occurred, you centrifuge out to take out the supernatant, so that will contain the female fraction of the DNA. The male spermatozoa they settle down, then they are lysed with the buffer which is much harder as compared to the previous buffer. So this is the basis of separating out male and female DNA. But my question arises over here is, when we collect a sample from the victim, and that sample is handed over to the police in wet condition, it is not desiccated, then it ultimately travels to the forensic lab in 10 or 15 days, then what exactly is the fate of the spermatozoa or the vaginal epithelial cells which are present in that swab? Because of the bacterial and fungal degradation, what happens is, the spermatozoa also lies, the vaginal cells also lies, so there is a mixing of male and female DNA. Now this technology of separating out the male and female fraction is
not work out. So you will get a DNA which is sample which is heavily compromised, which has huge amount of female DNA, but very little amount of male DNA. So in such cases, individualization of that use will not be possible. The samples are created beyond certain level. So once we run the samples of DNA on a sequencer, you get this type of data. This is called as the raw data, which is analyzed with the help of software that ultimately get a profile. So DNA's profile is on a sheet or a electrophotogram will look like this. So if you look over here, at this point, this is the phylogenetic marker. You are seeing only one X signal of this. This means only X chromosome is present. That simply means this is a profile of a female. In case of a male, there will be a Y also present. So this is all the information that a profile can give you as far as the genetics of a person is concerned. You will only tell it's a male or a female. For comparison, you require the profile of that user to match with this. So as far as the technology is concerned, we have the autosomal DNA testing, which covers almost the 99% of DNA profiling cases. Then we have the Y-DNA, which is used in certain amount in case of specifically sexual assault cases or integrated DNA cases. Then you have the X-DNA, and then you have the mitochondrial DNA. So predominantly in terms of testing, 99% of testing is the autosomal DNA. Some fraction goes for the Y-DNA testing, very small fraction for X and mitochondrial DNA testing. So we can talk about these technologies a bit. So we'll give a small example. Now suppose this is me standing here over the place. मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे अंदर जो ऑटोसोमल डीएनए है, वो किस का मेरे पेरेंट्स का होगा. So 50% of my DNA is coming from my mother, and 50% DNA is coming from my father. Where did they get their DNA from? From the maternal grandparents and paternal grandparents. They got this from great grandparents and so on. Now, I will be 50% similar to my mother, 50% similar to my father. Now I will be 25% similar to my grandfather, maternal grandfather and maternal grandmother, 25%. Then similarly from the maternal side also I will be 25% similar. If I go a generation beyond, only 12.5% similarity. So if you want to do any sort of identification which is across the generations, autosomal DNA will not work. So, but basically at the moment, if you have immediate relatives available, the best identification comes from the autosomal DNA. So, let's give one small example. One of the very important autosomal DNA cases. This was the case of murder of Mia Kathleen Subharti in 1993. She was a lead singer in the Seattle Punk and the Gates band, and she was found murdered, and the autopsy report showed that she was possibly beaten. She was beaten, possibly raped, and definitely strangulated. And when the DNA profiling was, this is a case of 1993. At that time, DNA profiling was available, but DNA database was not available in this because the case of blind rape and murder. The evidence which was present in our body was a saliva which was deposited in our body. That technology was not, DNA technology was not used at that time. So later on the DNA profile was developed. In 1998, as I told previously, USA had started the combined DNA system, the police DNA database. And when they put the sample for search in that, it didn't match with anyone. It didn't matter. So next year, the persistence always failed. So next year, when they again put the sample for testing in the database, when they searched the database, it matched because the database has grown in that year. And this ultimately matched with the person by the name of Jesus Mesquer, and this person was ultimately tried and sentenced for 36 years in 2003. So this is the power of autosomal DNA testing. So if you have a profile of a person, you can identify a person if the person is on the run or somewhere else, and if you have a DNA database, the case is somewhere else. So finally, the second thing which I cover is called the mitochondrial DNA. So, if you talk about the mitochondrial DNA,
It is a very, very small fraction of the DNA. I talk about the inheritance of mitochondrial DNA. So suppose it's B, the autosomal DNA is coming from all the ancestors. The mitochondrial DNA has cytoplasmic inheritance, it is coming only from the mother, maternal grandmother and maternal great grandmother. So this is something which is coming as a lineage. This is a marker which is lineage specific. So if you can trace these markers in certain cases where you have these people not available for testing, this can be testing can be conducted with the help of mitochondrial DNA. So I'll give you one very small example. So everyone has heard about the Bolshevik Revolution, and in this case, in Soviet in Russia, also in Russia, the aristocratic family of the Tsar of Russia, they were killed by a firing squad. Their bodies were doused in sulfuric acid, and they were buried. And for 90 years, almost about 80 years, Soviet Union lasted. And during that time, these people they were lost to history. Finally, when Soviet Union broke up in 1991, in Accredited, some skeletons were unearthed. So there were some 9 skeletons, and the classical odontological techniques and the facial reconstruction techniques, they could not be used because the bones were in very, very bad shape. And with the DNA profiling, they turned to UK for DNA profiling. And based on the DNA profiling, on autosomal DNA testing, it was possible to prove that these skeletons, the 5 skeletons, they are of a family, father, mother and 3 offspring. But the rest were probably servants and other people. But who are these people exactly? So though the paternity is being established, but it's not established who exactly these people are. So here you have to go for something which is a lineage specific marker. So they went for the mitochondrial DNA testing. So the Tsarina Alexandra of Russia, she was related to Prince Philip, Duke of Edinburgh. So what they did is, the British royal family, so they had an unbroken chain of descendants, they were an unbroken chain of descendants. So they compared the mitochondrial DNA and it matched. So it proved that this skeleton in fact belongs to the Tsarina Alexandra. Similarly, for the Tsar, the descendants of his grandmother, Louis of Hesse-Kassel, they were used for DNA profiling. But what they found is, at position number 161 of the mitochondrial DNA, or the base number 161, there were T and C2 bases available. Although there should be only one base available, there were actually 2 bases. So this is a very, very rare condition which is called as the mitochondrial DNA ectoplasmy. And so what they did is they exhumed the body of his real brother, Georgy Romanov, and when they compared, they found they had the same heteroplasmy. So having the same heteroplasmy simply means of having a very, very rare condition. It has a very, very high value for identification. So based on that, it was possible for them to confirm the fact that this in fact belongs to the Tsar of Russia. So almost 80 years after their burial, they were able to, 80 years of their murder and burial, they were able to get a burial which is befitting the royal family. So the final marker we are talking about is the Y chromosome. So everyone knows this is a small marker which is present in the body of the scanning electron microscope. This is the what we call the Y chromosome. So location is on the nuclear DNA. It's the shortest chromosome, has very few genes. It is basically responsible for formation of male specific characteristics, genders, etc. And only 1 copy per cell, and inheritance is paternal. So what is important about this paternal inheritance? Suppose this is me at the bottom. So I inherit my Y chromosome, my father, from great grandfather and from great grandfather, further beyond. So we know that we have a society, जो पितृ सत्तात्मक society है, we keep the records on the father side. So अगर हम हरिद्वार भी जाते हैं तो वहाँ के हमारे को पुराने generations का record मिल जाता है काफी सारा. तो ये Y chromosome होता है, it comes from the great ancestors unchanged. So based on that, you can do lineage based testing. So if we talk of the Y chromosome which is present in all of us, if we talk of the genetic atom from whom we inherited our Y chromosome, he can be traced back to Northern Africa, a person who lived in Northern Africa some 80,000 years ago. Every one of us has a basic Y chromosome which is from that person, and we have the variations of that chromosome
which has come up due to mutations, but otherwise we are basically from the same person. And all these types of mutations which occurred in the Y chromosome, based on that, the population has been arranged into haplogroups. So, if you look at this map, so genetic Adam lived somewhere in northern Africa. They migrated to different parts of the world, and accordingly they got segregated into different haplogroups based on the reproductive isolation and mutations. So, यहाँ पे छोटी सी चीज बताना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जो सबसे कॉमन हैप्लोग्रुप मिलता है, दैट इज द हैप्लोग्रुप R1A एंड हैप्लोग्रुप H. जो R1A है उसका ओरिजिन पे थोड़ा सा डिबेट है कि इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है या सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुआ है. जो H है इट इज फॉर श्योर इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया. जो ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, 2 हैप्लोग्रुप्स है जो मेल में मिलते हैं ज़्यादा प्रिडोमिनेटली. यहाँ पे छोटा हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम विच आकर से ऑलमोस्ट मिलेनिया ago. तो चंगेज खान के बारे में मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव हर्ड ऑफ चंगेज खान के बारे में सुना होगा. सो जिस समय चंगेज खान का साम्राज्य था 1206 से 1227 AD के बीच में, इफ यू लुक एट दैट टाइम, द न्यू वर्ल्ड वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड. नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मॉडर्न दुनिया को मालूम नहीं था. मोर देन हाफ ऑफ द अफ्रीका वाज अनएक्सप्लोर्ड. सब-सहारन अफ्रीका वाज नॉट एक्सप्लोर्ड. ऑस्ट्रेलिया वाज नॉट नोन टू द वर्ल्ड. ये उस जमाने की नोन वर्ल्ड है. दिस द क्वेश्चन. तो इसमें क्या बच रहा है? इंडिया बच रहा है, थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया बच रहा है, अरेबिया बच रहा है, यूरोप वेस्टर्न यूरोप बच रहा है और साइबेरिया बच रहा है. रेस्ट ऑफ द एंटायर पार्ट वाज अंडर द डोमेन ऑफ चंगेज खान. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द नोन वर्ल्ड एट दैट टाइम. सो दिस इज द एम्पायर ऑफ चंगेज खान. As I told previously, कि इंडिया में जो सबसे कॉमन हैप्लोग्रुप है Y का, दैट इज H एंड R1A. सो अगर हम H हैप्लोग्रुप को जिसको मानते हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी इंडिया में लगभग 30%, 30 to 40% के बीच में, 35% के बीच में मिल जाता है. आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर जाते हो, अफगानिस्तान में जाते हो, तो 10% से कम रह जाता है. उज्बेकिस्तान में पहुँचते हो 1% रह जाता है. उससे बियॉन्ड जाते हो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है. व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दैट? द सिंपल रीजन इज that India never invaded any country. We never invaded any country. Our forces didn't go to any part of the world, and there was no any sort of crimes that were committed by armies on the other world. So, but एक खास तरह का क्रोमोसोम था, Y क्रोमोसोम हैप्लोटाइप था. हैप्लोग्रुप का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है हैप्लोटाइप, which was present predominantly in 80% of the Mongolians. मंगोलिया जो कंट्री है, बीजिंग में भी मिलता था, वो तिब्बत के हिस्सों में मिलता था, समरकंद में मिलता था उज्बेकिस्तान में, वो पोलैंड में भी मिलता है, वो ईरान में भी मिलता है, हर जगह स्पोरेडिकली. जस्ट लाइक कोविड का वायरस वुहान से उड़ा, तो कैलकाटा आया, कैलकाटा में मिल गया, उसके बाद फिर आप यूएसए चला गया, वहाँ पे आपको वायरस मिल गया. एज इफ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हैज स्प्रेड देयर वायरस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम. सो दिस वाज एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड इन दैट टाइम. सो इट इज वेरी वेल नोन, जो मंगोल आर्मीज थे, दे यूज्ड टू कमिट लॉट ऑफ जीनोसाइड, मर्डर एंड ऑल दोस थिंग्स. सो अफगानिस्तान में एक आपने सुबह हमेशा से एथनिक कंफ्लिक्ट रही है अफगानिस्तान में. देयर आर 4 एथनिसिटीज व्हिच लिव इन अफगानिस्तान. सो यू हैव द पठान्स और द पश्तून्स, देन यू हैव द ताजिक्स ओरिजिनेट फ्रॉम पाकिस्तान, देन यू हैव द उज़्बेक ओरिजिनेट फ्रॉम उज़्बेकिस्तान. सो उज़्बेक्स आर बेसिकली पीपल हु केम इनटू एज मुगल्स, टर्को-मंगोल एंसेस्ट्री. देन यू आल्सो हैव द हज़ारास. सो आपने हमेशा देखा होगा देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल दिस warlords. सो इफ यू लुक एट अ हज़ारा, facial features if you look of Hazara, they are typically Mongoloid features. That what Hazaras used to claim is that they came along with the armies of Chengiz Khan, कि हम चंगेज खान की फौज के साथ आए थे हमारे पूर्वज, और हम हजार की गिनती में थी, इसलिए हजार से नाम बन गया. Hazara was settled in Afghanistan, and when the DNA profiling of this Hazara was done, the Y chromosome was tested. It was matching with the Y chromosome which is found in Mongolia. So that was basically proving कि वाकई चंगेज खान की फौजें जहाँ जहाँ पे गई है वहाँ पे अपना जेनेटिक्स उन्होंने छोड़ा है. And if you look at that, the particular haplogroup which is haplotype which comes in case of Changez Khan family is the haplogroup C3C. So in today's world, if you talk of today's world, there are 1 crore 60 lakh males on this world, or more than that I'll say, who carry the Y chromosome of Changez Khan, all the way from Mongolia to Beijing to almost Poland. Because at that time, Changez Khan's armies, they were knocking at the gates of France, Western Europe, and had Changez Khan not died, the things would have been a total different story in this world. So, I discussed very few cases, I just think about 5 or 6 minutes.
few important cases we have to discuss. So these are some practical cases which are talking from our scenario, from our state. So this is a case of DNA profiling from a product of conception in a case of incest. So in 2017, a teenage girl, she reported that she was sexually assaulted and she accused her cousin brother and her real father of the sexual assault. And it is said that she claimed that, she also alleged that some abortifacient was given to her and the family tried to cover up the story. And the only thing which the medical officer could collect was a retained product of conception, which was sent for DNA profiling. So this is what was sent for DNA profiling. So these was more than 25 small pieces. If you look at them, they are morphologically indistinguishable. इनमें कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा है कि आम या डिब्बा कुछ नजर नहीं आ रहा है. तो normally in such a sample one will think of that, okay, I'll take some representative sample, a representative random sampling. I'll take 2 or 3 samples, I'll conduct the DNA profiling and see what's down. So when we conducted the random sampling method, we took 4 samples. When we conducted the DNA profiling, these are the profiles we got. So if you look at them, they are identical profiles. They are identically the same profile. The profile is matching totally with the victim. So one would simply assume that this profile is coming from the victim itself, maybe the part of uterus or maybe something such as a tissue which is previously of maternal origin, not of the fetal origin. So one could close the case simply by this method. But what we found was, in these cases, there is also small signal of Y also coming. Small signal of Y also coming, but the entire profile was not coming because the autosomal DNA only predominantly of the mother was present. The Y indicated that there is something of fetal origin and that fetus is definitely a male. So we did the Y testing, the YSTR testing, we got the YSTR profile, but we knew that there is a Y chromosome present. But we have to get the entire profile of that fetus, then only we can fix the paternity. So what we did is, we segregated these pieces into further subsets. From a single composite 20 pieces, we identified the highest content in the sample which had the highest content of Y. And we made further subsets of that small tissue. And after putting in a lot of time and labor, we were able to get a profile of that fetus. So you can see this is the profile which is of a male, X and Y over here. And at each locus, one allele matched with the alleged father, with the father of the girl. It was matching with the father of the girl. So in fact, what she was claiming that she was sexually assaulted by her father, such stood proven because of the DNA profiling. And this is something which is probated what sort of sampling should be done in case of DNA profiling. इसको randomly profiling करके आप भेज दें, time ना devote करें तो you will end up with something which is wrong. Now another thing, DNA profiling in a sexual assault case, the minor in a hotel. So certain times what has happened because of the social stigma or fear or something like that, many a times जो sexual assault victim होता है वो सामने नहीं आता, 2 हफ्ते तक वापस नहीं आता, सामने आके रिपोर्ट नहीं करते हैं. So the medical literature is very clear about that after 120 hours the chances of getting spermatozoa in the vaginal cavity are almost negligible. So after 2 weeks, the girl, she reports that she's a 15-year-old girl. She says that she was sexually assaulted by a particular person in a guest house room. Now, the possibility of getting a DNA profile from a vaginal swab is negligible. It's simply ruled out. And the bed sheet which is lifted from that guest house is sent for DNA profiling. Now, first of all, in most of the labs, what happens is the biology lab and the DNA lab, they are separate. So the biology division, they conducted the DNA profiling, they conducted the biological examination, and they will look for the presence of semen. And they found one conspicuous stain. They did the AP testing, they did the microscopy, they came out with the report that semen was detected on the bed sheet. But if you look at this bed sheet, it has been lifted from a hotel room after 2 weeks. So if I assume, in a good hotel, the bed sheet should be ideally removed. But if I assume that it's a very, very low budget hotel, where the bed sheet has not been removed, so there might be n number of people who might have contributed their DNA onto that bed sheet in those 15 days. These might be a number of males or a number of females. So the value of n may be taken out from, maybe you get a rough value of it, but the hotel occupancy register. You can get out this is the possible value of n. So
When we conducted the DNA profiling from the stain which was identified by the biology division, what we found is that stain did not match with the accused. It is not matching with the accused. So what does this mean? This thing can be used very easily by the defense. This is how the defense works. But the n number of contributors for each possibility hai, that is always there. So until and unless you identify each and every stain and you conduct a DNA profiling of each and every stain, you cannot arrive at something, a conclusion which is just and which is scientifically correct. So what we did is, what we did is, we put in some intensity labor. So we asked them to search for various profiles which are present based on UV light and we found several stains which were inconspicuous, which was not easily visible. And when we conducted the DNA profiling of those stains, what we found is that out of that we found about 8 stains over there, and we got profiles of 5 males. And finally, from one profile, we got the profile of the victim as well as the accused. Victim as well as accused, that basically fixes the presence of both of the people in that room. So this is something one has to think about, like whether you have to exhaust all the possible possibilities or not. So if you are just going by a single stain or something like, you might be giving a wrong conclusion. Certain times, the version which is given by the victim may also be wrong. So this is a case from 2009. A 9-year-old girl, she was sexually assaulted, and at that time we had not started our DNA facility. We started the facility in 2010. Then this case was again resubmitted for DNA profiling, and when we conducted the DNA profiling, we found the only evidence which was available in this case was the vaginal swabs, and it didn't match with the accused. It did not match with the accused. It's a 17 years old accused in this case. So the family of the victim, they were not satisfied with the results. So they were apprehending that police might have changed samples or something. So they filed an RTI whether the samples can be, DNA profiling can be conducted afresh or not. So we replied very critically that yes, it can be conducted afresh, subject to availability of the DNA evidence on the reference on the question samples. Reason being, DNA technology is a destructive technique. During the process of DNA analysis, the evidence gets consumed, so it is necessary that certain amount of evidence should be saved for further testing, should the requirement arise. So then they also want to know whether it can be conducted in front of a person. We replied critically that even if conducted in the front of a layperson, it is beyond the comprehension of a layman to rectify a DNA report. So finally, they moved the High Court. The matter was sent to the High Court of Himachal Pradesh, and it was again submitted to another lab for DNA profiling, and incidentally, the same results came in from the other lab also, that it was not matching with the accused. But the inside story is that I call the unofficial version is that both of the families, they had some differences, they have some land dispute, and because of that, for the 5 days the girl didn't identify anybody. For 5 days she didn't identify anybody. On the 6th day she identified this is the person.
And whenever police used to try to find out something from that girl, the family used to see her that don't disturb our girl. And in this case also, the recently died detection was layered voice analysis. We have the facility for layered forensic psychology also. Layered voice analysis was also conducted in this case. And the accused, again, almost about 20 years from the incident, the layered voice analysis also indicates that this person is not involved in that case. So, certain cases, the version of victim may be wrong. In those cases, DNA will definitely help you to arrive at the right conclusion. So this is because our state is, because of the Himalayas, also famous for trekking and skiing and all those things. So many times what happens is this trekkers from European countries or Americas, they come to Himachal Pradesh for trekking. So there's a range of mountains, very high mountains, which is called as the Himalayas. So there were two French nationals who went missing. तो 2017 के आसपास 2 फ्रेंच नेशनल हैं, वो घूम गए धौलाधार माउंटेन रेंज में, और चंद महीनों के बाद वहाँ पे कुछ बोन्स मिली, कुछ जो हमारे वहाँ पे नदी शेपर्ड्स होते हैं उनको बोन्स मिली. These bones were sent for DNA profiling. So बड़ी मुश्किल से इसमें बोन्स की हालत बहुत खराब थी. आप देख सकते हो कि इसके ऊपर मॉस ग्रो कर रहा है, काफ़ी पुरानी बोन्स थी, फ्रेश वैसे भी लग रही थी. So when we conducted the DNA profiling, we compared it with the direct reference sample जो हमारे को मिला था. तो इसमें क्या होता है कि उसका टूथपेस्ट वगैरह का प्रोफाइल फ्रेंच गवर्नमेंट ने बना के हमारे को प्रोफाइल भी भेज दिया. The profile was sent to us and when we compared it was not matching. Now the question arises, तो ये है कौन है? ये फ्रेंच है, कोई और है, कोई है? So here we use the Y chromosome testing. So what we did is we did the Y STR analysis. So we compared with the entire database which is available of this is the search database YHRD के नाम से. We compared with the profiles, YSTR profiles which are present in that database, and what it clustered our sample to the Indian and Tibetan region. So when we did the cluster analysis, so if you look at this, the sample, our question sample was matching with the Austro-Asiatic population. So definitely हमारा जो population था वो Tibeto-Burman region का था. It was definitely not a French person. So this is how we solved this case. So as far as this is I think my second last slide. So as far as standards in DNA testing is concerned, so the reagents which are to be used in DNA one is to ensure that ISO 18385 standard should be used for DNA profiling, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं होता है. Isolations and processing of DNA they should be separated by time or space. What is time and space separation? Suppose अगर आप क्वेश्चन सैंपल एनालाइज कर रहे हो वो अलग जगह पे होना चाहिए, रेफरेंस सैंपल एनालाइज कर रहे हो वो अलग जगह पे होना चाहिए. अगर आप स्पेस से सेपरेट नहीं कर सकते तो टाइम का गैप देना पड़ेगा. आज आप क्वेश्चन सैंपल करो, कल आप रेफरेंस सैंपल करो. दे शुड बी सेपरेटेड बाय टाइम एंड स्पेस. दे शुड बी चेक्स एंड कंट्रोल एट एवरी लेवल, and the work is at nanogram and micro level, and it is about not identifying a molecule, it is about looking up in the molecule, looking inside the molecule. And quality assurance is again a must in case of DNA profiling is concerned, because हमारे सिनेरियो में क्या है कि there is a forensic lab which is a government forensic lab. A person is appointed as an expert. The day the person is appointed as an expert, by law he is an expert. He is deemed an expert. Under section 293 he is an expert. और वो उसको कोर्ट में खड़ा होकर बोलता है एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, आई एम एन एक्सपर्ट. बट वास्तव में जो पर्सन एक्सपर्ट है, so those things can be only assessed if there is a third party assessment. So it is very necessary to go for accreditation. So our quality assurance. तो quality assurance में जो है कि आप इंटर लेबोरेटरी कंपैरिजन करो सैंपल्स का, आप प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करो, एंड डेफिनेटली शुड गो फॉर ISO 17025 accreditation, which is the standard for the testing laboratories. So with this I conclude my presentation. Thank you so much for the patient hearing. I took a lot of time. Thanks sir for very good. Thanks sir for. तुमने देखिए माइक को, अरे जाके चला. Thanks sir for very good informative lecture on DNA profiling. My question is from you, what are the instructions to police officers and medical officers to collect and preserve samples for DNA
Sir, I'll be definitely covering this another lecture tomorrow, so I'll be definitely touching that aspect of how the sample has to be collected and how it has to be preserved. But I'll give a very simple example. During the COVID time, हम Pfizer वाली वैक्सीन को इंडिया में यूज नहीं कर सके. One of the main reason was that वो बड़े लो टेम्परेचर पे स्टोरेज मांगती थी Pfizer वाली जो वैक्सीन थी, कोविड Pfizer की जो वैक्सीन थी, और हमारे पास इतनी अच्छी कोल्ड चेन हम मेंटेन नहीं कर सकते थे. The same applies for our forensic samples also. You know, medical samples पे जहाँ पे life is depending, अब उनके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना मुश्किल हो रहा था, उस तरह की कोल्ड चेन. Is it possible to maintain a cold chain for forensic samples के वो मेंटेन होती है? हम scene of crime से blood sample उठाते हैं, या victim या accused का blood sample लेते हैं, या swab लेते हैं. क्या हम sample को ढंग से preserve करते हैं? हम collect करते हैं. What we are exactly doing is, हम क्या करते हैं? As per the law, it is requirement that there should be a chain of custody. ये होना चाहिए कि डॉक्टर ने कलेक्ट किया, सील कंडीशन में पुलिस वाले को हैंड ओवर किया, पुलिस वाले ने सील कंडीशन में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लैब तक वो पहुंचाया, एंड बियॉन्ड दैट लैब से भी सब कुछ उसी तरह से वापस जाता है. नाउ इन दैट सिचुएशन एक सैंपल को कोल्ड चेन मेंटेन नहीं कर सकते. तो अगर आपने सैंपल को प्रिजर्व करना है तो बेस्ट थिंग इज टू डेसिकेट अ सैंपल. आपको किलोग्राम्स में एविडेंस नहीं चाहिए, आपको माइक्रोग्राम में एविडेंस इज मोर देन इनफ. What is required is any sample which you collect, maybe a blood sample, maybe a blood sample from the roadside, a semen sample or a swab sample, whatever is there, it should be desiccated. So if you desiccate a sample, उसको dry कर दिया अगर आपने उसको sample को भेजा, तो उसमें sample से definitely result आएंगे. आपके पास एक vaginal swab है, medical officer ने collect कर दिया है, he has performed his duty, he has collected, he has sealed, he has maintained the chain of custody also. But by the time that swab reaches the lab, there is bacterial and fungal growth on that. अगर जैसे मेरठ का टेम्परेचर है, मान लीजिए आज के 40 के आसपास जाता है, 40 डिग्रीज में अगर एक स्वाब को अगर आप वेट स्वाब को एनारोबिक परफेक्ट एनारोबिक कंडीशंस आप दे रहे हैं फॉर द बैक्टीरिया एंड फंगस टू फीस्ट ऑन दैट एविडेंस. तो उसके लिए ये है कि डेसिकेशन इज अ वॉचवर्ड फॉर सैंपल्स, एंड टुमारो विल डिस्कस थिंग्स लाइक हाउ द सैंपल्स शुड बी कलेक्टेड. विल डिस्कस दोस थिंग्स very clearly on that. Questions from this? Any queries for this regarding DNA collection? सर ये सेक्सुअल अटैक केस में महिला की डॉक्टरी कितने घंटे के अंदर होनी चाहिए? कब तक मिलेगा डीएनए के लिए? ये सर इसमें मेडिकल लिटरेचर होता है कि 120 घंटे तक आपको लेने के चांसेस हैं गलत के एविडेंस की बात होती है. पर आज तक जो इस पर हमारे इसमें लॉ क्लियर नहीं है कि अगर वो एलिगेशन लगाती है 10 साल पहले हुआ तो भी मेडिकल ऑफिसर को एग्जामिनेशन करता है. पर अगर साइंटिफिकली अगर आप देखते हैं 120 घंटे के बाद एविडेंस मिलना मुश्किल है. Very much sir, for a nice and informative talk. In the continuation to the next level of the session, next lecture we are having one more speaker, Dr. Parul Kareshinam, Assistant Professor, Department of Oral Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology, Sarda University, Noida. She is going to deliver a talk on the dental bioarchaeology. I would like to request for this session to chair the session that is Professor Dr. Vijay Verma sir, Dean Academics, Head Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Subharti Dental College, and Dr. Suhasini GP, Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology and Oral Microbiology, Subharti Dental College. Ma'am, please. And I would like to invite Dr. Parul Krishna ma'am to deliver a talk. Thank you ma'am. Dr. Professor Vijay Verma sir is going to join the session. So he is coming to know it. Dr. Parul Kareshinam has pursued her Masters in Forensic Odontology for KU Leuven, Belgium, Europe in 2015. She received the fellowship of Pierre Fauchard Academy in 2017 and completed certificate course on child protection and children's rights in theory and practice from Harvard and infection prevention control for novel coronavirus
COVID-19 from WHO in 2020. She delivered more than 30 lectures as guest speaker in various national and international conferences, CDE workshop, etc. She has published more than 30 papers in national and international journals of repute. She is the member of various organizations like IPAFO, KIES US, UK, ASFO, IAOMP, IAFO, IPAFNS, FOHR. She is also associated with Jia Tan University, Shanghai, China as a visiting faculty in oral pathology. Welcome you, ma'am, and you can proceed with the session. A very good evening to all of you. First of all, I would like to welcome all the respective police officers here. A brief introduction, I think I will give of myself more. So, I am a forensic odontologist. I am also a member, this is for police officers to know that how am I related and what am I doing in forensic odontology. I am also a member for GBI, for Interpol, so I represent India. Last year I represented at headquarters Lyon in France, before that in Singapore, and after next week I am again going to Singapore for this year presenting my work in Interpol. I am also principal investigator for an artificial intelligence for oral and maxillofacial oncology, the first master's that I have done with WHO. So I just presented my work maybe 1 month back at Harvard, how artificial intelligence can be used in detecting the cancer. Now, that I finished my brief introduction, I am also pursuing my PhD right now with Shaka. I have relocated to my own country and I'm proud to say that I can present my country now because earlier 7 years I was in Shanghai, China, and before that in Belgium. So first of all, to begin the session, thank you Director IQC, thank you ma'am, thank you others sir for giving this wonderful opportunity to come and talk to you all. Jai Hind to start with. मेरे पापा कर्नल हैं, आर्मी से तो थोड़ी देशभक्ति है कि लगता है कि हम जब काम करें तो अपने लोगों के लिए करें। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी बाद में आती है, पहले आती है डेंटिस्ट्री। Keeping in mind the limitation of time, it is a 1-hour lecture which I am going to cut down in 30 minutes precisely, खाली आप लोगों के लिए जो कि आपको फील्ड वर्क में हेल्प करेगा। Audience told to me was students of medical and law and forensic sciences. There was a lot of description out there जो कि जरूरत नहीं है। As a police officer आपको क्राइम सीन में क्या देखना है, क्या एनालाइज करना है, हमें कब बुलाना है, ये 3 चीजें आपको यहाँ से लेके जानी है। To begin with, if I talk about what is bioarchaeology, scientific way it would be something to say आपके past में क्या हुआ। It's important for us to know what happened in our past to the living people and deceased. Why it is important? Because that information gives us to make a profile. And what kind of profile? Sex, that is gender, age and identification. And why is it important? Because police come to us and ask us, ये किसका है? We are left with these, you get all these kind of skeletal remains, dead remains, dead bodies, and you want to know and identify it. So we can help you in profiling. Now, the term was given in 1970 by John Clark. Bioarchaeology analyzed burials, prehistoric diets, dental anthropology, health and nutrition, paleopathology, paleo-demography, search clues about population, occupation and behavior. As I said in the beginning, मैं theory में नहीं जाऊँगी, practical में जाएंगे, हम लोग focus करेंगे. Focus हमें क्या करना है? People come to police and say कि हमारा someone is missing, identify it, right? आपके पास कुछ नहीं है identify करने के लिए. Now, when I say कुछ नहीं है, medical perspective से हमारे respective forensic medicine experts हैं यहाँ पे. Sir from AIMS, we had a very good lecture from Sharma sir, forensic science lab. Now, since I am a forensic odontologist, I am going to tell you why the teeth is important. Value क्या है teeth? सबको लगता है दादी तो है, दादा करना क्या है? Let me tell you officers, एक single teeth, one single teeth can not only give you information based on DNA. DNA तो हम निकाल ही सकते हैं, प्लस प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। प्रोफाइलिंग में क्या क्या कर सकते हैं? एक ब्रीफ देती हूँ जिससे आप लोग एंड तक सोए ना, बिकॉज ऑलरेडी सवेरे से इतनी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ब्रेन ड्रेन हो गया है। एंड मैं पिक्चर्स भी दिखाती जाऊंगी, तब आप इजीली उसको कोरिलेट कर पाएंगे।
When we say DNA यूनिक है, DNA यूनिक है, yes. फिंगरप्रिंट यूनिक है, फिंगरप्रिंट यूनिक है, yes. आप में से कितनों को पता है कि टीथ भी यूनिक है? किसी को? नहीं सर, टीथ every individual, every pattern is unique. We can find out from teeth whether the baby was born still or alive. मरा हुआ था कि जिंदा था at point of birth. We can find out from smile photograph. We can find out from each kind of teeth of filling. जो सब मेरे आदर्श सर ने कुछ फोटोग्राफ दिखाई थी on comparison on X-ray. Lot of things. जब आपके पास कुछ नहीं बचा है in a sense, again there is a situation of mass disasters. It could be anything. It could be earthquake. It could be airplane crash. It could be fire. जहाँ पे your body is burned but your teeth is not. Why? Because of the chemical properties of the teeth. And that is why we can also proudly say that teeth could be a fossil. And why not? What is a fossil? That is the term of my topic today, biology. जो mineralized होता है. And teeth का जो structure है, it's basically the structure, the enamel, the structure of the tooth is mineralized structure. Even in high condition of burnt, charred body, even if you get the jaw, even if you get the teeth, we can do the identification part. इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है पुलिस ऑफिसर्स के लिए ऑन साइट जो सबसे पहले पहुंचते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, जॉ का फ्रैगमेंट मिल रहा है, टूथ मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, आप उसको प्लीज कलेक्ट करें. Now, in children also, if you get the remains of children or dead body, in that also we can identify. During the periods of insufficient nutrition or diseases, we can identify from the structure of the teeth, from the characteristics of the teeth. It lines from the developing teeth, the size and shape of those lines can indicate how long a person may have suffered from lack of food or infection. इसकी भी फोटोग्राफ में एंड में दिखाऊंगी. हर टाइप की डिजीज कुछ होती है, जैसे सिफिलिस है, HIV एड्स आपने सुना है, सिफिलिस उस टाइप की होती है. हर टाइप की डिजीज में टीथ में चेंजेस आते हैं. मैं आप पिक्चर दिखाती जाती हूँ तो इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. So this is the definition when we say combination of odontology or archaeology with the science, that combining the scientific techniques of dental biology with the investigative strategy of forensic health to identify the missing person remains and solve the crime. First three questions that we have to ask ourselves, including officers and our forensic experts or forensic doctors, are the remains actually bone, microscopic or microscopic study? One of the presentation we saw जिसमें वो tiger वाले या lion वाले case में remains थे. First of all, we have to find out that are the remains human, appearance and DNA if available, and are the remains ancient or modern? Look for clothing, historic remains and teeth. And if human, then we proceed to identify. Since I am a forensic odontologist, I will be focusing on the head, neck and skull and teeth. Not going into this detailed flow chart, but just to tell you brief कि teeth से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं. Hereditary component, population relationship, evolutionary dynamics, किस family से आ रही है, role of string food, किस type का खाना खाता था ये person, pattern of tooth wear, tooth का जो pattern loss हुआ है, हमारे टर्म्स में उसको एट्रीशन, अब्रेशन बोलते हैं. मेरे टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में आपको जानने की जरूरत नहीं है. आपके लिए बस इतना जानना जरूरी है कि टीथ का कुछ लॉस हुआ है, टीथ के स्ट्रक्चर का लॉस हुआ है. हम उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं किस टाइप का फूड खाता था, उसके अंदर किस टाइप की पैथोलॉजी थी, क्या टाइप का डिजीज था, डाइटरी बिहेवियर क्या था, एडिक्टेड था किसी चीज से. ऑल दिस आई विल बी शोइंग. कल्चरल बिहेवियर में देखेंगे पास्ट में क्या होता था. They used to put some kind of tattoos and rich people used to put some kind of jewels. आज present world में क्या होता है. And the environmental and developmental effects, stress हम सब में होता है. स्ट्रेस से क्या फर्क पड़ता है हमारे teeth पे. As I said, this topic itself is very vast. And then I had to do it in 1 hour, so मैंने उसको उस हिसाब से बनाया था. That first I will discuss the fundamental of dental biology, then forensic and biological profiling in dental biology, how to make a profile of a person, एक individual का profile just based on the teeth, and lastly some important cases and some research work done. To
इसको जल्दी से हम लोग रैप अप करेंगे अब। तो सिग्निफिकेंस ऑफ टीथ मैंने पहले ही आपको बता दिया, प्रिजर्वेबिलिटी कि टीथ जो है हमारा सारा टेम्परेचर सब कुछ सस्टेन कर लेता है। ऑब्जर्वेबिलिटी, जरूरी नहीं है टीथ का पेशेंट के अंदर होना, इवन सिंगल टूथ जो आपको क्राइम में बाहर दिखता है, डिजास्टर में बाहर दिखता है, कैन हेल्प अस। हम टीथ का इंप्रेशन बना सकते हैं जो कि काफ कहलाती है। सर ने वो बोला कि बाइट मार्क्स उस समय नहीं था तो पोटैटो में बाइट लिया था। निर्भया केस 2012 में हुआ था। एट दैट मोमेंट I had done my first master's thesis from AGPJ Lucknow on DNA from bite marks from saliva on human skin. अपने आप में वो फर्स्ट टाइम इंडिया में हुई थी। तो एम्स में उस समय मूर्ति सर ने वर्कशॉप कराई थी SOPs के लिए, तो वहाँ पे बुलाया था ये बाइट मार्क वगैरह देखने के लिए उसके लिए। सो उस समय से ये चला आ रहा है कि बाइट मार्क शुड बी स्टडीड। बट आज की डेट में अगर हमसे कोई पूछे, वी आर प्रैक्टिशनर फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट, मैं अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टैंडर्ड्स की मेंबर भी हूँ। अगर हमसे आज की कोई डेट में कोई पूछेगा कि बाइट मार्क वैल्यूएबल है, तो ऑनेस्ट आंसर होगा अपने आप में अकेले नहीं। दैट मीन्स एज ए पुलिस ऑफिसर यू शुड नो कि मेरा खाली ये कहना कि इसका बाइट मार्क इससे मिलता है सफिशिएंट नहीं है। फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट की पूरी रिपोर्ट साथ में लगेगी, क्योंकि जो हम एनालिसिस करते हैं बाइट मार्क की हम कभी किसी और दिन पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल कि मैंने आपको इसलिए बताया कि ये प्लास्टर कास्ट वगैरह का मतलब क्या होता है, इंप्रेशन वगैरह लेना। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक ऑफ टुडे। एंड वेरिएबिलिटी चेंज नहीं होता है जेनेटिक्स से, हमारे टीथ डिफेक्ट्स जो चेंज होते हैं इफ यू आर डिजीज, कोई डिजीज हुई है सो दैट विल हेल्प। एंड एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर फैक्टर दैट आई सेड, मास्टिकेशन किस टाइप से आप च्यू करते हो कौन सा फूड, एंड किस टाइप के माइक्रोबायोटा मतलब कैल्कुलस और प्लाक, दैट आल्सो विल डिस्कस। सी वी कैन मेजर टूथ, एंड अगर टूथ के बेसिस के डायमेंशंस पे वी कैन से इट इज अ मेल और फीमेल। जनरली फीमेल टूथ्स आर बिगर और सॉरी मेल टूथ आर बिगर देन दैट ऑफ योर फीमेल टूथ। That part, how do we do? That is more scientific. Let's not discuss into that. But these dimensions are showing this is how we do the measurements. Then, आप में से सबने कहा कि हाँ हमें पता है सबके टीथ यूनिक होते हैं। Yes, टीथ यूनिक होते हैं। ये this is called directional asymmetry. Everyone wouldn't have this. This is called fluctuating asymmetry. मैं आपको फोटोग्राफ दिखाती जाती हूँ किस किस डिफरेंट टाइप के टीथ जब आपके पास आएंगे एट द क्राइम सीन। हम चाहे उसका काफ बनाए चाहे फोटोग्राफ बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहे एक्सरे में आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा। मैं क्विकली पास कर रही हूँ फोटोग्राफ, आपको अपने बस ये माइंड में चलना है ये हर टाइप के केसेस आपको मिल रहे हैं। इफ यू कीप दैट थिंग इन योर माइंड, दैट थॉट, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड फास्टर। देन these are called meerut, छोटे टीथ इन सेंटर ऑफ योर सेंट्रल इंसाइजर, वेरी peculiar, हर किसी में नहीं मिलेंगे। फ्यूज टीथ कॉमन नहीं है, दो दांत जुड़े हुए होना। कैरेटली cusp, particular cusp, not going on to the scientific, but you should know this will be found in Caucasians. Now reason why you should know, as police officers we know you will be the first one to go to the crime scene. Now in the time or era of globalization, जहाँ पे कितना मूवमेंट है, people going from India abroad, people coming from abroad to India for tourism, for job, whatever, कुछ भी kind of disaster होता है। Let's say plane crash ही हो रहा है, एक plane crash हो गया, buildings के ऊपर open disaster का केस है, जहाँ पे disaster victim identification करना है। उस plane में we know it was something let's say coming from Europe, कितनी सारी countries है यूरोप में, identify करना है। That is what we do in Interpol, right? कैसे करोगे? So you should know कौन से features किस type की population में आते हैं। So that's our job to do. But that's what we need help from police officers who are here, who go back and talk to their seniors and let them know कि कितना important है इसका। Africans will have this typical kind of ridges or tubercles. Modern population will have this kind of shoaling. This is particularly scientifically teeth के अंदर छोटा सा gap होता है अंदर के side में, lingual side में, that is called shoaling. Then this is an extra cusp that you find on these teeth again, which is not normal, which you will see basically in Asians and Europeans will have less of this. Then this is a particular feature you will find only in Eskimos. Enamel का एक क्वेश्चन नीचे आ जाता है, that is called enamel extension. Enamel is the white color part जो हमारा teeth होता है।
बायलेटरल ट्विंकिंग, टीथ का पर्टिकुलर टाइप से रोटेट होना, कोई भी टीथ कहीं पे भी रोटेट हो सकता है, बट दिस टीथ रोटेटिंग इन दिस मैनर इज सीन ओनली इन नेटिव अमेरिकन एंड अमेजोनियन इंडियंस। हमारे माउथ में 32 टीथ होते हैं, सबको पता है, जिसमें से एक मोलार्स होता है जो हेल्प इन च्यूइंग। ऊपर वाला मोलार के ही 3 रूट होते हैं, बट नीचे वाले मोलार में 3 रूट होना इज नॉट कॉमन, राइट? सो दिस यू विल फाइंड ओनली इन पीपल फ्रॉम अलास्का एंड कनाडा। कमिंग टू एनवायरमेंटल, एनवायरमेंट कैसे अफेक्ट कर रही है हमारे टीथ को? डाइट एज आई सेड, नाउ सम वी ऑल नो कि हम शुगर फूड ज्यादा खाते हैं, कार्ब्स ज्यादा खाते हैं, तो हमको क्या हो जाता है, केरीज हो जाती है। सो हैविंग दिस काइंड ऑफ केरीज, अ लॉट ऑफ केरीज इन द माउथ, a lot of caries in the mouth will, as a dentist I would say he is a good patient or she is a good patient, I am minting a money. As a forensic expert I say wow I got this feature which is, इतना सारा caries होने का मतलब ये है 2 things, profiling करने जा रहे हैं हम इसकी। 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये बच्चा है या बहुत बुरा है जो कि डिपेंडेंट है किसी पे, ठीक है? That is called dental neglect in our language. Dental neglect हुआ है क्योंकि बच्चे को भी हेल्प चाहिए, बूढ़े को भी हेल्प चाहिए। But this kind of caries you are seeing in an adult normal individual, मतलब डेड बॉडी पे बात कर रहे हैं, आपके सामने है, आपको प्रोफाइलिंग करनी है, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो डेंटल नेग्लेक्ट कर रहा था, उस टाइप की लोअर इनकम का, मतलब जो लोअर इनकम है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना डेंटल हाइजीन मेंटेन कर सके, तो आप समझ रहे प्रोफाइलिंग कैसे हो रही है। या वो साइकोलॉजिकली अपसेट बंदा था, डिप्रेशन वाला बंदा था, जो कि डेंटल नेग्लेक्ट बिकॉज ऑफ दैट कर रहा था, तो आपको प्रोफाइलिंग उस टाइप से करनी है, गो बैक एंड चेक फॉर द हिस्ट्री। ये सब वही पिक्चर्स है डेंटल कैरीज की, हाउ बैड इट इज। नाउ कंटिन्यूइंग विद दैट, जो लोग नॉनवेज खाते हैं या मांस, हिंदी में बोलते हैं ना मांस मछली, नॉनवेज ईटर होते हैं, रेड मीट ईटर होते हैं, उनकी कैरीज कम होगी बट एक्रीशन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द बाइट्स। नाउ पान मसाला, गुटखा, तंबाकू वेरी कॉमन इन इंडिया। एज एन ओरल पैथोलॉजिस्ट आई से वाओ केस, बिकॉज हमें अच्छे केसेस मिल रहे हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, यू नो प्रेजेंट कर सकते हैं एट यू नो केसेस एट लेट्स से WHO व्हाटएवर, क्योंकि हमको केसेस चाहिए। एज ए फोरेंसिक डेंटिस्ट व्हाट आई विल से वाओ अगेन, बिकॉज मेरे को क्लियरली आइडेंटिफाई हो गया है, ब्राउन पिगमेंटेशन दिख रहा है टीथ पे, प्रोफाइलिंग करने जाएंगे, ये पर्सन पान मसाला, गुटखा, टोबैको खाने की हैबिट थी इसे और सालों से खाता होगा, बिकॉज इतने एक 2 दिन में नहीं आती है ये कालरी। एज ए साइड टोबैको च्युइंग रेडिश कलर हो जाएगा, अंदर वाले साइड पे ज्यादा होगा। अगेन सिंस आई एम ओरल पैथोलॉजिस्ट आल्सो, मैं साथ में लेके चलती हूँ इन पेशेंट्स में, अगर कोई न्यूली डिजीज है जिसको आइडेंटिफाई करना है, हिस्ट्री ऑफ कैंसर, अदर यू नो लीजन्स कैन बी सीन। डेंटल फ्लोरोसिस इज अ टर्म व्हिच सेज कि आप जिस एरिया में रह रहे थे वहां पे पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा था, एक कंटेंट होता है, सालों अगर आप उस टाइप का पानी पियो तो आपके टीथ जो है येलो हो जाते हैं। Again to profiling that this person must be coming from an area where fluoride content was much high as compared to the population of another district जहाँ पे fluoride नहीं है। Carbon dating is another topic, फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। Coming to implemental behavior, now टीथ के बेसिस पे किस टाइप का प्रोफेशन था? जो ड्रेस मेकर होते हैं, शू मेकर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, बुचर होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, उनकी एक हैबिट हो जाती है नीडल मुंह में रखना, पेन मुंह में रखना, पेन मुंह में रखना, तो उनके टीथ में यू कैन सी दिस काइंड ऑफ नॉच, नॉट वेरी पर्टिकुलर, राइट? सामने रखते हैं तो रखते रखते सालों में इस टाइप की नॉच बन जाती है। जो लोग लेदर में काम करते हैं, लेदर फैक्ट्री, शू फैक्ट्री, ग्लास बास्केट्स, दे आर यूजिंग देयर टीथ, हैबिचुएट हो जाते हैं, जल्दी अपने टीथ से दबा लो, इजी हो जाए, तो उनमें इस टाइप की पर्टिकुलर attrition abrasion can be seen. This is just a picture to show कि normally no one does in today's world, tribes को छोड़ के and tribes are still doing. This is a picture of Eskimo. And what happens in the inner part of the teeth? This kind of loss of tooth structure called abrasion. Cultural behavior. पहले करते थे ये लोग लैब्रेट्स लगाते हैं दोनों साइड में, पुराने जमाने में, अभी भी ट्राइब्स करते हैं, ठीक है? अंदर क्या होता है माउथ के अंदर, यू गेट दिस काइंड ऑफ लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, फेसिट कहलाता है। अगर हम प्रेजेंट वर्ल्ड में देखें, नाउ इट्स वेरी कॉमन टू हैव दीज ऑल काइंड ऑफ टैटूज और पियर्सिंग, एंड व्हाट आर दीज थिंग्स शोइंग?
when you have a dead, remains in front of your dead person, इस टाइप की profiling से you can always go back and look कि piercing कहाँ हुई थी, you can always trace back. These are some cultural modifications. I'll just bypass something very. It was interesting. If I would have more time, we would have discussed about something happened in China. Environmental stress. As I mentioned, that if you have some particular kind of features, यहाँ पे आप देखिए there are some lines. We can determine कि fluoride वाली जो picture दिखाई थी उससे different है, tobacco से different है, because we have specially हम लोग ये पहचान सकते हैं कि this is just coming from your enamel hypoplasia, which is something to do with your environmental stress. That means ये आपकी कोई genetic disease नहीं है, ये factor, outside factors affect कर रहे हैं आपकी teeth को, and this kind of features you can see. So again profiling में help करेगा. Again same photograph of enamel hypoplasia of two different kind, एक anterior, आगे के teeth anterior कहलाते हैं, पीछे के posterior कहलाते हैं. Wilson bands, these are the Wilson bands. यहाँ पे लाइनें दिख रही हैं आपको बहुत clearly. These lines you can find very frequently at the low average of the suggesting they were psychological stress, not necessary. Whatever I am showing is not 100% in each kind of cases, not necessary, but can help in profiling. Now coming to forensic and biological profiling from dental biology. Age. Now of course with age, ठीक है, एज का मैं बताती हूँ. हमारे टूथ में 4 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं. इनामल जो मैं शुरू से बोल रही हूँ, वाइट स्ट्रक्चर, फॉलोड बाय डेंटिन उसके अंदर, देन पल्प, देन सीमेंटम. पल्प वो होता है जहाँ से आपकी सेंसिटिविटी होती है, इसलिए आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट सुना होगा. Now from each structure we can do the age estimation. Now that itself is a very vast topic, not going into it. For today it's enough for you to know कि enamel में there is something called neonatal line, जो मैंने बोला था stillbirth या birth, death after the birth, वो हम find out कर सकते हैं in neonatal line से. there is something called tree of radius, ये भी enamel में मिलती है, ये हम find out कर सकते हैं. Age at the time of death, then root जो मैंने tooth में दिखाया था, different parts. डेंटिन की ट्रांसलूसेंसी होती है, that is seen in the microscope. As a pathologist we know हमें क्या देखना है, कितनी ट्रांसलूसेंसी देखनी है. So this translucency you see it is increasing with the arrows. That means with the age the translucency is increasing. That means जिस टूथ की मैं प्रोफाइलिंग कर रही हूँ, एक सिंगल टूथ से भी कितनी ट्रांसलूसेंसी निकली है, मैं एक एज एस्टिमेट कर सकती हूँ विद स्टैंडर्ड डिविएशन कि किस साइड में आ रहा होगा. यंग है, बिलो एवरेज एज, मतलब एवरेज से भी अलग ही टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आप लोग आते हैं माइग्रेंट्स को लेके, आधार कार्ड नहीं है, क्रिमिनल जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस, वो अलग ही बिल्कुल ही एज एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो हम ये कर सकते हैं. जो मैंने एक पार्ट सीमेंटम दिखाया था उसमें लाइंस होती है, these are called सीमेंटम एनुलेशन. So with every ये ट्री के जैसे जब ट्री का बाग आप कट करो तो जैसी लाइंस दिखती है बिल्कुल वैसी लाइंस दिखती है, but then when we count we can tell what would be the approximate age. This is one of the oldest method of Buchstaben method. मतलब ये इसलिए अभी भी यूज करते हैं कि आपके पास एक शीट मिल गया है, उसमें आप कुछ पैरामीटर्स यूज करके एक अप्रोक्सीमेट एज. दीज आर द डिफरेंट पैरामीटर्स. मैं रीड भी करूंगी तो टाइम जाएगा आपको एक रफ आइडिया देने के लिए कि दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स वी स्टडी. देन वी हैव सम atlases that we use, and this atlas I normally suggest my students to use. This comes from one of my very good friend Alka Tani. उसके नाम पे ये atlas है, लंडन atlas. Easy to use through X-ray, but again जब हम एज एस्टिमेट करें कोई एक टेक्निक या एक मेथड नहीं यूज करते, 3-4 करते हैं. Coming to gender, forensic medicine experts are here, so I will not be focusing on that. आप लोगों के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर इतना बता देती हूँ कि आप लोग को ये पता है कि स्कल में मेल एंड फीमेल पता कर लेते हैं एक्सपर्ट्स ऑलरेडी. डेंटल से हम लोग क्या पता कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिक थिंग्स की मेल का जॉ स्क्वायर होता है, ब्रॉड होता है, फीमेल्स का थिन होता है, एलोंगेटेड होता है. टीथ के डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी रीड, पर्टिकुलरली ये हमारे स्कल साइज, सुप्राऑर्बिटल रिज, डिफरेंट पॉइंट्स that we study
कंपैरेटिव में टू सी ये मेल है कि ये फीमेल है। Assessment of gender हो गया। Then from tooth how do we do? Visual and clinical methods that includes tooth size जो मैंने शुरू में ही दिखाया। Canine लेते हैं हम लोग canine का size to check। Root length and crown diameter using canine dimorphism, tooth morphology and sexing and dental index। Odometric differences इसका भी मैंने पिक्चर दिखाई थी measurements। Microscopic methods are bar bodies and advanced methods are PCR and enamel proteins। Okay. Then we have this typical feature of wrinkling of the molar. This again we can assess only in mongoloid. They have this typical feature which can be seen in men. Genders, as I told you, men will be having pronounced canine, U-shaped arch, greater tooth wear. Women would be having smaller teeth, small jaw. The dimension, if you see here, women teeth का dimension मैंने यहाँ पे mark किया है, are lesser as compared to male teeth. Earlier time they used to be all this, gold, jade and emeralds in their teeth to say that they are rich people. In now time, now what we have are implants that show that they are coming from a wealthy family, because implants is not something that can be afforded by everyone, and gold fillings. Child में क्या होता है? Child में we can say that there is a comparison between the teeth calcification and the degree of development of the postcranial this development, जिसमें boys का faster होता है than girls. So that also we can determine. Assessment of race in mongoloid, in mixed disaster जो मैंने situation बोली थी. In mongoloids we have wider cheekbones, concave incisor width between eyes are greater. This can be differentiated by Negroes, in which coming from Africa they have wider on everything. That means their prominent ridges are wider, their jaw bones are wider, the nose bones are wider, and Caucasians narrow up everything. Like Europeans, they will have very sharp features. Socio-economic status. I mentioned in the beginning, number of caries. The more the caries, the more we know coming from lower stages, they are not able to get the teeth, fixed. So teeth will be also lost, मतलब teeth नहीं मिलेंगे. Then you will have, fillings. Fillings हम लोग डेंटिस्ट करते हैं. Fillings भी बहुत cheap material की मिलेगी. That means filling कराइए but बहुत cheap material. Again you can do the profiling. In this picture, what I want to show, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये normal gingiva है जो पिंक कलर का होता है, but यहाँ पे loss हो गया है. That means again they are not able to get the treatment. Again profiling में coming from low income, high income. I told you that they will be having like orthodontic treatment. आजकल बहुत fashion में चल रहा है. You have transparent aligners. Children nowadays in school they are very particular. हमें चाहिए good smile के लिए and transparent चाहिए. So all these things if you see and go back for profiling can help you. Implants we have discussed. This is implant. X-ray में ऐसे दिखते हैं. Personal habits. Now, based on habit, left-handed person है कि right-handed person है? Like a simple example, I will tell you. If you see this picture, लोग smoke करते हैं through pipe. Those are habitual smoker with the pipe. And right hand हम इसलिए पता कर सकते हैं because loss of this kind of structure of tooth, you can see very well ऊपर और नीचे tooth loss हो गए हैं. इसका मतलब ये है कि सालों साल वहाँ पे एक particular place में ही pipe रखी गई है कि loss of tooth structure हो गया है. So it's a right-handed person. Other way round होता तो left-handed person. Brushing technique पता चल सकती है इससे. सर को कुछ डाउट हो रहा है. तो ब्रशिंग टेक्निक का भी पता कर सकते हैं क्योंकि राइट हैंड से आप ब्रश कर रहे हो, मूवमेंट कैसा है, लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर. कई लोग फ्लॉसिंग करते हैं, डेंटिस्ट ने बोला फ्लॉसिंग करो, डेंटिस्ट ने बोला फ्लॉसिंग करो, बट हाउ टू यूज द फ्लॉस ये नहीं बताया है, ये नहीं सीखा आपने. तो दैट काइंड ऑफ लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड check in a sense with the dentist profiling. Now this kind of tooth, open bite, pronounced incisors, cross bite, ये हमारे टर्म्स है आपके लिए कि अगर आपको स्केलेटन ऐसा मिलता है जहाँ पे टीथ ओपन है, वाइड ओपन है या प्रोट्रूडेड है या पीछे, इसका मतलब उस बच्चे ने गलत हैबिट डाली थी.
जैसे फॉरेनर बच्चों में आपने देखा होगा इतना बड़ा भी हो जाता है 5-6 साल का, तब भी वो माउथ में वो पेसिफायर डाल के रखते हैं माउथ में, which is not good habit, right? दूध की बोतल पिलाते रहते हैं. So all of things can lead to this kind of thing. ये जो मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि डिजीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगेन दीज आर दी टर्म्स दैट वी यूज. एमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिजेनेसिस इम्परफेक्टा मेडिकल टर्म्स हैं जिसका मतलब ये है देयर इज जेनेटिक डिसऑर्डर, डेवलपमेंट ऑफ द टूथ इटसेल्फ. तो दिस इज आइडेंटिफाइबल. ये देखिए यहाँ पे यू फाइंड देयर इज लॉस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर, टूथ कैन मिसिंग. दैट मींस योर जिंजाइवा हैज बीन लॉस्ट. दैट मींस इन्फेक्शन इतना ज्यादा था एट टाइम ऑफ डेथ, बट कोई सेम थिंग है, आइदर वेरी लो इनकम और निग्लेक्ट और इन अ वेरी बैड कंडीशन. मतलब जो बोलते हैं ना समटाइम यू गिव देम अब्यूज करते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे केसेस भी होते हैं जो अल्कोहल स्पेशली वहाँ पे बच्चों को अब्यूज किया गया है या एल्डरली को अब्यूज किया गया है कि दे आर जस्ट लेफ्ट इन द वे दे वर. सो दैट काइंड ऑफ केसेस. You see, this is a typical case of syphilis. You will find these kind of Hutchinson incisor and loss of the structure of the bone. So if type का case मिलेगा, then we can see this person will be suffering from this disease. This kind of this is a tumor, face tumor. That means at the time of death या जब आपको recover हुआ है, you can trace the history with the doctor कि ऐसा कोई patient आपके nearby उसमें था जिसका you would have seen your neighbors या family around who knew ये lost and missing cases में जिसका आपको कैटेगरी मिला कि any kind of disease he was having. Now अगर हम इन शॉर्ट में डेंटल प्रोफाइलिंग करने जाएं, जो भी मैंने अभी तक समझाया है that is finding, जो हमने फाइंड करी and how do we make profiling. So if I just quickly read it out, it says if you have high incidence of dental caries, number, size and position of caries region, degree of tooth wear, erosive defect and tooth discoloration. जो भी समझाया, फोटोग्राफ दिखाई, इसकी प्रोफाइलिंग करें तो the person was having a rich diet in carbohydrates and sugar, was having a smoking habit, was having a chewing habit of tobacco and betel nut. Excessive wears out occlusal dental surfaces, particularly posterior teeth. That means frequent consumption of hard food and nuts, especially like almonds, hazelnuts, castas. We'll keep on habit of chewing it. Specific defects on incisal edges of incisors, सामने वाले दांत में, incisors में. That means frequent nibbling of the seeds. छोटे छोटे seeds खाने की, stalk खाने की habit है. Erosive changes in the hard dental tissue. That means long-term consumption of acid and carbonated beverages. मतलब erosion है teeth में, मतलब alcohol वगैरह का long consumption है. DNA we have just discussed कि tooth के any parts से DNA can be removed. Not going into that details. Assessment of psychological characteristics. Person की psyche कैसे पता चल सकती है? Couple of things I already told you. There is something called bruxism. पहले मैं हिंदी में उसको explain कर देती हूँ. Just I'll just read it. कुछ लोगों की habit होती है रात में सोने के बाद अपने दांतों को clench करने की. So that is not normal. Someone having a stress will lead to this kind of bruxism. ठीक है. So if you have these kind of people, poor oral hygiene with decayed teeth and untreated dentition, depressed person, lack of motivation to preserve his or her own health, possibly even in life, dental neglect, I have already explained, bruxism, severely worn teeth which is not in accordance with their age. Human skeletal remains, vast topic, carbon dating वगैरह. Not going into the details, but we can from teeth also carbon dating and lot of information can be taken out. Now latest research which is done in bioecology, आप लोगों के लिए बस इतना बताएंगे. Like in this particular research which was done in lower Valley Valley, पूरे पॉपुलेशन में जब स्टडी किया, दे फाउंड दैट दिस होल पॉपुलेशन जो कि एकदम डिजीज हो गई एक साथ पूरी पॉपुलेशन, दे फाउंड दैट दे वर हैविंग दिस पर्टिकुलर डिजीज सिफिलिस जिसकी मैंने अपनी फोटोग्राफ में डिस्क्राइब किया था. एंड दे वर डूइंग दिस वीड बास्केट, मतलब वो टीथ को यूज करके उस टाइप का काम कर रहे थे ना. इसका सिग्निफिकेंस क्या है
if any time you are in a situation or wherever you are called at the position where you need to suddenly यहाँ पे क्या हो गया, because there is a very famous saying, you should know or you should always know your history because history repeats. तो आपको अगर ये आइडिया है कि इस तरह की चीजें होती हैं, then you also know कि इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है. ओके, ये वाला पेपर इम्पोर्टेंट है. आप सबको डेंटल कैलकुलस आप लोगों ने सुना होगा कि डेंटिस्ट के पास कभी गए होंगे, उसने बोला होगा क्लाक है टूथ में या कैलकुलस है टूथ में. दैट इज आप इसको रिमूव कराइए और टीथ की क्लीनिंग कराइए. ठीक है, हमें लगता है एज ए डेंटिस्ट आल्सो इफ आई विल से yeah, you have to remove, you have to get the teeth clean. That's it. My job is done, your job is done. But this calculus can be very, very helpful because with recent literature it has been found, it is among the richest biomolecular source ever found. That means what? कि ये जो calculus हम निकालते हैं, इसकी अगर हम टेस्टिंग करेंगे, उसमें से भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. In short, वो हम कैसे करते हैं? That's art of filing, but calculus is also important. So cases reported, I think बस last का ही है ना. Quickly, ये केस है एक child 1991 का, child from Canada. It was an Indian child, 6 years old, and he was found dead. And we wanted to know the age of this child and how to do that. So they used the tree of resistance. जिसकी pictures मैंने initially दिखाई थी. That part from the enamel was taken and age was determined of this child was unknown found disease in one part of the jungle. So this is how tooth came into the picture. So these are the cases where tooth were used for identification because only skull was found and tooth was used. Now this is a case in 2007. At the time of death, there was radiograph and extraction of the tooth was done. You find this fused tooth. History check करी and they found that it was from a female, from an infant skeleton. एक छोटे बच्चे के remains का tooth था and he was, police complaint of missing was lodged. This is a case of 2009 from Hungary. Again, in this only cranium was found and identification was done using this supranumbary part of the tooth and it was found that it was from the female skeleton. Again, a missing report and crime was reported earlier by the police. This is a case report from 2010 of a Caucasian female from Brazil. She was purely identified on based of her smile because यहाँ पे you can see this extra tooth which is coming out normal alignment से बाहर, which could be seen here. Now this is a case of child abuse from South Africa where cranium was checked properly. यहाँ पे fracture दिख रहा है, that means child was abused thoroughly. And on tooth also they were fractured, untreated teeth, caries, teeth were there, and with the forensic medicine expert, dental report was also given. This is a cold case, that means 37 years के बाद ये case reopen हुआ था, where the age of this young woman जो reported missing थी 37 years ago, उसको cemental line जो मैंने दिखा था tooth का structure उसके through estimate करी थी. And this is again a case where was reported of a male victim and again identification was done based on the lost teeth. Antemortem में teeth loss नहीं है, postmortem में है, but then complete dental profiling was made exactly radiographically, unique features, everything was seen and said yeah, this is the same person. This is a recent case of 21 solved by forensic odontologist James Wood. I have met him also, so that's why I put his case. That he helped in identifying this old man. Again, a missing case after a couple of years was identified. Okay, so to conclude with, I would say instead of reading it, I would say it's not one specialty. जो आदर्श सर की presentation का first slide था, वो मेरा conclusion है. मैं अकेले, मैं knowledgeable forensic odontologist, सर अकेले, मैं knowledgeable forensic medicine, डॉक्टर शर्मा reputed. आज तो मैं आपसे पहली बार मिली हूँ और इतने सालों से इंडिया में भी नहीं थी, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सर का पता था, आपका नहीं पता था. उस केस में सब कुछ देखा, बहुत अच्छा सीखने को मिला. हम वो देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है मीडिया में, राइट? दैट इज वन थिंग, उस पर हम काफी बात कर चुके हैं.
हम अपने डोमेन में भी जो हमारे सीनियर्स बोल चुके हैं, हम अपना पढ़ के हमें लगता है हमें अपना पता है। जब हम इस टाइप की कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग में जाते हैं तब पता चलता है दूसरे ब्रांच में कितना कुछ हो रहा है। मेरी आप लोगों से मेरी इंडिया में पुलिस के साथ ये पहली वो है इंटरेक्शन है। मैं दिल्ली में मैडम आशा CBI डायरेक्टर के साथ कर रही हूँ, बट इट्स लाइक व्हाट वी आर डूइंग इज रिसर्च पार्ट और या जो भी इंटरपोल में जो भी है, बट ये मेरा पहला आप लोगों के साथ है। एंड आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोग प्लीज जाके अपने कोलीग्स एंड सीनियर्स एंड जूनियर्स को बोलिए कि फॉरेंसिक मेडिसिन है जो सालों से चली आ रही है, फॉरेंसिक साइंसेज है जो सालों से चली जा रही है, जो वंडरफुल जॉब कर रही है, बट देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, स्पेशलिटी है, सेपरेट स्पेशलिटी है। वी हैव एक्सपर्ट्स, दे नो एवरीथिंग, बट वी आल्सो हैव समथिंग यू नो डिफरेंट जो हम लोग सीखते हैं, पर्टिकुलरली टू आवर डोमेन। हर एक को अपना डोमेन पता है। सो इफ यू वांट एनी हेल्प इन टीथ, you know, you should please contact the forensic odontologist. Please look into it that they are certified. जैसे सर लोगों ने बोला है properly, you know, certified courses किए हुए हो, they know कि क्या देखना है, क्या लिखना है, क्या करना है. So that is my first and firm request. Please spread the news and please as we say कि जरा सी छोटी सी चीज फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स एंड मेडिसिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर ने बोला कि ताला देख के मैं क्या जाऊं, मैं कार में आके बैठ गया। ब्लड सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ब्लड देख के मैं क्या करूं, मुझे पता है। उसी तरह आप लोगों को पता है, आप जब उठा रहे हो सैंपल, लेकिन आप लोगों को कितना को यहाँ पे पता था कि टीथ से क्या क्या हो सकता है? ऑनेस्टली एज का पता था मैडम। हाँ, एज के अलावा अभी जो अपने यूनिक फीचर्स होगा एज तो हाँ सर, मतलब वो तो पता ही सर, एज है, DNA तो कॉमन चीजें पेपर में आ जाती है, बाइक मार्क्स हैं। मैं इसलिए फीडबैक जानना चाहती हूँ क्योंकि फीडबैक से जब हमारे स्टूडेंट्स हमें फीडबैक देते तभी पता चलता है कि किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो मुझे लग रहा है, मेरा फर्स्ट इंट्रैक्शन है पुलिस का इंडिया में, तो मुझे लग रहा है कि आई शुड से दिस थिंग कि आप लोग प्लीज छोटे से छोटा सैंपल भी अपने लोगों को बोलिए, जो आपके कोलीग्स हैं, मत छोड़ो, प्लीज पिकअप करो एंड कॉल द राइट पीपल। थैंक यू। Thank you very much for a wonderful presentation. First of all, one more thing in addition, I would like to tell you in the August gathering that I was heading forensic division of Central Police Academy, that is under Accredited Government of India, Bhopal. So mostly the police officers from different areas of the country. They are coming to Bhopal for training purposes. And after your lecture, I am of this opinion that I will call you there because senior officers, police officers and sub-inspectors, they are coming from almost all the states. Definitely I will call you. हमारा काम है पढ़ाना, आप ही लोगों से सीखा है। Definitely, I was there for 1.5 years, and most of the courses I am designing till date. Thank you. Thank you so much sir। आप लोगों से ऐसा फीडबैक मिले ना ब्लेसिंग है। और तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी नॉलेज एज ए टीचर, एज एन एकेडमिशियन, एज ए सेड फादर, एक लास्ट लाइन है, फादर इज फ्रॉम आर्मी, रिटायर्ड एज ए जनरल, नॉट रिटायर्ड इनटू BRS फ्रॉम आर्मी। He was at Cochrane blast in Dr. Abdul Kalam के साथ in Cochrane, and after that he deputed him in DRDO in Bangalore. He worked in LRD. Last के उनके जो terms थे vigilance में थे, and he worked with some DSP because they used to do this vigilance work. I'm not very particular about वो क्या, and I feel that is exactly CVO vigilance के साथ जो भी छापा मारने का काम है। So, and mom has coming from this academy background, also principal retired. तो हम लोगों ने भी शुरू से देखा है कि जस्टिस के लिए सर लोग बोलते हैं, and हम यंग जनरेशन नहीं करेगी तो यू नो हम बता सकते हैं, हमको भी अपॉर्चुनिटी चाहिए कि हम और ज़्यादा लोगों को बताएं और ज़्यादा लोगों को पता चले, बिकॉज और इतनी सारे फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट आ रहे हैं, लेकिन वो काम कहाँ करेंगे जब तक उनको पता ही नहीं है कि करना कहाँ है। तो अगर सर ने मुझे
एक अपॉर्चुनिटी दी मैं 10 लोगों को और बताऊंगी, वो 10 और स्प्रेड करेंगे. दिस इज हाउ माय फील्ड विल एक्सपैंड. एंड अभी सर ने मुझे शिलोंग भी बुलाया है, वहाँ पे भी सर कोशिश करूँगी कि यू नो वी स्प्रेड माय ब्रांच. It was an excellent presentation by you, and I just wanted to ask you to please help in estimating the time of death also. Time of death period. We cannot do the time of death because it's a fossil, it's a mineral, right? It's a mineral. It is gone, it's decomposed, or whatever form. But we can do age, we can do sex, we can do the unique features, but not that. But if you ask me the same question other way around, and if you ask me from as a forensic odontologist in rape cases, do I have मैडम का टाइम ले जाऊंगी, 1 मिनट और मैडम का टाइम लूंगी. ये अभी इससे पहले रेप की डीएनए की बात हो रही थी ना, 120 आवर्स सर ने बोला था. सलाइवा का भी यही है. अगर आपको बाइट मार्क्स नहीं मिल रहे हैं तो उसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है, मिल भी जाते तो भी रिपोर्ट बराबर की ही जाती. और नहीं तो आपको इमीडिएटली अगर आपको आपके विक्टिम ने रिपोर्ट किया है ना कि मेरे साथ हुआ है, तो जहाँ पे भी टच किया है एक्यूज ने, पूरी बॉडी को की है ना टच, सलाइवा सैंपल्स उठाइए. सलाइवा सैंपल्स कैसे उठाते हैं मैं आपको आके बताऊंगी अलग सेशन में. कितना इंपॉर्टेंट है सलाइवा सेशन उठाना, कितने आवर्स के अंदर इंपॉर्टेंट है उठाना, ये हम अलग से करते हैं क्योंकि we should respect every speaker. Thank you, ma'am, for a nice review of the talk. Now I would like to invite Dr. Neetu Pawar, Director IQSC, to felicitate Dr. Parul Krishna ma'am with the memento. Please, ma'am. So in the continuation, the last presentation of the day, we have one more renowned speaker, Dr. Navpreet Kaur, lawyer. She is lawyer, social activist, post trainer, co-founder and vice president of the Lakshmi Foundation, and she is going to deliver talk over the vitriolist socio-medical legal aspects. And for this session, we are having two chairpersons. Professor Dr. Adarsh Kumar sir, Forensic Medicine and Toxicology, AIMS, New Delhi, and Professor Dr. Subharti sir, Dean and Principal, Subharti Law College, SPS, Meerut. Please, sir, I would like to invite our speaker, come and speak. सत श्री अकाल जी. मैं नवप्रीत कौर, पंजाब, चंडीगढ़ से. First of all, I would like to thank IQAC, the Subharti University, Dr. Adarsh and Dr. Harsh Sharma for giving me this opportunity. It's really a privilege for me to speak at this forum where the learned Dr. Adarsh and Harsh sir has shared their lifetime experiences. So I think this is the last presentation of today. I can see the tired faces. So how many of you like Deepika Padukone? So I think introduction is pending, so I request, please. Thank you, madam. So I think we have already gone through the varied aspect of the forensic science in investigating process. Since morning we have gone through investigation of the different case studies with the viewpoint of forensic laboratory expert, with the viewpoint of the legal expert, with the viewpoint of forensic odontology, and with the viewpoint of the forensic medicine. मेरा कहने का मतलब है अभी तक हमने जो डोमेन देखे हैं उन डोमेन के अंदर कहीं ना कहीं फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी जो दांतों से जुड़ा है, फोरेंसिक मेडिसिन और लॉयर्स व्यू पॉइंट, डॉक्टर्स व्यू पॉइंट, इन चीज़ों को देखा. लेकिन जो कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्ट है वो हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है ताकि हमें मालूम पड़े फोरेंसिक का जो रोल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में है कौन कौन से ऐसे डोमेन हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं. Being forensic is a part, integral part of how to collect the evidence. यदि हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करें और जो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है कहीं ना कहीं चूँकि वो एक लॉयर हैं और कहीं ना कहीं NGO से जुड़ी हुई हैं और कहीं ना कहीं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करती रहती है, तो कहीं हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इस समय इस व्यू पॉइंट से इस प्रेजेंटेशन को सुनना है कि हम कैसे मेडिसिन
law, dentistry and pharmaceutics, technology, जो हमारे 16 डोमेन हैं, जो कहीं ना कहीं फॉरेंसिक को आपस में इन्वेस्टिगेशन से जोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं चीज़ों को हम जब हैदराबाद की बात करते हैं पुलिस अकेडमी की, तो वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेशन होते हैं, लेकिन यदि प्रोविंशियल लेवल पर बात करें और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की बात करें तो वो स्पेशलाइज सेशन नहीं हो पाते। मोर स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। तो इस सेशन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मैडम यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, कि वो हमें जो वेरीड aspect of investigation related to a lawyer perspective is related to the perspective of an investigating officer. So madam is with us, so I would like to invite Dr. Navpreet Kaur. She is a lawyer, social activist, posh cleaner and co-founder and vice president of the Lakshmi Foundation. Because when we are talking about the posh, then we are talking about the various cases of prevention of the sexual harassment, and if there is sexual harassment, then how we can collect the evidences. This is the biggest challenge before the investigating authorities. So now, not taking much time, I am inviting Dr. Navpreet Kaur. Madam, over to you. Thank you so much, sir, for the brief introduction. So coming again to my question, how many of you like Deepika Padukone? Very nice. So उतनी अच्छी आपकी स्माइल है जितनी अच्छी दीपिका पादुकोण है। So दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी रिसेंटली, शबाब। It's all about vitriol. So I would like to start with my favorite question. How many of you know that what is the first word of preamble of Indian Constitution? Just first word. हम preamble पढ़ते थे स्कूल में, we the people of India have installed this word Constitution. So the first word is we. What does it imply? We implies equality. Equality among human beings. All the citizens of India are equal. But are we treating male and female equally? Are we treating male and female equally in our society, especially Asian society? Anyone can speak loudly? I guess answer is no. Because we always prefer son over woman. Why? We believe that men are superior to women. And it is being affected by our culture, our society, patriarchal society. Caregivers believe that old age में सिर्फ हमारा बेटा ही हमें केयर करेगा. Last rites are being performed by me. And dowry. Female का birth होता है, it feels कि अब burden आ गया, हमें dowry देनी पड़ेगी. And the sickening mindset. Boys are assets, girls are burden. A woman has to face inequality in two facets. Before birth, it is female vitrificide. After birth, it is rape, sexual harassment at workplace, dowry deaths, or crimes like acid attack. The word of a son कि हमें बेटा चाहिए अपने परिवार में, ये इतना ज़्यादा important हो जाता है कि sometimes even a male can burn his own wife and own daughter with acid. This is a case from Uttar Pradesh. Geeta Mohar's husband poured acid on her for giving him a daughter and not a son. He burned his own wife just for the reason is inequality in our society. So coming to what are acid attacks, is also known as vitriol. I will not go to scientific things. I'm just a simple social worker. I cannot discuss about DNA or odontology and so many things. But I will discuss simple things, what is happening in our society, how it is affecting our society and our future generation. So vitriol is also known as acid attack. It is known as oil of vitriol. In most of the cases, the perpetrator throw acid on the person to defame
to spoil the life of the person and very rarely to kill. The intention remains to disfigure and the target remains the face or the upper part of the body. I call it a gender-based violence. Why? Because majority of the cases, around 70% of the cases, victims remains female. The reason, again, patriarchal society, rejection in love or indecent proposal. Lakshmi was just 15 years old. At the age of 15, we are just concerned about our looks. That now I will be going to college. We are even concerned about our hair, कि हमारे बाल कर्ली ना हो, हमें कुछ acne ना आ जाए. At the age of 15, girl is so young, ambitious. A 32 years old man proposed her. This is the story of Lakshmi. That man proposed her for marriage, and when she rejected, the male ego came in between. He said, how dare she to say no? So that no was unacceptable to that man. And he threw acid on 15 years old girl who was even unable to decide कि उसको सीनियर सेकेंडरी में +1 +2 में सब्जेक्ट कौन सा लेना है. How can she decide that she wants to marry with a certain person and that to love marriage and that to double of her age? Our media is affecting our society. They are showing women just like an object. And somewhere it is in the mind of male that woman is just an object of entertainment. इस वाक्य में वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकेगी. इस वाक्य में भी वो उस औरत को एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है. जैसे ये टॉय मेरा नहीं हुआ तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं इसको तोड़ दूंगा, बच्चा करता है. उसी तरीके से उसकी सोच में ही कहीं ना कहीं तेजाब है और वो नो को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता. फेरी टेल्स, सिंड्रेला की स्टोरी सुनी है सबने. हमारी पेरेंट्स सुनाते हैं, मदर स्पेशली डॉटर को सुनाती है जब नींद के टाइम पे. फेरी टेल्स, सिंड्रेला, an oppressed girl who will come to save her, a brave prince. So such kind of stories, such kind of fairy tales somewhere creates a dilemma in the mind of a girl that I am weak, and in the mind of the male that he is superior. The prince जो है वो save करेगा girl को, so he can change the life of a woman as he wants. So dowry cases are even in dowry cases, अगर dowry provide नहीं की गई है, वेस्ट बंगाल में बहुत ऐसे केसेस है, एसिड अटैक हुए हैं, सेक्सुअल क्राइम में, एंड मोरओवर एसिड इज इजीली एंड चीपली अवेलेबल इन आवर सोसाइटी, हार्डली 40 to 50 रुपीज. आईलाइनर लगाना है हमने अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, यू विल गेट इट इन 400 रुपीज. और अगर 40 ml का जो आईलाइनर है 400-500 को मिलेगा. हाफ लीटर एसिड की बॉटल जो एक पर्सन की लाइफ स्पॉइल कर सकती है, यू विल गेट इट इन हार्डली 40 to 50 रुपीज. According to me, no reason of acid attack is justifiable. Acid is just in the mind of a perpetrator. That's why. तेजाब सोच में है, तभी वो सामने वाले को बर्न करता है. No one is immune. I said 70% of the acid attack victims remain female, but you can see no child is immune, no male is immune. 30% includes male as well as transgender. एक यहाँ पे हमारी सोसाइटी, हमारी रिसेंटली लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बहुत हाईलाइट हुआ था. तो सबको लगता है कि 2005 में सबसे पहले एसिड अटैक हुआ है, लेकिन एसिड अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है इन आवर सोसाइटी. दिस इज अ हिस्टोरिकल केस ऑफ बगलपुर ग्राइंडिंग केस, जहाँ पे कस्टोडियल वायलेंस, पुलिस वायलेंस का ये केस है, जिसमें पुलिस ने क्राइम को कम करने के लिए 33 अंडर ट्रायल कन्विक्ट्स की आईज में एसिड डाल दिया था एंड दे बिकम ब्लाइंड. दिस इज द फर्स्ट केस ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, जिसमें फर्स्ट टाइम ह्यूमन राइट वायलेशन पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया गया था दीज विक्टिम्स को. तो बॉलीवुड मूवी गंगाजल डॉक्यूमेंट्री आई ऑफ डार्कनेस रिवील द हॉरिफिक इफेक्ट ऑफ बगलपुर ब्लाइंडिंग केस. यूजुअल एजेंट
sulfuric acid, nitric acid, and sodium hydroxide acid. These are the inorganic acid which can just burn your skin. जब वो स्किन के कांटेक्ट में आता है आपकी पूरी स्किन क्या पोर्स तक को मेल्ट कर देता है. So acid attack have drastic effects on the victim, not only physical but psychological, emotional, economical and social effects as well. So specifically talking about the physical effect, you can see अगर आप ड्रेस को अवॉइड करें आपको पता चल सकता है कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है. उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है that is totally destroyed. The skull is destroyed, forehead, ears. She doesn't have one ear. तो एसिड का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि आपकी ईयर जो बॉडी का एक पार्ट है उसको ही गायब कर दिया गया. तो उसका जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का is totally disfigured, and when it comes with the contact of eyes, a person becomes blind immediately. जैसे हमने बगलपुर blinding case में पढ़ा. This girl was hardly 4 years old when she was attacked with acid by her own neighbor. Reason कुछ नहीं, फैमिली में जरा सा डिस्प्यूट हो गया किसी सामान को लेकर, उस वजह से लाइफ को स्पॉइल कर दिया गया. Can you imagine? और she will spend her whole life, एक नॉर्मल एज 70-80 के अराउंड तक होती है, 5-6 साल का बच्चा और 50 साल 60 साल इस तरीके से कैसे जिएगा. Cheeks, nose, mouth, chin, everything is destroyed, scarred, deformed. The scars may run downward, bending the chin to neck or even chest. Main focus क्या होता है? Face, upper part. Even chest, shoulder, everything is destroyed. क्योंकि स्प्लैश किया जाता है फेस पे और वो नीचे आता है बॉडी पार्ट पे. So you can see the before and after picture. Because concentrated acid is thrown on the person, it totally burns the skin, tissue, everything. Even जब teeth को मैम कैन एक्सप्लेन बेटर, टीथ तक को इफेक्ट कर देता है, वो चौकी वाइट हो जाते हैं. समटाइम्स the victim is unable to chew the food. Mortality rate remains 2 to 8% because the intention is to disfigure this male. ये जिए, जल के जिए, इसकी लाइफ बर्बाद हो जाए, मेरी नहीं हो सकी, किसी की नहीं हो सकेगी और इसको पछतावा हो मुझे ना कहने का. तो that's why intention मर्डर की नहीं होती है, इंटेंशन होती है टू डिसफिगर, एक उसको ग्रीवियस कर देने की. Psychological emotional effects are very high because person faces depression. हमारी सोसाइटी में ब्यूटी is such an important part of beauty. अगर हमारी खराब हो गई है, we don't feel confident. और इस ऐसे अटैक के बाद insomnia, night fear that कि मुझ पे फिर से ऐसा अटैक हो सकता है और डिफिकल्टी होती है समटाइम ब्रीदिंग में, स्लीपिंग में, रीडिंग में, स्टडिंग में और बहुत ही ज़्यादा इवन सोशल इफेक्ट्स की सोसाइटी से शर्म हो जाता है पर्सन. और फीमेल की ब्यूटी इतनी इम्पॉर्टेंट है फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, एवरीबडी नोज. हमारे कल्चर में वाई ब्राइड मेकअप इज सो प्रिवेलेंट, ब्राइडग्रूम मेकअप क्यों नहीं प्रिवेलेंट है, ब्राइड की ड्रेस को लेकर इतनी चर्चा क्यों होती है, ब्राइडग्रूम को तो नहीं. बिकॉज हमने फीमेल को ऑब्जेक्ट बना दिया, उसकी ब्यूटी पर ही फोकस कर रहे हैं. सो such persons, such victims have to cover their faces. They cannot marry anyone. Most of the cases they cannot marry anyone, and such purposes chances of getting married become zero. Economic effects. Everybody knows that Shapak movie is based on the life of acid attack victim Lakshmi. And Lakshmi is a woman जिसको बहुत सारे national award मिले हैं. Even USA में international career of woman award was given by Michelle Obama, the first lady of that time. But still, the government is supporting acid attack victims like this. You can see researcher for acid attack victims falls upon hard time. जिस पर्सन को हम एक मोटिवेशनल स्पीकर या एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं. 2018 की स्टोरी है. शी वाज आउट ऑफ फाइनेंसेस. एसिड अटैक के बाद इकोनॉमिक इफेक्ट ऐसे होते हैं बिकॉज
ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, सर्जरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। लक्ष्मी के केस में लक्ष्मी का घर तक दिख गया, उसके फादर सिर्फ एक कुक थे किसी भी करके, उनको हार्ट डिजीज हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। हर ब्रदर डाइड ऑफ टीबी एंड शी वाज ऑन रोड। Vitiligo is prevalent in South Asian countries. Reason being, जैसे हमारे इंडिया का कल्चर है, patriarchal society है, inequality है, similarly South Asian countries में भी ऐसा ही है। So coming to the laws regarding to acid attacks in India, our Constitution of India provides our preamble, our fundamental rights clearly say we have right to equality. But these rights are clearly violated with such kind of attacks. Criminal law amendment we will discuss, and the very important case Lakshmi versus Union of India. So you need to understand that there are two parts of, I will discuss the laws in two parts. Prior to Lakshmi versus Union of India, after Lakshmi versus Union of India. Lakshmi के केस से पहले the punishment was given under section 319, 20, 22, 25, 26, hurt or grievous hurt के अंदर. If someone is throwing hot water, if someone is throwing hot tea, or if someone is throwing sulfuric acid, punishment was same. वही 3 to 5 years की punishment मिलती थी. Compensation 4 से 5,000 रुपए compensation, that is not sufficient at all. तो such इवन एनसीआरबी इसको सेपरेट ऑफेंस भी नहीं मानती थी, इसको ग्रीवियस हर्ट के अंदर ही इंक्लूड करके उसी तरीके से उसका डेटा रिकॉर्ड होता था। So Lakshmi filed a PIL in 2006 in Supreme Court of India. Firstly, she challenged law, that laws in India are not sufficient to curb this crime. Punishment is not sufficient. Secondly, she challenged compensation provisions are not there. 5,000 में तो टाइफाइड नहीं ठीक होता, 5,000 में आपको अगर पैर में चोट आ जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो भी आपका ट्रीटमेंट नहीं होता। How can you think about कि एक पर्सन जिसको 25 से 30 सर्जरीज तक जाना पड़ता है आफ्टर एसिड अटैक, कि वो 5-10 हज़ार की कंपनसेशन में सफिशिएंट हो जाएगा ट्रीटमेंट। फर्दर टू स्टॉप द सेल ऑफ एसिड, लक्ष्मी सेड एसिड बिकता नहीं तो बिकता नहीं तो बिकता नहीं, मतलब एसिड अगर अवेलेबल ही नहीं होगा तो किसी पर एसिड अटैक ही नहीं होगा। So with these 4 important points, she filed a PIL in Supreme Court of India in 2006. So she added Supreme Court of India, National Commission for Women, and second responded was Law Commission of India. तो द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया सेड कि हमसे प्ली नहीं की जा सकती है, हमें पार्टी नहीं बनाया जा सकता है, बट they took up the case. They said in the view of gravity of this matter, they so want to take this matter and they decided कि हम इस पे एक proper discussion करेंगे और उस पे एक पैनल बिठाया जाएगा। So they prepared a report on the inclusion of acid attack as specific offences in IPC. निर्भया केस के बाद जितनी ज़्यादा लोगों ने रेप लॉज को अमेंडमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट की, लक्ष्मी का केस भी उसके बाद ही हाईलाइट हुआ। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया said there are no specific sections in IPC as we already discussed. The incidents are not even recorded separately. The commission suggested various changes in law, including new provisions in IPC, evidence and sale of acid. So, accordingly, sections 326A and section 326B were included in Indian Penal Code. It is very important कि FIR किसके अंडर रजिस्टर होनी है अगर एसिड अटैक होता है। सेक्शन 326A, पहले जहाँ पे 3 से 5 साल की पनिशमेंट होती थी, now they have increased the punishment to it should not be less than 2 years, which may be extended to life, and in case of murder it may be death penalty as well. And insertion of section 326B that even attempt to throw acid attack is a crime now. It is very important to note, चाहे 2 बूंद ही एसिड गिराया गया है,
326A ही लगेगी, 326 नहीं। ग्रीवियस हर्ट या सिंपल हर्ट के अंदर नहीं आएगा, एसिड अटैक के ऊपर ही आएगा। अगर एक्सीडेंटली अपने ऊपर एसिड गिरा दिया है तो ये सेक्शंस नहीं लगते हैं। तो कंपनसेशन लक्ष्मी के केस में इट वाज द फर्स्ट केस जिसमें 3 लाख कंपनसेशन सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट किया और कहा कि 3 लाख कंपनसेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एसिड अटैक विक्टिम। अकॉर्डिंगली कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वाज आल्सो अमेंडेड। द कोर्ट सेड अंडर सेक्शन 357 and 357A दैट एसिड अटैक विक्टिम्स को कंपनसेशन प्रोवाइड होगा एंड विक्टिम कंपनसेशन स्कीम शुड बी प्रिपेयर्ड इन एवरी स्टेट। So at present, all the states, all the union territories have specific state और UT victim compensation scheme, उनकी अपनी अलग-अलग स्लैब है जिसके अकॉर्डिंगली compensation प्रोवाइड किया जाता है। So this is very important. अगर compensation कब प्रोवाइड होगा? अगर FIR 326A के अंडर हो, अगर FIR 326 के अंडर आपने लिख दी तो कंपनसेशन विक्टिम को नहीं मिलेगा। Here comes the role of legal services authority. Whenever any acid attack happens, the police have to immediately contact medical officers, immediately victim को हॉस्पिटल लेके जाना है और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से कनेक्ट होना है, क्योंकि वहीं से पैरालीगल वॉलंटियर अपॉइंट किया जाएगा विक्टिम के साथ और उसी डिपार्टमेंट के थ्रू कंपनसेशन प्रोवाइड होगा और फ्री लीगल एड मिलेगी एसिड अटैक सर्वाइवर को। सो जुडिशरी सबसे पहले लक्ष्मी के केस में 3 लाख कंपनसेशन था, बट इट वाज एनहांस्ड लेटर बिकॉज मोस्टली केसेस में क्या हो रहा था, सिर्फ 3 लाख कंपनसेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। बट इन द प्रवर्तन केंद्र द कोर्ट सेड दैट कंसीडरिंग द plight of and need of acid attack victim, because percentage of burns remains different in every case. Every case is unique. So court said that 3 lakh should be considered as minimum and uske zyada in case if it is required as per the medical treatment जो भी है compensation should be provided accordingly. And Supreme Court in Nipun Saxena versus Union of India approved the NAAC victim compensation. NAAC is National Legal Services Authority. So NAAC victim compensation provides compensation according to this slab, and there is time limit of providing compensation as well. So it is very important for police officials to connect with the legal services authority as well. So these are very important guidelines of regarding sale of acid. In Lakshmi's case, before Lakshmi, there were no regulatory provisions regarding एसिड सेल ऑफ एसिड, कहीं भी खुले में एसिड सेल हो रहा था। ऐसा लक्ष्मी चैलेंज एसिड की सेल नहीं होनी चाहिए, तो कोर्ट रेगुलेटर ओवर द काउंटर ऑफ सेल ऑफ एसिड, वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं कि एक पर्सन जिसके पास लाइसेंस है, इसके बाद पॉइजन एक्ट जो द पॉइजन एक्ट 1990 वो अमेंड हुआ था कि जिस पर्सन के पास लाइसेंस है, सिर्फ लाइसेंस पर्सन ही एसिड सेल कर सकता है। सेकेंडली, द बायर शुड प्रोवाइड फोटो आईडी, शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक रीजन व्हाई ही और शी इज बाइंग एसिड। Further, all the stock of acid must be declared by seller with a concerned SDM within 15 days. Within every 15 days. I bet कोई चेक नहीं करता है कि किसके पास कितना एसिड अवेलेबल है, किस शॉपकीपर के पास, किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है। फर्दर, इन केस ऑफ अनडिक्लेयर्ड स्टॉक ऑफ एसिड, इट विल बी ओपन टू कंसर्न एसडीएम टू इम्पोज फाइन ऑफ 50,000 अप टू 50,000। सी, जिस पर्सन की लाइफ रेंज हो जाती है एसिड अटैक की वजह से, जो पर्सन एसिड सेल कर रहा है वो पर्सन उस पर्सन को सिर्फ 50,000 तक का फाइन लग रहा है। फर्दर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, लेबोरेटरीज में एसिड रखना समटाइम्स इज इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे कुछ पर्पस के लिए, जैसे कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस पर्पस के लिए एसिड रखा जाता है। सो देयर इज ड्यूटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, दे असाइन अ पर्सन
who is accountable for possession and safekeeping of asset in the premises. So these provisions are really important. Further, these are the landmark cases we have already discussed, and Lakshmi, you can take picture of what happened in Lakshmi's case. And after Lakshmi's case, criminal injuries board were associated. So जब भी कोई केस होता है एसिड अटैक का, क्रिमिनल इंजरीज बोर्ड जुडिशियल ऑफिसर उसमें इंक्लूड होते हैं, वो बैठता है, उसके अकॉर्डिंगली कंपोजिशन प्रोवाइड किया जाता है. Preeti Raghi's case is very important. It was the first case of Maharashtra Special Women Court in which culprit was sentenced to death. So this is the data of acid tax in India. 2013 में amendment होती है, 2013 में first data record होता है, और इसके बाद you can see the numbers. It is just increasing. Incidents of acid attacks has not stopped. Victims of acid attacks has been increased. But this data of NCRB is not sufficient. I cannot say this data is true because the issue of unreported cases in our country, victim blaming is there. There are numerous cases. जो सबसे पहले स्लाइड में मैंने गीता मोहर का केस बताया, उस केस में कभी पनिशमेंट ही नहीं हुई क्योंकि FIR ही नहीं हुई. That is an unreported case. इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि बिकॉज दिस इज यूपी, उत्तर प्रदेश है यहाँ ये जहाँ पे हम ये सेशन चल रहा है. हमारे देश में अगर 300 केस हो रहे हैं एक साल में एसिड अटैक के, तो 50% केसेस सिर्फ वेस्ट बंगाल और यूपी में हो रहे हैं. फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल है, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है. तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अनरिपोर्टेड केसेस उत्तर प्रदेश में है एज पर माई रिसर्च. लॉकडाउन में थे हम 2020 में, 21 में. उस टाइम पे हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें चाहिए, इवन मेडिसिन तक अवेलेबल होना कई बार डिफिकल्ट हो रहा था. वहाँ पे एसिड जो कि रेगुलेटेड है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एसिड वाज बीइंग सोल्ड फ्रीली एंड वुमेन वर बीइंग अटैक्ड विद इन द प्रेमिसेस. एक जेल में भी है और उसके अलावा उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, हरासमेंट भी हो रही है, मेंटल टॉर्चर भी हो रहा है और एसिड अटैक भी हो रहा है. So we need to take some steps. Unconscious biasness, जिसे हमें खत्म करना पड़ेगा. Recently मैंने अपने एक फ्रेंड को लंच पे इनवाइट किया, मेल फ्रेंड को. हम लंच पे गए, आई वॉज अ होस्ट. तो लंच खत्म होता है, बिल आता है. बिल किसके पास जाएगा? बिल किसको देगा वेटर बताए? मुझे या मेल को? होस्ट कौन है? क्या मैं बिल पे नहीं कर सकती? तो यहाँ पे अनकॉन्शियस बायसनेस है. ओके, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन में इनवाइट किया गया. मुझे प्रोफेसर ने कॉल किया, यू आर एन इंस्पिरेशन, मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू, ब्ला ब्ला ब्ला. बहुत लंबे लंबे सेंटेंस बोले. जैसे ही मैं इंस्टीट्यूशन में पहुंचती हूँ, एक लग्जरी कार में, बहुत बड़ी लग्जरी कार में मैं गई. वहाँ पे जैसे ही मैं उतरती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? रीजन लग्जरी कार. मतलब a woman cannot buy a luxury car. So such kind of unconscious biasness is engraved in our mind, जो हमारी सोसाइटी को इक्वल होने ही नहीं दे रही है. Education and sensitization is very important from the very first stage, childhood stage. Both child and child givers, caregivers, child यहाँ पे जिनके बच्चे हैं, क्या वो अपने बेटे और बेटी को इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? इक्वल एजुकेशन, इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? अपने बच्चों को इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आप, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो? ठीक है. क्या पेरेंट्स इक्वल लेयर अब इंजॉय कर पा रहे हैं? मेल एंड फीमेल, मदर एंड फादर.
घर पे अगर दोनों वर्किंग है तो घर जाके चाय कौन बना रहा है, मेल के फीमेल? चलो एक लैब सर्किल में जो घर जाके चाय भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे जस्ट मेरा कहने का मतलब था कि बच्चों में तो हम इक्वालिटी ला रहे हैं, जो केयर गिवर्स हैं पेरेंट्स अगर इक्वालिटी लाएंगे। मैंने अपने मदर को देखा है कि माई मदर जो टीचिंग में थी, वर्किंग थी, लेकिन वो मेरे फादर की केयर करती थी जब वो जॉब से आते थे, एंड आई एम फॉलोइंग हर। मेरे मदर ने एक एग्जाम्पल बनाया, तो वही एग्जाम्पल चलता जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी में जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे। So I am now trying to change this thing. मैं इंस्टीट्यूशन में जा रही हूँ। मैंने आज मैम पारुल मैम को भी कहा एक बात कि जब मैं कहीं इंस्टीट्यूशन पे जा रही हूँ, मेरी बेटी अपने फादर के पास है। हमारे जो हस्बैंड है फीमेल पे बहुत ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, और वो आराम से चले जाते हैं। Now I have started trusting my husband. मैं बाहर जाऊँगी, he will definitely take care of her, his daughter, जैसे मैं केयर करती हूँ। So we need to build up a trust in men. Men can also take care of their child. So when आप किसी से कम नहीं है, take the responsibility of your home. You can also take care of your child at home. So likewise, we have to create equality between the children as well as caregivers, and no fairy tales, no Cinderella. Strict implementation of laws are really required. हमने देखा एसिड अटैक्स के रिगार्डिंग पॉइजन्स एक्ट इज अमेंडेड। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे रखी है दैट सेल ऑफ एसिड इज बीइंग रेगुलेटेड, ओवर द काउंटर सेल इज रेगुलेटेड, बट स्टिल एसिड इज सेलिंग लाइक एनीथिंग। थिंक लाइक अ प्रो विक्टिम। हर्षल ने कहा कि जब एक डेड बॉडी को हम देखते हैं तो दूर हो जाते हैं, अपना फेस कवर करते हैं। जब तक हम पास नहीं जाएंगे तो हम उसका समझेंगे कैसे कि डेथ कैसे हुई है, वो आपसे बात कैसे करेगा। हम क्या करते हैं, एसिड अटैक विक्टिम को हम देखना बंद कर देते हैं। वो आता है अरे यार ये इसका चेहरा जला हुआ है, लेकिन जो परपेचुएटर द पर्सन हु इज थ्रोइंग एसिड, उसको तो हम बड़े आराम से देखते हैं ना, उसको देखने में हमें कोई हर्ज नहीं है, वो तो हमें बड़ा सुंदर लग रहा है। लेकिन बट द पर्सन हु इज एन एसिड अटैक विक्टिम, please be in her shoes, think like a pro victim. Recently पुलिस अकेडमी में गई 11th of August, I still remember। 11 अगस्त को पंजाब पुलिस अकेडमी में मेरा सेशन था, बहुत सारे पुलिस पर्सनल थे। 11 अगस्त को इतना सेंसिटाइज किया गया आपको, ईच एंड एवरीथिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ 326(a), इंपॉर्टेंस ऑफ FIR, सब कुछ बताया गया। 11 अगस्त की बात है। 12 अगस्त को एसिड अटैक होता है एक बच्चे पे, 9 महीने के बच्चे पे। FIR कितने दिन बाद होती है? 7 दिन बाद, वो भी प्रेशर डाल के। Why can't we think like a pro victim कि एक पर्सन पे एसिड अटैक हुआ है, अगर कहीं ना कहीं मैं प्रो विक्टिम होके सोचूं कि मैं उसकी जगह पर हो के सोचूं मुझ पे एसिड अटैक होता तो मैं क्या चाहता। So please think like a pro victim। if you are in the medical field, उसको कैसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। If you are a judicial officer, if you are a police personnel, be in their shoes, be a human being, male, female, everyone is equal, just think like a human being. And most important is research. Research can change a society. I was a PhD student. I started pursuing PhD in 2014 on vitriol, on acid attack. And while pursuing PhD, I met many acid attack victims. And before the completion of my PhD, I started working for them. I thought we really need to change their life. We need to rebuild the life of acid attack survivors. If not me, then who? If not now, then when? So we began a campaign to stop the sale of acid. We registered an NGO, the Lakshmi Foundation. मैं और Lakshmi, we are the co-founders of the Lakshmi Foundation. We are working continuously for the ban of sale of acid in India. We are creating awareness regarding the hazardous effects of acid attacks. We are rehabilitating the acid attack survivors and survivors of other crimes. We are providing them free legal aid. We are providing them with counseling. We are working worldwide against this
acid virus. We have opened a shelter home for acid attack survivors in New Delhi because बहुत सारी जगह से acid attack survivors आते हैं, लखनऊ से आते हैं, कानपुर से आते हैं, पंजाब से आते हैं. जब वो दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं, एम्स में, सफदरजंग में, अपोलो में, they need a place where they can stay for long time period because acid attacks में जो burn होता है, सर्जरी एक दिन की नहीं होती है. Again and again surgeries होती हैं, a person cannot travel alone. So we provide them a safe place, a one-stop center where they get all kind of facilities. हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक शिक्षा दी, जिसको हमने अपनाया. We started the मिट्टी हैंडप्रिंट्स प्रोजेक्ट, जिसमें एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हम स्किल डेवलपमेंट कराते हैं. वो मिट्टी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, जिनकी हम एग्जीबिशन लगाते हैं, सेल करते हैं, और इसकी जितनी भी इनकम आती है वो एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ट्रीटमेंट और उनका घर चलाने में यूटिलाइज की जाती है. We believe in diversity and inclusion. So recently he is our child prince and acid attack of survivor from Gujarat. He is recently selected by Indigo. He is working with Indigo. So our survivors are working with Legal Services Authority, Indigo. Now one of our survivors will join Amazon. They are working with NHRC as well. So I would request this university and even police personnel and all the members present over here कि in case अगर आपको लगता है कुछ एसिड अटैक सर्वाइवर्स को आप कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकेंगे, तो इट विल गिव मीनिंग टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन आवर सोसाइटी. सो दीज आर सम ऑफ द रेलेवेंट publications about written by me, some of the research paper, and I feel privileged to share कि एक research paper मैंने डॉक्टर आदर्श सर के साथ भी लिखा है. So that's all about. I'm not a big forensic expert. I'm not a big legal expert. Just a very small social worker. जिसने डॉक्टर आदर्श और हर्ष सर के सामने आज कुछ बोलने का मौका मिला. It's really a privilege for me. Thank you so much. And I would request you, if you people can connect with us in any way, that will be really grateful for us. Thank you. Thank you, and thank you for the work you are doing. Hats off to you. As you mentioned, the privilege that you were speaking, Dr. Adarsh Kumar and me, and as you already said, you wrote a paper along with Dr. Adarsh. And I'm really fortunate to listen to you. And two questions actually from my side. One to Dr. Adarsh Kumar. Regarding the acid burns, only is your previous injuries and that's it, over and done? Yes, true. I think before 2012, when this Amendment Act was there, it was covered only under 326. But after that amendment of in 2013, now this 326A and B have been specifically added, having the enhanced punishment. So it is not the simple, you can say in the simpler terms, the previous had usually 3 to 7 years of punishment. Here, specifically after introduction of A and B, it is 10 years and 20 years. And not only the criminal punishment, the punishment part, there are now issues of compensation also we are talking about. So there are so many things which have, you can say, added upon, and especially after that writ petition of Lakshmi Foundation, and when specifically they are working more and more for the compensation scheme. In addition to the, you can say, the criminal imprisonment part, because after that it will only death. So if you just reduce to death, it comes, everything comes under the result. Nothing is there. Actually, इसका severity जो है, for the first time I am seeing. Of course I have seen, rather examined many acid attack cases when I was
analyzing the articles on acid attacks in chemistry division. But after seeing her presentation, मुझे लगता है कि जैसे बर्न में डिग्री ऑफ बर्न होता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें आप कर रहे हो या उन्होंने की, Percentage of burn is important as per compensation part. Compensation में compensation as per the percentage of burn ही provide किया जाता है। मेरा ये कहना है कि इसमें तो लाइव इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नहीं, यानी जिंदा आदमी को जिंदा भी रखा है, मारा भी नहीं है, और वो जिंदगी भर जो है इस तरीके से अपना जिंदगी जी रहा है, जैसा ऐसी से कि अच्छी खासी सुंदर होगी जिसके पीछे लोग भागते होंगे, इससे पास जाने में लोगों को दिक्कत होती है। ये इससे बुरा क्या हो सकता है? दूसरा, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मैंने जैसा कहा कि मैं चीज़ों को देखता हूँ बहुत बारीकी, जितना भी एसिड मार्केट में बिकता है, you mentioned sulfuric acid, sulfuric, nitric, and what was the sodium hydroxide. जितनी भी एसिड्स मार्केट में बिकती है, सारा बिस्कुट का पैकेट बिकता है, उस पर लिखा रहता है कि कितना इसमें प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैटी एसिड्स है। आप एक भी शीशी पे बता दीजिए कि व्हाट एसिड इट इज हैविंग, वेदर इट इज नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक, नथिंग। ऐसी से कि लेबोरेटरी में हर आदमी का एक्सेस नहीं होता है। बाजार में मैंने खुद देखा है कि आने वाला जो एसिड रखे रहता है। पुलिस जब से आपने शायद ये मुहिम चलाई है, तब से पुलिस पकड़ती है नहीं, मेरी पूरी बात, पुलिस पकड़ती है, लेकिन वो जो व्यापारी है, दुकान वाला जो है, थोड़ा बहुत पैसे वैसे देके रवाना, केसेस रजिस्टर नहीं होते होंगे तो शायद दिखाने के लिए एक आध दो केसेस होते हों, लेकिन एवरी शॉपकीपर, किराने का जो काम करते हैं, छोटे शॉपकीपर की बात करते हैं, वहाँ ऐसे क्यों नहीं मिलते? और एटलीस्ट कम से कम आप इतना मेहनत कर रहे हो तो इसमें ये भी आप कोर्ट में बात करेंगे, तो वट एवर एसिड इज बीइंग सोल्ड इन द मार्केट, पेट्रोल मतलब जो इशू होता है ना बल्क में से, एटलीस्ट दे शुड मेंशन एंड दी कॉन्सेंट्रेशन। जैसे लैब के अंदर हमारे यहाँ एसिड आता है, इट इज ऑलवेज रिटन दैट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और इट इज डाइल्यूटेड, the concentration that should be written। and मुझे लगता है कि आप इस तरीके का काम कर रहे हो, आने वाले समय में इसी इंफ्लुएंस से आप काम करिए, तो मुझे लगता है कि लाइफ इम्प्रूवमेंट भी दिला। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Navpreet, for a very thought-provoking journey, sharing of your journey. And in fact, I would share here with this audience that in fact it was her PhD when she came into contact with me. She wanted to analyze correct the data, and because of that, she somehow there reference, and ultimately she came to me. And when I saw that topic, and I saw the gist and zeal, the way she was working in this very complicated area, then actually it gave me some kind of, you can say, probe that okay, I should also contribute something in this particular noble work, what she is doing. And that's how we became, you can say, part of that, you could say, process. And I'm always associated with Lakshmi Foundation and all that. So many times now, we are almost 10 years. We are together and just advocating on this socio-medical legal, this menace prevalent in our society. We are trying all our best on various means. As जैसा आपको बताया मैंने कि एक तो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ,
That is one thing. Continuously working on the Stop Sale Acid campaign by various other means. Taking care of the victims by having those shelter homes and all. That's another. Recently, as probably she has shared in one of the slides, I am also the chairman of the Medical Disability Board at AIMS. So we have advocated that this needs to be included in the disability compensation issue. And now, from 2019, when this Disability Act has been amended, this is included in the one of the disability which was earlier missing. It was included after the Parivartan case. So it was earlier missing. So till 2016, when the last amendment of the disability were there was only talking about the locomotor disability, कि भाई हाथ कट गया, पैर कट गया, एक्सीडेंट में हो गया, या कुछ और उसका intellectual disability and this type of things. और बहुत सारी चीजें मिसिंग थी, तो उसके अंदर भी हमने ये फिफ्टियल एज से कि आफ्टर इफेक्ट पे जो डिसेबिलिटी होगी, that also included so that government can take care of the social needs of the victim as well. So legal needs is one, legal compensation is another, social needs is another. So you are working on all the aspects, socio-medical, legal aspects of all this, you can say social menace, which is prevalent mostly in our country, especially in the northern part. Somehow we are working on that, and our idea is to just take care of all these issues and give a message to आप लोग भी जो है उसकी सेल बैन है, आपको पता है, अब उसकी धरपकड़ और वो सब ढंग से कीजिए, अच्छे से कीजिए. डोंट अलाउ दिस फ्री सेल कि 50 रुपए की बोतल जो है वो मिल रही है और टॉयलेट क्लीनर के नाम पे सबने जैसे बताया कुछ नहीं लिखा होता है कि वो HCl है, H2SO4 है और कंसंट्रेशन कितना है, 10% है कि 40% है कि 50% है, चाय मिल पे भी बेच रहा है. So when you are aware that now act is there, बहुत सारे आप लोगों को भी शायद ये आइडिया नहीं होगा कि एक्ट इसमें बन चुका है और ये टोटल बैन है, और ये आप लोग उसको इग्नोर करते हो क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है. आप लोग और चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हो, आपके पास दूसरी हीनियस क्राइम है जिनको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है. लेकिन मेरा ये आपके लिए रिक्वेस्ट होगा कि आप इन चीज़ों पर भी गौर करो जो आप यूजुअली ओवरलुक कर देते हो, पर शायद इस मैसेज के बाद, इस लेक्चर के बाद प्रोबेबली आप अगर कभी भी देखोगे कोई साइकिल वाला रिक्शे पे अपने साइकिल के कैरियर पे बांध करके आपको पता है कि ये एसिड है और इलीगल है, बेचने जा रहा है, आप उसको टैप करोगे, 2-4 बार करोगे, सोसाइटी में मैसेज चला जाएगा और धीरे धीरे वो चीज़ें बंद होंगी. So I think all the persons concerned with that, they need to do their own work. Thank you. बस एक और मिनट दूँगी आपका, बिकॉज पुलिस का सोलर था गया. जब भी एक एसिड अटैक होता है तो फर्स्ट एड क्या होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक मिथ चली थी कि मिल्क डालना है, प्लीज मिल्क कभी नहीं डालना है, क्योंकि मिल्क कभी भी किसी भी एसिड के साथ आएगा. अगर मिल्क में आप नींबू डालते हैं तो वो पनीर बन जाता है, स्किन पे चिपक जाएगा वो एकदम से. तो हमें ऑलवेज यूज वाटर. सबसे पहली जो फर्स्ट एड है वाटर है, और मोस्टली जैसे एसिड अटैक होता है फेस पे होता है, और अगर आप ऐसे सीधा पानी उस पर डालेंगे तो वो बाकी बॉडी पार्ट्स पे आ जाएगा. ऐसे कभी भी आपको पानी नहीं डालना है, हमेशा एक पर्सन को बेंड करना है. अगर उसके फेस पे एसिड आया है तो उसको प्लीज इस तरीके से बेंड करके ऐसे साइड से पानी डालना है, सो दैट जो एसिड है वो जमीन पर जाए. एंड मेक श्योर कि अगर उस पर्सन ने कोई ज्वेलरी पहनी है, कुछ इस तरीके का सिंथेटिक पहना है, उसको बड़े आराम से साइड मतलब हटा देना है स्किन से कोशिश करके, और मेक श्योर वो आपके खुद के हाथ को बर्न ना करे. और पानी कभी भी स्प्लैश नहीं करना है. अगर आप पानी ऐसे मिट्टी पे डालते, किसी भी चीज़ पे डालते, वो फैल जाती है. आपको पोर करना है पानी ऐसे धीरे धीरे से, सो दैट कि वो चीज़ जो है हमारी स्किन से निकल के वो हट के नीचे चली जाए. तो सिर्फ एक ये छोटी सी बात जो मुझे पता है वो मैंने आपसे शेयर की है. बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड योर काइंड वर्ड्स. इट्स रियली मोटिवेशनल फॉर इंस्पिरेशन फॉर मी टू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम यू. और इतने अच्छे अपने लिए वर्ड्स सुनने के लिए थैंक यू सो मच फॉर Subharti University for giving me this opportunity, and congratulations for organizing this very successful event on the first day. Thank you.